So all set now for the inaugural tossing ceremony between two teams and umpires, just explaining the rules and regulation, which is so important before we're going to start the tournament. Each and every captains and players should know the playing condition of the tournament. So that umpire is explaining about the rules and regulation of this cricket tournament. Welcome back. After that inaugural toss, we are into the inaugural match.
So welcome back after winning the toss. Winning the toss, captain of Good Day Jacks, they elected to ball first so that they are on the field. And I request opening batters of team UFC fighters, please be reported immediately to the middle of the pitch. ದಯಮಾಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು. UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಎರಡು ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡು ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ 1 2 3 ಚೆಕ್ ಹಲೋ ಚೆಕ್. So all set now for the first match, and just coming to the rules and regulation of this cricket tournament, Attavara Premier League 6 is concerned. Please note that 5 hours side to be played, and 1 hour going to be a power play, not more than 2 fielders outside the circle in the power play, and not more than 5 after the power play. And the 5 bowlers to be used. 5 bowlers to be used. Hello, check. 5 bowlers to be used, and that means one bowler has got a chance of bowling 1 hour. And one review for both the batting and bowling team. Please note. The net run rate will going to decide the table toppers in this APL season 6. These are all the rules and regulation of this cricket, and the playing condition, coming back to this playing condition of this cricket ground. Some of the area, the behind the stumps, we have some declared areas where you can get only 1 run. Umpire will go into see this where it is the declared areas. Some areas you can get only 1 run. Organizer ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. Raghu and Atul are the opening batters. Came to the middle as the opening batter for the side for the team UFC fighters. So after all clarification of the rules and regulation and playing condition of APL 6, we are going to start the match, first match, and everything set here for opening over and the power play over. And already we are started late and need to pick up quickly to make this cricket tournament successful one.
Signal came from umpires. Slight a bit of changes in that declared area. The ball will going to hit the plex. There is a single, and if the plex is after left and right side of the plex, and the batter can get and batting team can get a couple of runs. This is what one changes which is made in this APL season 6, and everything is ready here for the first over. Shishant will going to start the proceedings from the road end and highway end. The first ball of the tournament, APL season 6, will going to start here. Shishant will going to get the first ball here. Right arm over the wicket, and Drago straight away off the mark by playing that reverse sweep, effectively one declared by umpire, and with that single, Raghu is off the mark, and his team UFC Fighters are off the mark. The first run of APL season 6. Raghu got the first run from the bat for his team. Here comes the next ball. Wanted to go for again. This time he got a couple of runs. This time he played a little bit squarer and down to deep third man boundary for a couple of runs. The lovely improvisation here from Raghu by playing that reverse sweep quite effectively behind the stump and played it down to deep third man for a couple of runs. So Raghu straight away and just implementing that technique of playing the reverse sweep for the bowler Shishant, and he got 3 runs in 2 balls. Appeal for leg before wicket. Umpire says that ball is pitching him outside the line of off stump. Raghu certainly is just stretching his front foot, maybe just wanted to go for the sweep shot, and umpire Suresh Muttabidre is not interested because the ball hitting him outside the line of off stump. No runs scored. First dot delivery of the over, and 4 time in this over. Oh, lovely delivery, fantastically bowled, beaten by the pace, and slight bit of change in the line as well, just around the leg stump, outside the line of leg stump, and Raghu just wanted to get that one in the onside region, misses it completely. No runs scored. It's 3 on the board without loss of any wicket. Good comeback here by Sushant. 5th time in this over. Raghu again the beaten, consecutive 3 dot deliveries. After that single and couple of runs in the first opening 2 deliveries, and Shishant now just managed to keep the thing tight by bowling some good line and length, and Raghu just a little bit under pressure after that 3 dot ball, and again a dot ball. What a fantastic comeback here from Shishant. Just 3 runs after that, 4 consecutive dot deliveries in this power play over. After completion of first over, UFC Fighters has absolutely got a slow start. It's 3 without loss of any wicket. So good toss to win here for Good Day Jacks in the morning. Captain rightly elected to ball first, and first over is certainly in favor of the team fielding team. So this is an outstanding view of the cricket ground, the ground which is having both railway track and highways, and just in front of our commentary box, left of cricket stadium, we are watching the train just passing, and this is absolutely fantastic. In right of our commentary box, the vehicles which is passing the busy highway we can find here in Ekuru Fisheries Cricket Ground. Dhanush brought into attack to bowl the second over, and after that power play the fielding restriction is off, so that you can see that some fielders are spreading down to one at a deep cow point, long off and long on, and mid wicket. Fielder down at deep square leg, the 5 fielders outside the circle. Short mid off, short back point, short third man. The fielder down at short mid wicket, the fielder inside the ring. Dhanush to Atul. Atul this time chipped that one quite deliberately in the air for a while, but quite intentionally played it down to deep cow point. Exactly the fielder is in the deep, and checking the stroke in the last moment, picked up his first run as well with that single. Atul is off the mark, and total score now moves on to 4 on the board without loss of any wicket. Dhanush is a kind of bowler who can be very effective in his different bowling action. Has got a small run up, and
This time Raghu lofted at one. A chance here for the fielder to take the catch. The first wicket back in the pavilion. Raghu just looks like he's a little bit uncomfortable in the middle. After that, four dot deliveries in the previous over. So in this particular delivery, he just wanted to break the shackles, but he's choosing the fielder down at mid wicket. After that power play, we can see the spread out field, very difficult to get the gap. Raghu's innings which comes to an end. It's 4 for the loss of 1 wicket. Team UFC Fighters. So, left-hander replacing Raghu, the right-hander back in the pavilion. Avinash is the batter, came into middle, and the wait and see how Avinash will going to get some partnership here for his team. They needed some runs, needed some partnership, and Dhanush has got a vital breakthrough for his team. The big wicket of Raghu is back in the pavilion after he scored 3 runs out of 7 deliveries. Is back in the pavilion. Dhanush, third time in this over. Oh, beautifully balled, perfect one. The batter just wanted to get the ball into the offside region. Very luckily that ball just missing his off stump. And of course we are having a square angle commentary box. It's very difficult to explain the turn of the ball. And again down the leg side, wicket keeper misses, short fine leg fielder misses. And 1+1, 2 runs added to total. A couple of runs, the gifted runs added to total because of wide delivery, and then one went into the declared areas. 2 runs added, 6 on the board for the loss of 1 wicket. Dhanush, 4th time in this over from the highway end. Mangalore media having a live telecast of this cricket tournament. So those who are watching a live telecast, good morning everyone. Wicket keeper fumbles, directed. It looks like umpire Suresh Mudabidre. Umpire, is it the third umpire? Yes, now umpire asking for the third umpire for the run out. The third umpire will going to see, because directed always going to be a close one. It looks like whenever the directed is 75% result is absolutely going in favor of fielding team. And let's wait and see when the stump is broken. I think it's a neck to neck and touch and go. Always it was touch and go for the third umpire. Sriraj will going to watch here in our commentary box. Looks like the batter is safe in the last moment. He drags his bat. Sir, how many runs? Umpire will going to clarify. The wide is a sure, and 1 run which is completed, and overthrow looks like 3 runs, 4. This went into the declared area. There are a couple of runs in the declared area, and 4 runs added to total. Absolutely bonus. The wide plus 3 runs added to total. The 10 already on the board. This is absolutely disaster for the fielding team when the condition is not so easy to get the runs. Of course, the ball which is hard in the nature, Dunlop training, which is the ball used for this cricket tournament,
and might be very hard in the nature. Probably the batter will going to enjoy that ball down the leg side. Going to be a fair delivery in his judgment by the batter Atul. He thought it might be a wide, but well within the reach of the batter, so that no run scored. Much required dot ball there from Dhanush. Fifth time in this over. Straight long on and long off, which is wide-ish and deep extra cover. The fielder in the offside region. Atul wanted to go for the drive and misfield there by the fielder, and couple of runs in the declared area. Well, the fielder making a mistake at short third man, just rushing into the ball. And valuable couple of runs is added to total with that couple of runs scored. Moves on to 12 on the board, 12. Without for the loss of 1 wicket. This is turning out to be a good over so far for the team. Good day, Jacks and UFC fighters, in fact. Again, the dot ball and over number 2 comes to an end. After completion of over number 2, it's 12 on the board. The team UFC fighters are going exactly 6 runs per over, and in this particular over, they got 9 valuable runs. So this tournament, definitely APL Season 6 has got some very attractive individual prizes and for the individual performances of this tournament. Winners, runners, fair play awards, man of the series, best batter of the tournament, best bowler of the tournament, best fielder. IS6's cool captain, Captain Cool, means the best captain of the tournament, emerging player of the tournament, and man of the match for all matches. And of course we have a man of the match for all matches, which is Iron Box. Definitely those who are not having an Iron Box, definitely they got opportunity to iron their shirts, and the best batter award is also awarded. So after that passenger train, we are going to witness a goods train in our cricket ground. Absolutely very busy cricket ground you can see here in this Ekuru Fisheries cricket ground. Outside the line of off stump, and started with the dot ball. Excellent one outside the line of off stump. Of course, they got a review, and if they are doubt in the mind, they can take a review, but they are not taking a review. This is a fair delivery. Shreyas. Far outside the line of off stump, defeats everyone. This is a huge wide, and 1+1, 2 more runs added to total in the form of extras. 14 on the board for the loss of 1 wicket. The partnership is slowly building up, and more than the contribution from the bat, a lot of contribution from extras from the opposition team. Shreyas. Again, just wanted to get the ball on the onside region across the line of the delivery, which is outside the line of off stump, and batter Avinash wanted to drag that one, tried to play the sweep shot, but misses it completely. Wicketkeeper did the rest, back to bowler. Again, that ball going towards no ball called by umpire. It's gone outside the line of the pitch. Absolutely disaster. 1+1, 2 runs added to total, and more than anything else, it's a free hit delivery. Discipline is very important in cricket, and this is what, while coming to that big tournament like this, you need to have some kind of match practices, of net practices, what we call, and even the warm-up is absolutely very important before going to ball. Balled him, clean him up, but I think it's a free hit delivery. The celebration for the few seconds for the bowler, he is absolutely punching after they got, but quickly realizing this is the free hit delivery. I can't celebrate for that. And just a couple of runs which is completed. It's a couple of runs added. Live correction, 1 run added. 17 on the board. That might be the bye, I think so, because ball is missing the bat, hitting the stump. This is what I'm talking about, why it's needed some discipline. You are the loser. If you get one good delivery, can't get the wicket for that free hit delivery. Shreyas Atul will go into face. Shreyas lofted in the gap. Lovely placement into the deep extra cover region for 4 runs. The first boundary of the tournament, APL
season 6, and Atul the batter played an exquisite lofted extra cover drive. The placement is so good in that occasion. So I already mentioned, we can see the ball which is hard in the nature. The batter can take a little bit risk of playing a big shot. Even the boundary line is little bit huge one here, but definitely the opportunity is created for the batter to get the distance as well. So 21, much required boundary came from the bat of Atul down the leg side, but couldn't manage to play technically, because while you're trying to play the shots, you have to stretch your front foot to play the ball. But where he was standing, he tried to flick that ball, missed it completely. No run scored. Last time in this over. Appeal for leg before wicket. Might be the ball is gone, pitched outside the line of leg stump. Over number 3 comes in, and one more productive over for the point of view of team UFC fighters. They got 9 runs in this over. So this is what the acceleration we can see here in UFC fighters. Started slowly, 3 runs. The first over, second over, even they lost the wicket of Raghu, but they got runs 9. Again 9 runs in the third. 3, 9, 9. It takes the total score into 21 for the loss of 1 wicket, going exactly 7 runs per over. Sachin, the experienced campaigner, brought into attack to bowl the 4th over for the side, and batter Avinash will going to take the strike. Short run up, just passes umpire Roland Pinto. Left arm bowler around the wicket, and wicket keeper misses. Backstop fielder fumbles. The batter completed a single. He's got a bat onto that, and that's why. And the umpire not interested to call any signal. So with that single score, moves on to 22, and the first run which is came from the bat of Avinash. Atul is batting on 7 with the help of 1 boundary, the first boundary. Mangalore media having live telecast under the great leadership of Kamal brothers, and so far it's going to be a good quality coverage of this cricket tournament. Again, nicely, looks like it's deflected from the bat. Couple of runs, and with that couple of runs, the scoreboard moves on to 24. Runs are started to flow very freely for the team UFC fighters, because this is a 5 hours game. They got all 9 wickets in hand. Certainly they wanted to go for some acceleration of run rate, because this is the first match. They have no idea what kind of target will going to be good enough for the batting first team to depend the total. Left arm bowls down the leg side too far, so that umpire will going to have a punishment for that delivery and called it wide. Extra run added to total and extra delivery. Need to ball 25, quarter century. Drives that one like a placement, played it back to bowler. Just wanted to get a little bit extra power, so the batter too early into that stroke and played it back to bowler, not for run. Lofted, chance for the fielder at deep extra cover. He's underneath it. And that's the end of Atul's innings. Just wanted to get the distance, and I already mentioned the distance is too long, especially coming to the offside region, and Atul got the elevation but fails to get the distance. The wicket number 2 is back in the pavilion. The partnership of 22 runs which is comes to an end between these two. Atul, before he's back in the pavilion, he scored a valuable 9 runs from his bat. Sachin got a valuable and vital breakthrough for his team. The new batter in with the orange cap, jersey number 3, Madhu, will going to take the strike, and the bowler will going to continue. Sachin this time straight as a fielder, chance of run out, and Prasad behind the stump down at short fine leg. Looking for the shy at the stump, but wicket keeper collects the throw from Prasad. And wicket number 3 back in the pavilion. Avinash gone. Both the settled batter are back in the pavilion. It's 25 for 3. Back to back 2 wickets.
One more orange cap holder with the jersey number 108. Pratham walk towards the middle. So this is turning out to be a good over so far for team Good Day Jacks. They got 2 wickets, 1 run out. Last time in this over, changing his angle around the wicket, over the wicket. In fact, this time appeal for leg before wicket. Just run out, but backup is not good from the fielder. The ball just passing between his legs, and they completed another extra run for that overthrow. So couple of runs added to total. With that couple of runs, Coburn moves on to 27 on the board after completion of 4 overs. The good run rate, 7.33 runs per over. The run rate is maintained here by the team Good Day, team UFC Fighters. Now last over remaining in their innings. Brought into attack to bowl the last over with the jersey number 32. Nikhil, correction. Deep square leg in front of square, mid wicket, long on, long off from deep extra cover, orthodox field set. Down the leg side. This is the one area the team Good Day Jacks absolutely have to think a lot. Lot of extras conceded so far. One more wide, 28 on the board for the loss of 3 wicket. Nikhil. They wanted to go for the drive, doesn't get that much of timing enough, but good enough to rotate the strike to pick the single for Madhu. Is off the mark, and scoreboard moves on to 29 for the loss of 3 wicket. Last 5 deliveries remaining in their innings. Left and right combination making a little bit extra hard work in the fielder for the fielders. Every time strikes are rotated, the field set absolutely need to be changed. Some of the field has got a lot of promotion from one place to another. Again, bowler bowls. Almost the ball is got inside edge of the bat. Lovely delivery indeed. Last moment, the batter has got a bat onto that. The ball is almost targeting the midland leg stump of the batter. 30 on the board. Last 4 deliveries remaining. Madhu back on strike. Outside the run of off temper and dot delivery. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. This time driven that one to deep long on region for a single. They wanted to come back for the second, but they won't get 1,000 rupees announced for 1-6 for Pratham, which is announced by Rakshak. So exceeds the time limits, the fielding team, so that they have to bring one fielder inside the ring. Not more than 4 outside the circle. So left-hand batter is on strike now. Nikhil to Pratham. This time Pratham played it very nicely in the gap, and the fielder is there in the deep. And before Sachin will going to get that down at mid-wicket region, ample time for the batter to complete a couple of runs. With that couple of runs covered, moves on to 33 on the board. Still the opportunity for Pratham to get 1,000 rupees. 1 ball remaining. The last opportunity for Pratham to get the distance and grab the opportunity. They again played it nicely into the deep long on region, down the ground.
The last ball, they're trying for the second and misses it, or looks like he's short of his crease. Run out, 1 run and a run out. This is a result of the last delivery, and that means team UFC fighters will going to finish their innings of 5 overs quota by scoring 34 runs, and they set a target of 35 to win the match. 35 is a target for the team Good Day Jacks to win this match, and looks like it's going to be a good total, fighting total on the board. 7 runs per over, the required run rate for the team Good Day Jacks. We'll take a short break in our commentary box, and after the short break, my friend Gopi will go to take over the microphone when UFC fighters coming to the middle. Openers will go into coming to the middle to chase that 35 to get their first victory. धन्यवाद सतीश। तो सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला अत्तावरा प्रीमियर लीग सीजन 6 2025 की बेहतरीन प्रगति यहाँ पर होते हुए आज सुबह उद्घाटन समारोह होने के बाद ये श्रृंखला शुरू हो चुकी है और पहला मैच इस वक्त प्रगति पर गुड डे जैक्स और यूएफसी फाइटर्स के बीच। और पहले बल्लेबाजी करते हुए गुड डे जैक्स ने 34 रन जोड़े। 35 रनों का लक्ष्य इस वक्त यूएफसी फाइटर्स के सामने रखा है। 34 रन स्कोर्ड बाय गुड डे जैक्स एंड बैटेड फर्स्ट। In fact, it's UFC fighters managed to score 34 runs in the stipulated 5 overs, and now the target for Good Day Jacks is 35. And their innings now going to start. Their openers are now coming out to the middle. Or 35 run required run rate. 35 they have to score out of their 30 stipulated deliveries with the required run rate of exactly 7 runs per over. With the help of 10 wickets, they have to score for victory. The present equation shows for them. और इस वक्त उनके दोनों आरंभिक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हैं। सुनील और धनुष आरंभिक बल्लेबाज। डियोन इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और पहले मैच की दूसरी पारी का पहला गेंद लेकर इस वक्त डियोन तैयार। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर और सब कुछ तैयार पहली गेंद के लिए। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सुनील सामना करते हुए डियोन की गेंदों का। 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। पावर प्ले के अंतर्गत पहली गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता, गेंद बल्ले पर नहीं है ठीक तरह से और विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर। निस्संदेह इस वक्त 35 रन उन्हें बनाने हैं जरूर और ये 35 रन उन्हें ठीक 7 रन प्रति ओवर की औसत से बनाने हैं। और इस बीच गेंदबाज ये गेंद स्वीप कर दिया, गेंद को खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। गेंद का लंबा पीछा करते हैं फील्डर और गेंद को इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर जब तक फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 2 रन प्राप्त करने का। और इन
2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। कपल ऑफ रन्स स्टार्टेड देयर इनिंग्स एंड नाउ दे आर 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। डियोन फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सुनील के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। रिवर्स शॉट इस बार गेंद को खेला खूबसूरती के साथ डीप थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई गेंद का पीछा करने में सफल और गेंद इस वक्त 2 रनों के लिए डीप थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर चुकी है। और इम्प्रोवाइजेशन करते हुए अंतिम क्षण में गेंद को खूबसूरती के साथ रिवर्स शॉट के जरिए खेल दिया था। बल्लेबाज ने 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। बेहतर स्ट्रोक था बल्लेबाज सुनील का और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका अब 4 रनों पर। एक बार फिर से डियोन गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। यह गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाहा ऑफ द बैक फुट। विकेट कीपर इस वक्त अपील करते हुए कट बिहाइंड के लिए, लेकिन अंपायर पर यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं है। स्कोर इस वक्त रुक चुका 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर 4 रन। बेहतर गेंद इस ओवर में गेंदबाज डियोन फेंक चुके हैं और अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को मारना चाहा, शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों से गेंद चूकी और इस बार डीप फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर 2 रनों के लिए। खराब फील्डिंग वहां पर शॉर्ट फाइन लेग फील्डर ने दिखाई इस वक्त। हालांकि गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची थी, कोई भी रन की संभावना तो वहां पर नहीं थी, लेकिन मिसफील्ड की वजह से 2 रन बल्लेबाज यहां पर प्राप्त करते हुए स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर। 6 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और इस बीच डियोन इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी करते हुए सुनील के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद को उछालना चाहा इस वक्त, नॉट कनेक्टेड दैट वन फ्रॉम द बैट, आई थिंक सो, यस इट डज, इट्स लेग बाय डिक्लेयर्ड by umpire. A single run added to the total and good start for Good Jack. 7 without loss at first over, chasing the victory target of 35 in 5 overs. They made a steady start. In fact, they managed to score 7 runs on the board after completion of first over. 28 to get in remaining 24 deliveries. 28 रनों की दरकार बचे हुए 24 गेंदों पर और रिक्वायर रन रेट अभी भी 7 पर टिका हुआ है। बहुत ही सुंदर सा विशाल सा फिशरीज यकूर का ये मैदान ना कई मशहूर श्रृंखलाओं के लिए गवाह है और एक बेहतरीन और प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट APL सीजन 6 2025 इस वक्त प्रगति पर पहला मैच इस वक्त खेला जाता हुआ और मुकाबला इस वक्त जारी है गुड जैक्स और UFC फाइटर्स के बीच। 5 प्रतिष्ठित टीमें इस श्रृंखला में इस टूर्नामेंट में भाग लेते हुए 5 प्रेस्टीजियस क्रिकेट टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट। 10 लीग मैचेस खेले जाएंगे आज और कल, और उसके बाद 3 प्लेऑफ मैचेस और एक ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच होगा कल शाम को। तो इस बीच गेंदबाज तैयार ओवर की पहली गेंद लेकर। बाबू गुड्डा टाइगर्स का मुकाबला होगा गुड्डे बुल्स के साथ अगले मैच में, तो इसलिए मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट दरख्वास्त निवेदन करता हूँ कि कृपया स्टेज पर उनके खिलाड़ी सर्व खिलाड़ी संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। और इस बीच गेंदबाज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार और सुनील इस वक्त सामना करते हुए। धनुष अभी तक उन्होंने कोई गेंद का सामना नहीं किया यहाँ पर और पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और गेंदबाज इस वक्त तैयार। ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्टीयर करना चाहा, गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 7 रनों पर। बेहतर गेंद के साथ गेंदबाज इस वक्त शुरुआत कर चुके हैं। धनुष जो कि गेंदबाज ये गेंद स्वीप कर दिया, गेंद को इस वक्त डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन के लिए बल्लेबाज ने और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका 8 रनों पर। अब धनुष जो पहली बार इस मैच में सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज भी हैं धनुष। तो धनुष गेंदबाज हैं, इस वक्त गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज धनुष के लिए। तो धनुष के लिए और फील्डिंग में कुछ हद तक गेंदबाज धनुष इस वक्त गेंदबाजी में कुछ हद तक इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ये गेंद ड्राइव करते हैं बैक टू द बॉलर की दिशा में और इसी के साथ गेंदबाज धनुष की गेंद पर बल्लेबाज धनुष की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है।
ऐसा कहना पड़ेगा, स्ट्रोक्स को चेक किया था अंतिम एक्शन में ऑफ द बैक फुट, लेकिन कॉट इन बोल्ड, फॉलो थ्रू में एक बेहतर शार्प कैच। इस वक्त गेंदबाज धनुष ने लपका और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है बल्लेबाज धनुष का। तो 8 रनों पर पहला विकेट खो चुका है इस वक्त गुड डे जैक्स। इट्स 8 for 1 at the start of the second over. सुशांत द नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और वो इस वक्त सामना करेंगे धनुष की गेंदों का। फील्डिंग में जमावट इस वक्त धनुष करते हुए और इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक फील्डर इस वक्त मौजूद। डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर ठीक सीमा रेखा के पास तैनात, लंबे स्ट्रोक्स रोकने के प्रयत्न में और ये गेंद इस बार bowled him, just gone for drive, terrific one from the bowler and he just got the rid of the batsman. धनुष की बेहतर गेंद थी इस वक्त, ऐसा कहना पड़ेगा। गेंद कुछ हद तक निप बैक होते हुए अंतिम एक्शन में इस गेंद की टर्न को समझ नहीं पाए और गेंद को खेलना चाहते थे, चूंकि गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए लेग स्टंप पर जा टकराए। गिल्लिया बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में सुशांत की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। 8 रनों पर दूसरा विकेट यहां पर हो चुका है गुड डे जैक्स। इट्स 8 for 2 इन द ओवर नंबर 2। नए बल्लेबाज श्रेयस का आगमन यहाँ पर होता हुआ और वो इस वक्त सामना करेंगे धनुष की गेंदों का और हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त धनुष तैयार और देखना यह कि वो अपना हैट्रिक परिपूर्ण कर पाते हैं या नहीं। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए और गेंदबाज धनुष अपना हैट्रिक गेंद लेकर तैयार श्रेयस के लिए। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए श्रेयस जो कि सामना करने के लिए तैयार। लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए शॉर्ट फाइल लेग फील्डर के हाथों से गेंद चूकी, लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए गेंद वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर धनुष फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए यह गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया शॉर्ट कवर की दिशा में, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन इस वक्त प्राप्त करने में सफल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर। 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर और धनुष इस ओवर में अंतिम बार अब तक उनका यह सफल ओवर समाप्त हो चुका है जिसमें 2 विकेट अब तक वो प्राप्त कर चुके हैं पहले 5 गेंदों में। इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार, रिवर्स शॉट गेंद को खेला खूबसूरती के साथ बकड़ा थर्ड मैन की दिशा में 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गुड ओवर फ्रॉम धनुष केम्स टू एन एंड, जस्ट 4 runs came from this over after 2 overs good jacks are still searching for the right track. It's 11 for 2. ಗುಡ್ ಡೇ ಬುಲ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ ಡೇ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದ 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. थर्ड ओवर स्टार्ट्स, इस वक्त तीसरा ओवर शुरू होता हुआ 5 गेंदबाज इस्तेमाल किए जाना ज़रूरी है इस 5 ओवर की पारी में. हर गेंदबाज को 1 ओवर फेंकना होगा और इस पर तीसरे गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए यूएफसी फाइटर्स की ओर से. बहुत ही सुंदर सा विशाल सा मैदान की दाईं ओर जो कि नेशनल हाईवे इस वक्त गुजरता हुआ और मैदान की सीधी ओर, कमेंटेटर बॉक्स की सीधी ओर अगर देखा जाए तो रेल की पटरी जिसमें से
हर 10-15 मिनट में एक ट्रेन गुजरता हुआ। कुल मिलाकर हरा भरा मैदान, यकूर का फिशरीज मैदान और एक बेहतरीन प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई APL सीजन 6 2025 के नाम पर अद्वित गेंदबाजी शुरू करते हुए पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर। 12 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट। स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन और अद्वित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए एक बार फिर से वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर। 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 स्टार्टेड जस्ट शॉट वाले को। कोई भी सही गेंद इस ओवर में गेंदबाज अद्वित ने नहीं फेंकी है और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बेहतर गेंद थी। इस वक्त ऑन साइड पर गेंद को वोड़ना चाहता, अंतिम क्षण में अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया और देखा कि इस वक्त विकेट कीपर भी कहना पड़ेगा गेंद उनके हाथों से चूकी थी और आखिरकार एन वक्त पर बल्लेबाज क्रीज पर वापिस रन्स नहीं मिलेगा। 2 वाइड गेंद फेंकने के बाद एक बेहतर गेंद के साथ गेंदबाजी की शुरुआत कर चुके अद्वित। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला, गेंद निकलते हुए थर्ड मैन की दिशा में और सीमा रेखा को पार कर चुकी इस वक्त 2 रनों के लिए। 2 डिक्लेयर्ड और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 in progress. Still exactly 20 runs more now they have to score for victory in remaining 16 deliveries. और अद्वित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए सुनील सामना करते हुए ये गेंद स्वीप किया इस वक्त। शॉट फाइल पर गेंद पहुंची, रन इस वक्त नहीं मिलेगा और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 15 रनों पर। बराबर का संघर्ष इस वक्त जारी और 15 गेंदें बाकी, 20 रन और चाहिए विजय के लिए। 20 रन्स टू गेट इन रिमेनिंग 15 बॉल्स नाउ। अद्वित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद ऑन साइड, मिसेस, ही मिसेस एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस। 1+1 2 रन्स एडेड टू द टोटल। वाइड का इशारा अंपायर का और तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में ये 2 रन उनके खाते में जुड़ चुका है और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, एक और वाइड। अपनी सही लेंथ और लाइन प्राप्त करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करते हुए इस वक्त गेंदबाज अद्वित इस ओवर में 4-5 वाइड इस वक्त फेंक चुके हैं और एक रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 18 रनों पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। एक लंबा ओवर गेंदबाज अद्वित का इस वक्त प्रगति पर और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा जरूर। स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे और आखिरकार कोई दिक्कत ही उन्हें नहीं हुई 1 रन प्राप्त करने में और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 14 बॉल्स लेफ्ट, 16 रन्स रिक्वायर्ड। अद्वित इस बार लेग स्टंप से काफी बार शॉर्ट फ्रंट लेग फील्डर चूके और इस बीच इस बार गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है और 3 रन मेरे ख्याल से यहां पर जोड़े जाएंगे। 2+1 3 रन्स एडेड टू द टोटल और इन 3 रनों के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा इक्वेशन, समीकरण सीम्स टू बी मच इजियर फॉर देम नाउ। 14 बॉल्स लेफ्ट, 13 रन्स रिक्वायर्ड और काफी लंबा ओवर अद्वित का इस वक्त प्रगति पर। अब तक 11 रन इस ओवर में वो प्रदान कर चुके हैं। 11 रन्स already conceded by the bowler Advit in this over और 2 गेंदें इस वक्त अभी भी बाकी इस ओवर में। तो गेंदबाज अद्वित को इस वक्त टीम के अन्य खिलाड़ी कुछ समझाते हुए कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करनी चाहिए और श्रेयस इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अद्वित की गेंदों का। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, टॉप एज मौका, लेकिन फील्डर थोड़ी से पीछे तैनात। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। ओवर थ्रो
और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज 2 रन यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं। विकेट कीपर की काफी पहुंच से बाहर, काफी ऊंचा थ्रो था इस वक्त। जब तक गेंद को बैकअप किया जाता 2 रन का, दूसरे रन बल्लेबाज तोड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 24, 11 टू गेट फ्रॉम 13 डिलीवरीज नाउ। 11 रन चाहिए, 13 गेंदें बाकी। और अद्वैत इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। टॉप एज एक बार फिर से, लेकिन इस बार फीडर के हाथों में शॉट थर्ड मैन पर रहा। इस बार गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाया, टॉप एज पर गेंद टकराई थी और हालांकि गली के फील्डर को 3-4 कदम आगे जरूर दौड़ लगानी पड़ी, लेकिन न गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए इस कैच को लपकने में सफल। 24 for 3 और एक लंबा ओवर, प्रोलॉन्ग ओवर केम स्टूडेंट फ्रॉम अद्वैत। So 3 gone and 13 runs scored from this over, and because of this over I must say Good Jacks are now back in the game. Now 11 to get from 12 deliveries. रघु गेंद इस वक्त शुरू करते हुए और चौथा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ। गुड बुल्स की गुड जैक्स की पारी में, और निश्चित रूप से कम बैक करना है तो इस वक्त यूएफसी फाइटर्स के गेंदबाज को घातक गेंदबाजी करने की इन बचे हुए 2 ओवर में अगर उन्हें 11 रन बनाने से रोकना है बचे हुए 12 गेंदों में। और रघु फील्डिंग में जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। क्विकर गेंद, दिस इज आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, गेट्स सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट। और गेंद को रक्षात्मक तरीके से पुश करना चाहा था, लेकिन गेंद की तेजी को भाप नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। और रघु एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार रहा। ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर, 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। स्टिल आई मस्ट से द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन and 10 balls remaining, 10 runs still they have to score for victory. और रघु गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हैं। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग को फील्डर को काफी स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया, डीप फाइन लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दरमियान। और रघु दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार। इस बार जस्ट ओवर द फील्डर्स हेड एट शॉर्ट फाइन लेग और गेंद सीधे फ्लक्स पर टकरा चुकी है। 1 रन इस वक्त घोषित था अंपायर द्वारा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर। हालांकि गेंद टॉप एज पर जरूर टकराई थी, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर जो खड़े हुए थे उनके सिर के ऊपर से गेंद निकली, पेशकश के दायरे के बाहर हो चुकी है, सीधे सीमा रेखा के फ्लक्स पर टकरा चुकी है 1 रन के लिए। 9 गेंदें 9 रन चाहिए। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, शॉर्ट फाइन लेग फील्डर चूंकि 9 सेकंड बल्लेबाज काफी आगे निकला है, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित। डॉट गेंद, और ऐसे ही चंदा और डॉट गेंदों की जरूरत है यहाँ पर कम बैक करने के लिए यूएफसी फाइटर्स के गेंदबाजों को। तो 8 गेंदें बाकी और 9 रन चाहिए विजय के लिए। अब तक बेहतर ओवर अरुण का रघु को इस वक्त साबित हो चुका है। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, लेग स्टंप पर आते हुए शॉट विकेट कीपर के हाथों से गेंद चूकी शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में गेंद, बाई का इशारा। 27 now 8 runs to get from 7 balls। 7 गेंदें 8 रनों की दरकार और इस ओवर में अंतिम बार रघु गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए सिर्फ 3 रन पहले 5 गेंदों में गेंदबाज रघु इस ओवर में प्रदान कर चुके। बेहतरीन ओवर उनका प्रगति पर रहा। इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए
Oh, fantastic delivery too. And the fantastic over. 4 overs completed. Now, 6 balls remaining, 8 runs required. And what a fantastic over came student from राघु. और इस बेहतरीन ओवर की बदौलत जिसमें राघु ने सिर्फ 3 रन प्रदान किए, 2 रन बल्ले से, 1 रन बाई के रूप में. और इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा यूएफसी फाइटर्स इस मैच में लगभग वापस आ चुका. अब 6 गेंदे बाकी, 8 रन चाहिए. 8 टू गेट फ्रॉम 6 डिलीवरीज. और काफ़ी लंबी बातचीत इस वक्त चलते हुए यूएफसी फाइटर्स के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए. और इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट मैंगलोर मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है कमल ब्रदर्स इनके सारथ्य में. और एक बेहतरीन अंपायरिंग का पैनल इस श्रृंखला के लिए नियुक्त किया गया. श्रीमान रोलैंड पिंटो, श्रीमान सुरेश मोडबिद्री और श्रीमान सीरज कुंपला इनके सारथ्य में यह श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए आजीम गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. प्रसाद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. 8 टू गेट फ्रॉम 6 बॉल्स. पहले गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. लेफ्ट साइड, दिस टाइम इज गॉट द डिस्टेंस. यस इट डज. और इस छक्के के साथ, इस श्रृंखला के पहले छक्के के साथ जो प्रसाद ने इस वक्त लगाया है, गुड्डे जैक्स इस वक्त कहना पड़ेगा अपने विजय के अति निकट पहुंच चुका है. तो 2 रन अब चाहिए विजय के लिए. What a fantastic struck came from the bat of Prasad. The full toss गेंद and he just hammered it away with a reverse shot down to deep back to the third man fence for a maximum. 2 to get from 5 deliveries. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೆರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಸ್ ಬಾರ್ ಸ್ವೀಪ್ कर दिया खूबसूरती के साथ डीप बैक स्क्वायर लेग पर जस्ट अ सिंगल. इनफैक्ट स्लाइड बिट फंबल देयर, लेकिन बल्लेबाज 1 रन बल्लेबाज को मिला. स्कोर्स आर नाउ लेवल. ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Now 4 balls left, 1 run required. Left it, that's it. And he just finished the match in a style with a boundary. तो इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन क्रिकेट अंतिम ओवर में गुड्डे जैक्स के बल्लेबाजों ने दिखाई, खासकर प्रसाद ने. और बेहतर पारी जो कि खेली थी सुनील ने, चौके के साथ पारी को संपन्न कर चुके. और ये मैच गुड्डे जैक्स 7 विकेटों से जीत चुका, 3 गेंदे बाकी रखते हुए यूएफसी फाइटर्स के खिलाफ. और इस विजय के साथ इस श्रृंखला के इस टूर्नामेंट के इस टूर्नामेंट के पहले मैच में परिपूर्ण अंक प्राप्त कर चुका है. दे बैक द कंप्लीट पॉइंट्स. नाउ सेकंड मैच, बाबूगुड्डा टाइगर्स विल टेक्स ओवर गुड्डे बुल्स.
So thank you very much, Gopi. Welcome back for the match number 2 of day number 1 of prestigious Attavara Premier League 2025 season 6, which is proudly presented by Sri Durga friends Attavara Babagudda in this Ekuru Fisheries cricket ground. Winning the toss, captain of Babagudda Tigers, they elected to ball first, and we are going to witness the innings of team Good Day Bulls. Opening batters already they are occupying their respective position. The strikers and non-strikers and even umpires also they're taking their respective position along with Roland Pinto. The first time today, Sriraj of Goryang Boys and is a field umpire at square leg. So power play number 1 will going to start here. 5 overs game, 1 hour going to be a power play, not more than 2 fielders outside the circle. And straight away we witnessing 1 fielder in that deep square leg region, 1 fielder down at the deep long of the fielders outside the circle. Signal came from umpire Roland Pinto, and umpire here, of course, scorer here. Wilson will going to start proceedings. Here comes right arm over the wicket, balls outside the line of leg stump. Just wanted to get the ball on the fine leg region, and Sandeep Babagudda, one more very talented and good striker of the ball. Sandeep just wanted to get the ball on the onside region, but fails to make a contact, and no runs scored. Again, one of his favorite area, played it very nicely into deep square leg region, and fortunately the couple of runs, because there was some declared areas down at fine leg region. Little bit played it square and not deep fine, and just behind the square played it down to deep fine leg for a couple of runs. So Sandeep is off the mark with that couple of runs. One of his favorite sweep shot, played it down to square leg for a couple of runs. He's off the mark, and team Good Day Bulls is also off the mark. Oh, balled him, cleaned him up, just brushing the bails. And this is what the wicket wanted for the team Babagudda Tigers. Absolutely perfect one. And Sandeep again just wanted to play the sweep shot, but line is not that much of good enough to play the sweep shot. Just misses the line completely. And ball hitting the off stump, brushing the off stump. The bails are uprooted from the groove. And wicket number first is back in the pavilion. So Sandeep not really able to get the ball to his bat while going for that sweep shot. You need to see the line of the ball. It's not good enough to play the sweep shot, and he just pays the penalty for that. The ball, Wilson has got a very important breakthrough for his team. Bright and sunny morning, and we can see the typical the weather condition of the month of November. They almost we are started to witness some winter season. Slight a bit of cold weather in the morning, but when time progresses, we are going to witness some hot condition here in Mangalore. Wilson, 4th time in this over. Balls try to get the ball on the onside region. Umpire not interested, but very much interested to give the decision in the form of leg by, and with that leg by score, but the moves on to 3 on the board. Akshay, the opening batter, first time he will go into face of this first over. The very good striker of the ball, experienced campaigner in the side of Good Day Bulls, will going to take his first delivery, and Wilson over the wicket right arm tries, but very good stop by the fielder. Excellent stop. Even that ball has got extra bounce, but managed very well by the fielder to getting these 2 hands to stop that speed of the stroke, and no run scored. 3 for 1. Again, lack of timing in that shot there from the batter. The first over, tidy over and good over from Wilson. Wicket taking over as well. And good start here for the team Babagudda Tigers. Winning the toss, selected to ball first. It's 3 for 1. Team Good Day Bulls.
Season 6 has got some very exciting individual prizes for the performers of the 5 teams which is taking part in this cricket tournament in the round robin league matches, and 4 teams will going to qualify for the playoff round, and top team will going to play the qualifier, and number 3 4 will going to play the eliminator, and after that we are going to witness the qualifier number 2. Then mega final that will going to commence tomorrow will be the final day and decider day of Attavara Premier League 2025 season 6. Sri Durga friends, the organization which is engaged in sports activities, but not only the sports activities but even in social activities. The team, the Sri Durga friends, Attavara Babaguda, and they got a name and fame for their outstanding journey. They are celebrating their 13th year, the successful journey. Oh, this time he connected one and fielder has taken the catch. My goodness, that was an outstanding connection there from Puneet, but unfortunately the placement is not good enough. He is choosing the fielder at deep square, like I already mentioned. Getting a distance in this big ground, it's not so easy. The Puneet is more disappointed because he thought it might be a maximum after seeing that he's connected that one by stretching his front foot, play that slog sweep shot beautifully. But that's all happening in cricket sometime. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement. Even the good catch which is in the end taken by the deep square leg, I have to move to his left and need to come to front quickly to take the catch, and at last the good judgment catch taken in the end by the deep square leg fielder. So trouble continues here for Good Day Bulls. Already 2 big bulls are back in the pavilion, and then another bull came into middle, Nazir. That ball is just passing the leg stump of the batter, slight a bit, and no run scored. The wicketkeeper in a fraction uprooted the stumps for the result, but umpire rightly says it's not out. The Ekuru Fisheries Cricket Ground has got sweet memories. I want to tell you, this is one cricket ground has got some history. One of the oldest ground when under-arm cricket is invented. It might be the late in 50s or 60s. And this is the one cricket ground. I still remember witnessing some prestigious cricket tournament in the 80s and 90s on floodlight match. Still I remember when I representing for Hanuman cricketers. This is the one cricket ground. Has witnessed so many big tournaments. But time progresses. Of course, we're not having that much of open to all cricket tournaments in this Fisheries Cricket Ground, and already Mangalore City facing some shortage of the cricket ground. We need to retain this cricket ground. So this time pushing and running. Nazir know exactly that the fielder is in the edge of the circle. After just push the ball, good response came from Akshay as well for that single, and with the addition of that single, score numbers on to 4 on the board for the loss of 2 wickets. Need to rebuild the innings here or not for the team Good Day Bulls after they got a shackling start. Kiran, 5th time in this over. Outside the line of off temp and wide call by umpire, looking for the extra quicker delivery, and just lost his line, which is far outside the line of off temp. 5 on the board. This time catch it is a call. The loose stroke there from Akshay in the field. Oh, drops the catch. My goodness, straightforward chance. You can't give the life to the batter like Akshay. No power whatsoever, Akshay, this time. Definitely, if you get a little extra power in that shot, then definitely there you need to find the ball out of the park, because he's just playing that delivery with the direction of the wind. Faded ball with the direction of the wind. Again outside the line of off stump. Better line for the left-handed batter. Outside the line of off stump, just couple of inches away from the bat. And
dot delivery. Scoreboard 7 on the board. Final time. This time one more dot ball. A very good stop here from both the opening bowlers of team Babagudda Tigers. 2 gone. Good Bulls are 7 for the loss of 2 wickets. Next match, Good Day Jacks takes on Swing Kings. So that I request both the teams' players please complete the formalities of signatures. After this match, we have, of course, the inaugural ceremony in our main stage left for our commentary box. The well-arranged stage here for the inaugural ceremony of Season 6 of Attavara Premier League 2025. We are going to witness some dignitaries for that inaugural ceremony. So we are coming to the ball over number 3. Rakshit brought into attack. One more very talented and experienced campaigner from the highway end will go into ball to Punit. Correction, the batter Nazir. The starts with the no ball. It's a big no, by the fact the ball pitched outside the line of the pitch, so that umpire called it free hit delivery as well. So opportunity for to Punit to grab this free hit delivery because his team is wanted some runs. Coming down the track. Looks like umpire Sriraj and saying it's not out. And maybe thinking about, of course, there is no stump out chance, but there is opportunity of run out. But if the ball is having a bat of the batter, definitely that is a run out. If it is not a bat, then probably the stump out. But stump out will not given for the free hit delivery, but run out definitely will count it. I think this bat which is not involved, so umpire is not really looking for any decision there for the third umpire for that run out attempt, stump out attempt by the wicket keeper. It's 9 on the board for the loss of 2 wickets. 8 correction, Rakshit who survived from that free hit delivery. This time plays it gently down to cow point region for a single. One more addition with the addition of that single score, but moves on to 9. Over number 3 in progress. Akshay back on strike. Akshay is a kind of batter who loves to play the big shots. And balled him, cleaned him up. This is a beauty. Absolutely the perfect delivery indeed. Coming into the batter and Akshay just thinking about that might be a short pitch delivery. I want to go for the big shot. But he misses the line, beaten by the flight and the turn. And that was a good stop there from Rakshit to dismiss Akshay. Now more trouble for team Good Day Bulls. It's 9 on the board for the loss of 3 wickets. So far Babagudda Tigers and Babagudda name itself, of course, in the olden days, 18 and 90s, we have one big name from Babagudda, FCC Babagudda. The one more, the big name in underarm cricket. They are regularly taking part in the cricket tournaments played in Mangalore city. They got some good quality players in that FCC Babagudda. Pradeep, new batter in, replacing Akshay. And Rakshit, successful bowler. Good comeback after that no ball in the first ball. He bowled well after that. Again down to outside the line of leg stump. Batter just wanted to get the ball on the onside region. Umpire called it wide, and warning number 1 which is given for bowler Rakshit. 10 on the board for the loss of 3 wickets. This is again the wide and consecutive 2 wides altogether. 3 extras in this over. No ball, 2 wides, and scoreboard is 10 on the board.
Oh, catch it is a call. Big neck wicket keeper. I have to extend his hand to get the catch, but ball at last moment, the ball just slipped out of his hands. Otherwise, a good catch again for the wicket keeper. But unfortunately, ball slipped out of his hand. One more good delivery, chance of run out in the non-cycles, and they're going for run out shy at the stump. But throw misses by the bowler, and both the batter completed the single. It's 11 on the board. The last time in this over. Straight to the answer fielder. Loose stroke there from Puneet. Not really Nazir, correction. Not really watching the fielder at cow point region. Straight to him. And 2 wickets in this over for Rakshit. And problem continues for team of Good Day Bulls at 11 for 3. 11 for 4 in fact after completion of over number 3. Two overs remaining in the innings of team Good Day Bulls. The Bulls have to bounce back here. And after losing 4 front order batters very cheaply, all that single digit we can see. Sandeep is out for 2. All the big names, Puneet, Nazir and Akshay, is a huge dismissal from the point of view of this match is concerned. Bowler brought into attack to bowl the over number 4. Starts with a dot ball. Excellent one from the bowler who brought into attack with the jersey number 13. Munna. Catch it is a call, but ball landed safely. Not more than a single. They're looking for the second, asking for trouble. The first attempt bowler fails to gather the throw, which is came in half volley. But second attempt is uprooted the stump, but it's too late. So that Gautam survived. On the board and a couple of runs. Very lucky indeed here, Gautam, as he just survived. Gautam, one knowing for both format of a game, underarm and overarm cricket. Very good player, so very good all-rounder. Again, looks like the bails are off. The bails are off and the batter is back in the pavilion in the form of bowled out. Munna absolutely doing a great job here for the team, but the Good Day Bulls are really struggling. The wickets are tumbling like a pack of cards. All the 5 wickets are back in the pavilion. It's 13 for 5. Good Day Bulls are looking in more trouble. Outstanding bowling performance so far from the bowlers. Winning the toss, elected to bowl first. The batters are really struggling against the disciplined bowling by the opening bowlers, and after that a good backup by Rakshit and now Munna. Prajwal, new batter in. Wait and see how Prajwal will going to contribute here. Only 9 deliveries left in their innings. 13 on the board. This time opportunity of run out. Direct it, but batter is safe here. The option for the run out, opportunity of run out there in the non-strikers end. The bye called by umpire. One more addition, and Gautam very quick between the wicket, so that he managed to complete that quick single. 14 on the board for the loss of 5 wickets. That brings Gautam into strike now, after being witnessing some dismissal in front of him. Now he'll going to face the next delivery from Munna. Right arm over the wicket balls. This time try to go for the cover drive. Chance of run out. Wicket keeper misses. Wicket keeper Rakshit misses the throw from the bowler. Otherwise, the one more wicket for Babu Gudda Tigers. It's 15 on the board
for the loss of 5 wicket. The last delivery of the over number 4. One more tidy over is in progress. Already 4 runs came from this over. Wicketkeeper misses. Just wait for the umpire decision. 1+1, the bonus run. What the team Good Day Bulls will going to enjoy in this situation like this. It's 17 now on the board. Munna to Gautam. Wanted to go for the reverse sweep. And this is not ideal delivery to play the reverse sweep. The line is so good in the negation which is coming into the batter. And Gautam just wanted to play that unorthodox the reverse sweep, but fails to make a contact, and ball hitting the middle stump. And wicket number 6 is gone for Good Day Bulls. Even over number 4 also comes to an end. It's 17 for 6. And jersey number 17 is coming to the middle. So last over going to start from the highway end. Sonal with the jersey number 19 will going to start the final over of the innings of Good Day Bulls. This time top edge, but landed safely. No man area at square leg. Arun, the experienced campaigner, down at mid-wicket. I have to collect the ball down at square leg. Ample time for the batter to complete the single. With that single score, but moves on to 18 for the loss of 6 wickets. Dixit. Oh, beautifully ball. Flighted delivery. Excellent delivery for the right-handed batter. Very difficult to explain that turn of the ball because of a square angle commentary box. Sonal. Balled him. One more wicket. And have a look at the bowler. He's keep on appealing for something, but he's not really knowing that the ball hits the stumps. The bails are off. Keep on appealing. But their partner saying that he's got a wicket. We've got a wicket. No, the ball is hit the stumps. Wicket number 7 gone. It's 18 for the loss of 7 wicket. And the over number last is in progress now. 3 balls remaining in the innings. And disappointment performance continues here from the batters of team Good Day Bulls. 18, the jersey number. Ravi. I think it's not a good decision to send jersey number 18 as a number 9 batter. Wait and see. The 3 balls remaining. So far, outstanding bowling performance from Sonal. 4th time in this over. Again, understandable why he sent. Oh, broad direct hit is gone. 1 more wicket back in the pavilion. Wicket number 8 gone. And Good Day Bulls are again not really getting out of the trouble. The trouble in each and every over. Wicket number 8 gone. It's 18 for 8. I need to appreciate Babagood, the Tigers. The fielding department is so good. Accuracy in the throw. The bowler absolutely spot on. Even though some extras which is conceded in the 7 or 8 extras. But still they managed to contain the runs from the bat of their opposition. Bharat, experienced campaigner, is number 10 batter for the side. Balled him, cleaned him up, 1 more wicket gone. So Sonal absolutely has got a habit of picking up wickets. Now
umpire Roland Pinto saying that that fielding team exceeds the time limits. Last ball, last wicket, and last opportunity for Sonal to get the hat-trick, the first hat-trick of the tournament. So everything is last here. Last delivery, last batter, the last opportunity for the bowler. Now wait and see. Can Sonal to become the first bowler of the season 6 of APL to get the hat-trick of the tournament. Here comes the last delivery. The last batter Ranjit will go into face. Appeal, umpire, you're not interested, and a chance of run out and bundle out. Umpire says not out, the bowler just missing the opportunity of that leg before wicket. And anyhow, the bundle out, all out team, good doubles, unfortunately not able to get a big total there. Bundle out for 18. And Gopi is very happy because 18 looks like match will go into finish early. We'll go in some rest here. And of course, you all definitely will going to get the rest because after this match we have inaugural ceremony, Gopi. More than half an hour you will going to get the rest. And don't worry. So 18 runs, which is a total score. 19 runs required for the victory. And wait and see how well the bowlers will going to come back here of good doubles, and wait and see how Babaguda Tigers will going to get this total very quickly. It's time for change in commentary box and change in wise. It's over to Gopi. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದರಿಂದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಭವ್ಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು 5 ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಾರ್ಡ್
और जहां तक सवाल है, धन्यवाद सतीश, तो इस वक्त 19 रनों का लक्ष्य सिर्फ बाबू गुड्डा टाइगर्स के सामने गुड्डे बुल्स के बल्लेबाजों ने रखा है। और जहां तक सवाल है बाबू गुड्डा टाइगर्स के गेंदबाजों को, तो बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की। इस वक्त पहली गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंचे बैक टू द बॉलर की दिशा में, पैरों पर टकराने के बाद बल्लेबाज के रन्स नहीं मिला। और एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हुए बाबू गुड्डा टाइगर्स के गेंदबाजों ने गुड्डे बुल्स के बल्लेबाजों को सिर्फ 18 रनों पर बांध कर रखा। उनकी सर्व बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, उनकी पारी सिमट चुकी है सिर्फ 18 रनों पर। और इस बीच लेग स्टंप से बाहर वाइड के साथ शुरुआत कर चुके हैं अक्षय गेंदबाज। अखिलेश और किशन आरंभिक बल्लेबाज, अखिलेश से सामना करते हुए फुल टॉस, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। और इस बीच गेंद लगभग बीमर के तौर पर निकली थी और आखिरकार नो बॉल के रूप में रन जुड़ चुका। फ्री हिट गेंद बल्लेबाज के लिए और अक्षय, यह गेंद उछाला इस वक्त खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर वहां पर आते हुए और इस कैच को लपकने में सफल बेहतरीन तरीके से। और फ्री हिट गेंद इस वक्त होने की वजह से बल्लेबाज यहां पर बच चुके हैं। कैच काफी बेहतरीन लपका था इस वक्त लंगोन के फील्डर ने 10-12 कदम दौड़ते हुए, लेकिन फ्री हिट गेंद होने की वजह से बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बच चुके हैं। 2 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ 4 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। यह गेंद ऑन साइड पर आती हुई वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर। जितना जल्दी ये मैच बाबू गुड्डा टाइगर्स जीता है उतना उनके नेट रन रेट में वृद्धि होगी। और इस बीच ये कि एक्स्ट्रा बाउंस एंड बीट द शॉट, थर्ड मैन फीडर बाय सिंगल, और 1 रन मिलेगा इस बीच। और स्कोर बढ़ के अब पहुंच चुका 6 रनों पर। और इस मैच को जल्द से जल्द समाप्त करने के प्रयास में बाबू गुड्डा टाइगर्स के बल्लेबाज, यहाँ तक कमबैक करना है तो एक घातक गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी बाबू यहाँ पर गुड्डे बुल्स के गेंदबाजों को। और इस बीच बेहतर गेंद थी इस वक्त अक्षय के, और रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। पहला ओवर प्रगति पर 2 गेंदें अभी भी बाकी इस ओवर में। अक्षय again drive kick, खूबसूरत strong into the gap as well, and a long chase for the feeder, but he won't cut that one, and it's gone over the fence for a boundary. Fantastic struck came from the bat of Akhilesh. ऐसा कहना पड़ेगा कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से इस वक्त खाली क्षेत्र चुनते हुए गेंद को इस वक्त डिस्पैच कर दिया, निकाल दिया 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, 10 ऑन द बोर्ड। ये टू लूज एनी विकेट, और अक्षय गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस बार बल्ले का बाहरी किनारा शॉर्ट थर्ड मैन पर, जस्ट अ सिंगल ही गॉट। फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर बाबू गुड्डा टाइगर्स, 11 runs scored from the first over, and now straight away the required rate is now coming to exactly 2 runs for. That means they have to score 8 runs in remaining 24 dealers. That means in remaining 4 overs. Still they got all 10 wickets kept intact. All 10 wickets they got in their hand. Match number 2 of this prestigious cricket tournament, APL season 6 2025 is now progressing here, and this tournament is proudly presented by Sri Durga Friends Attavara Babugudde. In the celebration of their 6th year, they are organizing this fantastic cricket tournament in the name of APL Attavara Premier League season 6 2025. रवि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और ओवर की पहले गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई, और दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ उनकी पारी में। यह गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त। सेंसिबल क्रिकेट इस वक्त अपनाते हुए बल्लेबाज अखिलेश ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त हो चुका है पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस मैच। किशन इज नॉट गोइंग टू फेस, और रवि इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। इस बार दैट वाज अ डिफिकल्ट चांस, बट द चांस इज नाउ गॉन इन वेन। मौका जरूर था लेकिन मुश्किल था, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को लपक नहीं पाए शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 13 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। दूसरा ओवर प्रगति पर रवि लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, 14 ऑन द बोर्ड। इस मैच के बाद भव्य उद्घाटन समारोह यहाँ पर होगा इस श्रृंखला का, और रवि अपनी ओर की
अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, रन अप में कुछ हद तक बाधा, एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। लेग स्टंप पर आती हुई वाइड का इशारा, एक बार फिर से दिशाहीन गेंद इस वक्त गेंदबाज ने फेंकी थी और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर। 15 विदाउट लॉस। रवि एक बार फिर से तैयार, लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, एक और वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर। अपनी मंजिल की ओर निकट होता हुआ इस वक्त बाबूगुड्डा टाइगर्स, सिर्फ 3 मात्र रन चाहिए विजय के लिए। और रवि एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यह गेंद उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, प्लम इन फ्रंट घोषित और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। अखिलेश ने गेंद कॉन्सर्ट पर उछलना चाहता, बिल्कुल लाइन पर गेंद टिप्पा खाते हुए मिडल स्टंप को केंद्रीकृत कंसंट्रेट कर आते हुए और उनका पैर बिल्कुल स्टंप के सामने था और अंपायर श्रीरज कुंभला को कोई इस वक्त दिक्कत ही नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट, एक छोटी मगर बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका अखिलेश का। अखिलेश scored 8 runs including 1 boundary and the first wicket lost for Babugudda Tigers. It's 16 for 1. विल्सन नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर पधार चुके हैं और सामना करने के लिए तैयार रवि की गेंदों का। और रवि इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, इनफैक्ट इज स्क्रैम्पलिंग थ्रू फॉर अ सिंगल एट द लास्ट मोमेंट। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर, 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और रवि फिर से एक बार तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट किशन के लिए। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त डिफ्लेक्ट जरूर किया था लेकिन शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों पे गेंद पहुंची और रन बल्लेबाज को नहीं मिला। और फिर से एक बार रवि इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए किशन के लिए। इस बार उछाला लॉन्ग ऑन पर लेकिन फील्डर मौजूद, जस्ट सिंगल कॉट, मिड विकेट पर कहना पड़ेगा। गेंद को फील्ड करते हुए फील्डर, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 18 रनों पर। 2 ओवर की समाप्ति, 2 overs completed, 18 on the board. The scores are now leveled. Now just a single run needed for Babugudda Tigers to back the complete points. दीक्षित इस वक्त नया और प्रारंभ करते हुए सिर्फ 1 मात्र रन चाहिए विजय के लिए। इस बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन पर और इसी के साथ Babugudda Tigers registered a comprehensive victory by 9 wickets against Good Day Bulls with the 17 balls. That means 2.5 overs to spare in their innings, and they won the match comprehensively by 9 wickets. And with that victory, Babugudda Tigers backed the complete points. So the match number 2 has been came to an end, which won by Babugudda Tigers was against Good Day Bulls. And now match number 3 starts, but before that there will be a grand inaugural ceremony of this prestigious cricket tournament. APL Season 6 2025 will be held in our fantastic stage. We are just watching left side of our commentator box stand, and in that grand stage there will be a fantastic grand inaugural ceremony will be held within just a short while. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಮೈದಾನದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ 5 ತಂಡಗಳ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ 5 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆಟಗಾರರು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು 5 ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಲ್ಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಾಲಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
check, test, checking, testing, check, test. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅತ್ತಾವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 6ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿಲೆ ನಮ್ಮದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. 5 ತಂಡಗಳಿವೆ, ಆ 5 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅತ್ತಾವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 6ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 13ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಾವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 5 ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಸೀಸನ್ 6ಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತಸವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸನವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಪಾಲುದಾರರು ಓನರ್ಗಳಾಗಿರುವಂತವರು ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಗುಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಸ್ ಇದರ ಭರತ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ವೇತಾ. ಓನರ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇದರ ಕೀರ್ತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಗುಡ್ಡೆ ಜಾಕ್ಸ್ ಗುಡ್ಡೆ ನಿತೇಶ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ UCF ಫೈಟರ್ಸ್ ಇದರ ರಕ್ಷಕ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಜಾ. ಓನರ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಇದರ ಆಶೀಶ್. 5 ಮಂದಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡದ ಪದುಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭರತ್, ಶ್ವೇತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೀರ್ತಿ, ನಿತೇಶ್, ಅದೇ ರೀತಿ ರಕ್ಷಕ್ ಹಾಗೂ ಮಂಜಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಶೀಶ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಓನರ್ ಆಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ತಂಡಗಳನ್ನ ತಂದು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವರು ನಮ್ಮ ಓನರ್ಗಳು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಓನರ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಲಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರುಗಳು, ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಸರ್ವ ದೇವರುಗಳನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಸಲುವಾಗಿ ಅತ್ತಾವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 6ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಓನರ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಗುಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಸ್ ಇದರ ಭರತ್, ಶ್ವೇತಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ನಿಹಾಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಹೂವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು.
ರವಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಹೂವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈಚೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ರವಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಹೂವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇದರ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಧನುಷ್, ರಕ್ಷಿತ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಹೂವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಈಚೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓನರ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಗುಡ್ಡೆ ಜಾಕ್ಸ್ ಗುಡ್ಡೆ ಇದರ ನಿತೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಪುನೀತ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ UCF ಫೈಟರ್ಸ್ ಇದರ ರಕ್ಷಕ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಜಾ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಕ್ಷಕ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮಂಜಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಮಂಜಾ ಇವರಿಗೆ ಲಾರಾ ಇವರು ಹೂವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಇದರ ಆಶೀಶ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಹಾಲ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಂಜಯ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳು. ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಹೊರಗಿಂದ ಕರೆಯುವಂತದ್ದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಬೇಕು, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು, ನಮ್ಮದೇ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೊಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ, ಸಂತಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ದೀಪವನ್ನ ಯಾಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ದೀಪ ಕೇವಲ ಅದೊಂದು ದೀಪವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಸರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬತ್ತಿಯನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಬತ್ತಿಯು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಆಸರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಪ, ಎಣ್ಣೆ, ಬತ್ತಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾಗ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟಾಗ ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅದು ಬೆಳಕಿನ ಕೋಣೆ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಣತೆಯನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ದೀಪವನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಗೆ 13ನೇ ವರ್ಷ ಸೀಸನ್ 6 ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೋಣೆಯು ಸದಾಕಾಲ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇರಲಿ ಎನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೊಂದು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಓನರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ, ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಆಗಬೇಕು. ಐದು ಮಂದಿಯನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧೈ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಇರಲಿ. ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳಗುವಂತಹ ದೀಪ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸುಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಬೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದಂತೆ. ಆ ದೀಪವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಹ ಸತ್ಯ ಆ ದೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ಆ ದೀಪ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇರಲಿ.
ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಸುನಿಲ್ ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ಇದು. ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಯೋಜಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಯೋಚನೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ, ಅಭಿವಂದನೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ರಕ್ಷಿತ್ ವೇದಿಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೈಶಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಹುಶಃ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಬಹುಮಾನಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನ ತೆರೆದು ಆನಂದಿಸಬಹುದು, ಖುಷಿಯನ್ನ ಪಡಬಹುದು. ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಬ್ರು 2 ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಜಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ಮಾತು, 2 ಮಾತು. ಬಹುಶಃ ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದು ಅಪರೂಪ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿತೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲೋ, APL ಆಜಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕಲೆ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ಸ್ ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಹಾಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಸುರುಕಾದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡದು. ಸೊ ಅಕಲೊಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ನಡತೊಂದುಂಡು. ನಾಲ್ ಅಡ್ಡೆಡ್ ಪೋರ್ನಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುರುಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲು ವರ ಮುಗಿಪ್ಲೆ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬೆರೊಂಡು ಬಂದು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪ ಆಂಡ ಇನಿ ಬತ್ತು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪನ್ನ ನಮಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಅಂಚಾದೆ ಬರತನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡು ಬಂದ ನಡಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅತ್ತಾವರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 6 ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಚು ತೋಡು ಅಕ್ಷಯ್ ನಾನು ಬಾರಿ ಭಂಗಬತ್ತದ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರಾರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ದು ಅರೆಗ ಅರ್ನ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೀಮುಗಳ ನಿಕುಲು ಸುಮಾರು ಐನಂಚಿನ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕುಲು ಈ ಮ್ಯಾಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಉಡಲಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಒರಿದೀನಿ. ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರೋಡು ಬಂದೆ ಅನ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ. ಮಾತಾಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಗ್ಲು ಶ್ರೀದುರ್ಗ ನೇಕ ಆಜಿ ವರ್ಷ ನಿಂಚ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಲ್ಲಂತೂ ಕೊರ ಅಕ್ಷಯ್ ಮಂತ್ ನಲ್ಲಂತೂ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಷಯ್ ನಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಂದು ನಲ್ಲ ಮನ್ಪುಣ ಆತಿ. ಮಂಜನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ ಪೂರ ಬತ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬಾಕಿ ಇರೊಂಜಿ 2 ಪಾತೆರೋಡು ಬಂದು ಗೆನೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕಲ್ನ ಆದಿನ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಮೂಟ ಎತ್ತಾಡು ಅಕ್ಷಯ್ ಬಕ ಪುನೀತ್ ಎಡ್ಡ ಈ ನೆಟ್ ಬೆನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬಕ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್ UFC ಎನ್ನಲ್ ರಕ್ಷಕ್ನ ಗೋವರ್ಧ ಬೈದು
ಪೂರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಪಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಗೊಬ್ಬರ ಓಪೇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಓಪೇರು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅಂದ ನಮಕ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಂಡ ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಬತ್ತಿ ನಕ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ ಬತ್ತಿ ರಡ್ ಪಾತೇರಿವರ ಪನ್ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ತೋಜಾವಲಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದೇ ಪೇರು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತನ ಆರೋಗ್ಯಲ ವೃದ್ಧಿ ಸಹ ಒಂದಿಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡ್ದು ದೆಲ್ಲಿವರ ಮುಟ್ಟ ಪೋತ ಬಂದಂಡ ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಕಾರಣ ಆತಂಡ ಆ ಗೊಬ್ಬುದ ಪುದಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಚಾದ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಗೊಬ್ಬು ನಲ್ಲಾತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನ ಪಡೆಯಾಡು ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಲ್ಲಾತ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಗಡ ಪನ್ಪುನ ನಿಲೆಟ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತನೆಲ್ಲ ಈ ದೊಂಬುದ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ಉಂತಾದ ನನ್ನ ದೊಂಬುದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾದ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಲೆಟ್ ಮಾತ ಬಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಕರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಾಳಿನ ಸಮಾರೋಪ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪೈರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಚೆ ಈಚೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪ್ರೊ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಗೌತಮ್ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಊರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇರುವವರು ಇಬ್ರು ಒಬ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಜೋರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿ ಅವರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ತಂಡ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಎಂಪೈರ್ಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ ಇಡೀ ದಿನ
ನಮ್ಮ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳಬಾರದು, ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅವಕಾಶ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರಳು ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಮಿಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭರತ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಧ್ವನಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ತುಂಬು ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂಕವನ್ನ ಬರೀತಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟುವಂತಹ ರತೀಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಜಯ್ ಮನೋಜ್ ವಮಂಜೂರು, ತಮ್ಮ ಸುಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ದೊರಕಲಿ ಎಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, so thank you very much for your wonderful contribution for the inaugural ceremony of this prestigious Attavara Premier League 2025 APL Season 6.
So thank you very much. After that inaugural ceremony and formalities of inaugural, which is completed of season 6 of Attavara Premier League 2025, which is proudly presented by Sri Durga friends and the sweet memory of their 13th year successful journey. And we are into the match number 3. Good Day Jacks versus Swing Kings. And winning the toss, Swing Kings captain elected to ball first. And here is a innings of Jack balls. Opening batters are in the middle, Sunil and Danush. And Sunil will going to take the strike of the first delivery of Ajay. And nicely steers that one beautifully down to deep backward point region. Backward point, of course, fielder just running back and ample time for the batter to complete the single before the fielder will going to field the ball. And one on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. Ajay, second time in this over. Bright sunny afternoon. Time is exactly 12 past 10 in the afternoon. Lofted nicely, but protection is there in the deep in the long on. The two protection in the power play, long on and deep extra cover, so that the batter has got ample time to complete the single. Danush will going to take the strike of the bowling of Ajay. Third time in this over, both the batters are off the mark with the single respectively. And third time in this over, right arm over the wicket delivers. Reverse sweep comes into play, and again the chase for the fielder. Excellent chase and chance of run out, but throw absolutely what we are talking about is not having that much of power enough to get the ball quickly to the hands of wicketkeeper. Wicketkeeper have to run to his front to collect the throw. And that will give so much time for the batter to complete a couple of runs. With that couple of runs, Kobat moves on to 4 on the board for the without loss of any wicket in the over number first is in progress. Danush will go into face next ball. Oh, that was a beauty delivery of the ball which is coming into the batter. It looks like they're seeing that the batters, the commitment to that ball to take the ball off the front foot. Looks like he just wanted to go for the push on the offside region. Luckily that ball just misses his off stump. Good comeback, Ajay. Reverse sweep defeats the fielder and went into that declared area for a couple of runs. So sometime intelligent cricket is required when you're playing the power play overs, even though there's a single and couple looks like as a small runs, but in this condition these all runs are very valuable. So delicately played there by Sunil, correction, and he picked up a couple of runs. With that couple of runs, Kobat moves on to 6 on the board, and Sunil is batting on 5. Oh, this is a short pitch delivered outside the run off them. Chance of run out in a non-strikers and the fielder. And again the run out chance and missed out. Couple of opportunity of run out is missed out by the fielding team. Swing Kings. Once they got opportunity, the fielder is trying to hit the stump. Instead, he can release the ball to the hands of the bowler so that they can get the chance of run out. But he's tried to hit the stump. No backup. Of course, they made a backup, but fumble from that backup fielder allow the batters to complete one more run. So first over which comes to an end of Ajay is considered 7 runs. Means team Good Day Jacks got a good start here. 7 in the first over of the power play. Talking about the weather condition, it's a very bright and sunny afternoon, not really witnessing any breeze in the ground. And the saying that the nature of the ball, which is pretty hard, done of the ball which is used for Dunlop training. In fact, it was very hard in the nature, but we are not getting that much of domination from the batters, because the first match also, the second, only 2 boundaries, only 6 I think, 6 had to combine in this match, and that shows it's not so easy to get the distance here in this fisheries ground here in Ekuru. Bowler starts the second over. Nicely swept that one into the gap for a fine leg region for a couple of runs. Sunil just using the pace of the ball, closing the face of the bat, and then getting that sweep shot very effectively down to fine leg for a couple of runs. With that couple of runs, Kobat moves on to 9 on the board without loss of any wicket. Mushad, the young bowler. This time outside the line of leg stump, but very, very interesting to watch. Sunil wanted to go for the reverse sweep.
So he's changing his position so that he become the left-hander. That's why quite deliberately Mushad bowled that outside the line of leg stump. Good thinking from the bowler's point of view to get the dot ball. Sweep shot. Again the misfield there by the short finally fielder. Because we can see that the circle we are talking about is not a 30-yard circle. It's a very small, it may be the 15-yard. And so that the ball coming very quickly to the fielder. It's a very, very little time to react for the closing fielder, especially in the fine leg and third man. Now some changes in the field position. That same fine leg fielder coming towards a square leg, and one good fielder coming towards a fine leg. The runs are leaking in that position. 11 on the board. And they wanted to go for the reverse sweep, but again the ball has got extra bounce and beaten by the bounce, and ball misses the bat of Sunil, and scoreboard remains on 11 on the board without loss of any wicket. Down the leg side, and going to be a 1+1, a couple of bonus run. First time seeing that Mushad is just misses the line, what he wanted to get, gone far outside the line of leg stump, and wide +1, couple of runs added to total 13 without loss of any wicket in the over number 2 in progress. Musad bowls. Oh, lovely delivery, just wanted to steer the ball. Sunil, maybe the intention to get the couple of runs to the third man division. The ball which is just passing under the bat of the batters. Wicketkeeper behind the stump did the rest, back to bowler. Musad, the final time in this over. Again, very effectively played reverse sweep. And again, there looks like a couple of runs here added to total. And so, very good run for Sunil from his bat in the last delivery of the over. 2 gone after completion of over number 2. Team, good day. Jacks are looking in the right position of getting a big total here. 15. They're going exactly 7.5 runs per over. 15 without loss of any wicket. Nihal, bowler brought into attack to bowl the third over of the innings of the team. Jack, good day Jacks. And the batter Dhanush will go into face. Bowled him, cleaned him up. What a start here from Nihal. He's just absolutely bowled a terrific delivery. It's not Nihal, it's Money brought into attack, and straight away is right on the money, right on the target. Quicker delivery. The batter just wanted to go for the drive, but by going for the drive, it was a huge gap between bat and pad, and that's all happening when you are wanted to go for the expansive drives. It's always they create the gap between bat and pad, and between that gap, the ball coming into the batter and uprooting, of course, the bails from the stumps. So first wicket gone. Dhanush is out for 1. Bowled by the bowling of Money. Money right on the money in that delivery. This match right on target. Money again, right arm over the wicket, balls to new bat. All day once again, Money right on money. Well, those who are given that name, I think is absolutely rightly given. That Money is a name given for him. Second time in this over, is right on target, right on money. 2 wickets back in the pavilion here. Excellent stuff. 2 wickets and 2 deliveries, and the batter is out for Golden Duck. Shushant. The first delivery itself, it's beaten by the pace. The Money is getting some extra pace in his bowling, using a lot of shoulder to get that extra quickness in the delivery. The new batter in with legendary jersey number 10, and you need to justify that number
10. Why is given that number 10? Because his team is required some partnership. The hat-trick will go into try here for the money, and no hat-trick so far. The first match also there was 2 consecutive wickets, but denied that hat-trick. But now money will go into try for the hat-trick. Ooh, that ball just a little bit down the leg stump, outside the line of leg stump. Almost the money is targeting for the Yorker lane delivery, but low full toss outside the line of leg stump, and just missing the opportunity of getting a hat-trick. So Shreyas survives 4th time in this over. Money. Left arm round the wicket. Again, one more lovely delivery indeed. The batter just wanted to go for the try on the onside region. He got an inside edge of the bat as well. One more addition to total addition of that single score, but moves on to 16 on the board. 7 in the first over, 8 in the second. And this is a good over so far for the Swing Kings from Money. Dhanush, Sunil back on strike. Full toss, low full toss again, trying for the Yorker line delivery. Very lucky indeed, Sunil has got a bat onto that in the last moment. Otherwise, again the delivery is targeting the midline off stump of batter. 16 on the board. So far, quiet over is in progress. Only 1 run conceded in 5 deliveries and 2 wickets. The last time in this over. Round the wicket, left arm from the highway end. This time slow delivery, and batsman waiting for the slow delivery. Places in the cow point region, looking for the second mix up. And the batter is absolutely in trouble. And wicket number 3 is back in the pavilions. Total misunderstanding between the wicket. Collusion, misunderstanding between the wicket. And that costing 1 more wicket of team Good Day Jacks. In the last delivery of the over, they lost 1 more wicket. It's 17 for 3. Unfortunately, Shreyas back in the pavilion in the form of run out. Looking for the second, because the ball which is not travelling very quickly, because the ball which is very heavy, even a slight bit of grasses in the ground, so that ball will not going to travel in this area. It's not a quick outfield in the offside region. So that's why the misjudgment which is taken place. Shreyas, Sunil thought it might be a couple of runs because he's played it in the gap. He thought it might be a long way to go for the fielder to get the ball, but ball is absolutely stuck in the grass. And probably it's make a dismissal for Shreyas, the biggest reason for that dismissal. 17 on the board for the loss of 3 wicket. A new batter in with the jersey number 0, Lakshmi Prasad, correction, famously known as DJ Lara, the very good DJ player, experienced campaigner. Ball Dave, cleaned up, what a delivery, absolutely, it was a slower one and fantastically executed there by the bowler. Ram has got a huge wicket of Sunil. What a change of pace, what a good slow delivery from Ram there. The batter Sunil not really able to read the slowness of the delivery early into that drive. And he misses the line and ball hits the stump and 4 wicket back in the pavilion. All in sudden team Good Jacks lost their momentum. What they got in the first 2 overs, 8 in the second, 7 in the first. But what really happened, Money came in and he just dismantling the batting department of their opposition. Now Ram getting some inspiration from his partner. Again getting some good, lovely stop by the fielder, but probably a single there offered for the batter to complete first run for Latish with that single. Score but now moves on to 18 on the board. Ram, one more very slow bowler, but very effectively bowls that line and length. Prasad wanted to go for the switch it. This is the first delivery for the batter, and you are going for unorthodox cricketing stroke, means it's not a good shot selection. Reading the condition of the ground, reading condition of the ball, reading
The nature of the ball is always very important for the batter. Before facing your aggressive stroke, you need to connect one or two deliveries to your middle of the bat. But playing for unorthodox switch, it means you are in trouble. And Ram picked up again 2 wickets here. From 15 for no loss, now 18 for 5. This has been a terrific comeback here by the bowling side. Swing Kings. Swinging in the match from batting side to fielding side. Outside the line of off stump too much, so that umpire will going to call that wide. Suresh Mudabidri. One more addition. Skobana moves on to 19 on the board. Ram. This time lofted nicely in the gap into the deep cow point region. 2 fielders behind the ball. And in fact, one of the fielder will going to get just inside the boundary line. Ample time for the batter to complete that couple of runs. Mushad, the fielder, charging from the deep backward point region to deep cover point, and one fielder Munna from the deep extra cover, and one fielder from short extra cover. Altogether 3 fielders behind the ball, and couple of runs which is completed. Sachin got a valuable couple of runs. Experienced campaigner, 21 on the board for the loss of 5 wickets. Lovely delivery from Ram. This time better one. Just outside the line of off stump. Looks like the width is offered there for the batter Sachin, but ball kept low in the last moment and defeats his bat, and wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Final time in this over. Ram bowls. This time Sachin drives that one down to deep mid wicket region. They wanted to come back for the second. In comes the throw from the deep. And overthrow. 3 fielders. Wicketkeeper missed it. And one more fielder. Again, the one full fielder behind that fielder. Altogether, ball absolutely playing something from this wicketkeeper and the fielders. And couple of runs. And one more better over which is comes in. And 2 wickets in this over for Ram. After completion of 4 overs, team Good Day Jacks are 23 for the loss of 5 wickets. Last over remaining in the innings of team Good Day Jacks. The last opportunity for them to get some acceleration in the run rate. At one stage they are going 7.5 runs per over. Now that 2 overs really brought that run rate down to less than, just over, just less than 6 runs per over. 6 deliveries will take them into good score. So straight away some suggestion which is coming for Rutvik after he bowled the big no ball. Rutvik again with the short run up. You can't call short run up in under-arm cricket. It's definitely a big run up. This time lofted down to long off, and catch has been taken. But it is a free hit delivery, so that no chance for a celebration. But the batter got a single for that. With that single, Skobana moves on to 26 on the board for the loss of 5 wickets. That brings Sachin into strike. Rutvik. Lofted. And opportunity for the same fielder. This time he will going to get the wicket. This is not a free hit delivery. But the batter just wanted to get the distance and fails to do that. The one more big wicket. Sachin back in the pavilion after scoring 4 runs from his bat. Wicket number 6 gone of team Good Day Jacks. It's 26 correction for the loss of 6 wickets. New batter in Pradeep with the jersey number 11. Rutvik continues. This time nicely pedal that one, pedal sweep down to square leg region for a single. With the addition of that single, Skobana moves on to 27 on the board. That brings Latish into strike now. Last 3 balls remaining. Good comeback by young man. After that no ball, he managed to
Ball some very strong line and length. Quicker and faster delivery. The opportunity for the wicket keeper by white call by umpire. And with that extra scope, and moves on to 28 on the board. The problem for the bowler is that the batter Ratish almost shuffled across the line of the delivery, disturbing the concentration of the bowler. So whenever the batters are shuffled across, it's always going to be a difficult job for the bowler where to pitch the ball, where to get the line, and he just bowled outside the line of leg stump. Again, looks like the wicketkeeper this time fumbles, chance of run out in the non-striker's end, and is gone. Latish is the batter, is back in the pavilion. Pradeep, correction, in the non-striker's end, wanted to respond for the extra run, but couldn't manage to judge the run very well. Wicketkeeper, even though he is a little bit fumbled to collect the ball, but ball is not too far away from him, so that run out taken place in the non-striker's end. Wicket number 7 gone of team Good Day Jackson. The new batter in is non-striker Nitesh. 2 balls remaining. Rutvik. Balls. Appeal for leg before wicket, going down the leg side. And leg by call by umpire. Good bowling so far. Very tidy line, excluding 1 no ball and a wide. They managed to put some pressure onto the batter with a great line and good face. 29. The last delivery of their innings is coming up, and Nitesh will go into face. Can he get one big shot here for the team? Good Day Jacks. Full toss and lofted into the mid-wicket region. No one there in the mid-wicket, but long on fielder have to cut it off. And ample time for the batter to complete a couple of runs. Even they're looking for the third, but they won't get a run out taken place. Looks like something kind of confusion in that non-striker's end. Umpire will go into ask for the third umpire. The run out in the non-strikers, and maybe that bills are off and before the run out which has taken place. The wait and see decision which is pending here, so that we cannot say how much target which is set here, because the decision which is pending in the last delivery of the over, they completed 2 runs and looking for the third. And if it is a run out, then 31 is the total score. If it is not a run out, then it was a 32 is the total score, and 33 will be the target. So let's wait and see. We'll take a short break here in community box, and we'll back with the decision as well, the third umpire decision, and time for the break and time for my friend Gopi to take over the microphone. Thank you. Thanks a lot. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹಾಗೂ UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾಬುಗೌಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹಾಗೂ UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So run out happened at the non-striker end and 2 runs added to the total. In fact, the score is 31 and the target is 32 for Swing Kings, and their innings now going to start. 32 the target, 32 रनों का लक्ष्य और दोनों आरंभिक बल्लेबाज स्विंग किंग्स की ओर से संजय और निहाल क्रीज पर मौजूद, जबकि निहाल स्ट्राइकर पर सुशांत गेंदबाजी शुरू करते हुए उनके पर की पहली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा. अंतिम अक्षर में गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन. बल्लेबाज को नहीं मिला. एक बेहतर गेंद के साथ गेंदबाजी की शुरुआत यहां पर कर चुके हैं सुशांत और अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त. फैंटास्टिक डिलीवरी came along the ground and the batsman wanted to play that one, not succeeded and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. दो बेहतर गेंद इस वक्त गेंदबाज सुशांत कर चुके हैं. अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर तैयार. ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाह, गेंद निकल चुकी है थर्ड मैन पर. फील्डर को बीट करने के बाद लेग बाय के रूप में 2 रनों के लिए, और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. 2 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर. मैच नंबर 3 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर खेला जाता है अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट APL सीजन 6 2025 अत्तावरा प्रीमियर लीग सीजन 6 2025 के अंतर्गत, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति की है श्री दुर्गा फ्रेंड्स अत्तावरा. बाबूगुड्डे ने इस बार पैरों पर गेंद टकराई, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े. इट्स ऑफ द बैट इन फैक्ट, और 1 रन का इजाफा हो चुका. 3 रन बिना किसी नुकसान के, 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. जहां तक 32 रनों के स्पर्धात्मक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, एक बेहतर शुरुआत की जरूरत इस वक्त स्विंग किंग्स के बल्लेबाजों को. और गेंदबाज इस बीच सुशांत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर. Again sweep, ball out, just wanted to sweep that one. The ball stuck to his leg stump, bills are disturbed, and that is the wicket number 1 for them. The man Sanjay dismissed, और ऐसा कहना पड़ेगा थोड़े से शफल होते हुए गेंद को इस वक्त स्टंप से एक्सपोज करते हुए साइड पर मोड़ना चाहता, चूंकि एक्स्ट्रा क्विकर गेंद लगभग जमीन के सहारे आई और उनके लेग स्टंप को इस वक्त बिखेर कर ले जाते हुए, और इसी के साथ एक बेहतर गेंद के जरिए गेंदबाज सुशांत विकेट प्राप्त कर चुके. 3 रनों पर पहला विकेट गुजर चुका है. स्विंग किंग्स इट्स 3 for 1. We're just waiting for the number 3 batsman. मणि नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और इस वक्त मणि सामना करेंगे गेंदबाज सुशांत की ओवर की गेंदों का. और सुशांत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज मणि के लिए. मणि के लिए इस वक्त ऑन साइड पर कोई फील्डर 20 गज के दायरे के बाहर तैनात नहीं, कोई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग नहीं, कोई डीप इन विकेट नहीं. लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर मौजूद, लगभग बिल्कुल सीधे. और इस बीच गेंदबाज सुशांत अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, और जहां तक सवाल है शॉर्ट थर्ड मैन पर कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट इस वक्त चल रहे थे. और एक बार फिर से अपने क्रीज पर अपने स्वस्थान पर मौजूद अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार गेंदबाज सुशांत. यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा इस बीच, और दूसरा रन न लेना चाहते हैं, लेकिन बैकअप होता हुआ जल्द से जल्द वहां पर. और दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ संतुष्ट, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस 1 रन के साथ 4 रनों पर.
बेहतरीन ओवर इस वक्त समाप्त हो चुका है सुशांत का और पहले ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद स्विंग किंग्स 32 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 ओवर में एक धीमा शुरुआत यहां पर कर चुका है। 4 रन एक विकेट के नुकसान पर। इट्स 4 for 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर scored by the batsmen of Swing Kings, chasing the victory target of 32 in 5 overs. 28 to get in remaining 24 deliveries. That means in remaining 4 overs and the asking on rate straight away gone up to exactly 7 runs per over. और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए श्रेयस और पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्ड के प्रतिबंध हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और इस बीच श्रेयस गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज मणि के लिए। अभी खेला देखो ठीक सीमा रेखा के पास डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर तैनात किया गया। एक फील्डर डीप मिड विकेट पर मौजूद और लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर है इस वक्त बिल्कुल सीधे तैनात, कोई लॉन्ग ऑफ नहीं इस वक्त और ऑफ साइड पर कोई डीप एक्स्ट्रा कवर नहीं, कोई डीप बैकवर्ड थर्ड मैन मौजूद नहीं बाएं हाथ के बल्लेबाज मणि के लिए। और ओवर की पहली गेंद लेकर श्रेयस दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन पर गेंद जाती है लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। मणि ने गेंद को उछाला था जरूर लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड इज जस्ट फाइंड्स द फील्डर एट वाइडिश लॉन्ग ऑन एरिया फाइनली। और मणि की पारी की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। श्रेयस अपनी पहले गेंद पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं और ऐसा करना पड़ेगा इस विकेट के पतन के साथ स्विंग किंग्स आर नाउ लुकिंग इन ट्रबल। इट्स 4 for 2। बाबूगुड्डा टाइगर्स ऑफ यूएफसी फाइटर्स के बीच अगला मैच खेला जाएगा तो इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट निवेदन करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें, ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए और टॉस प्रक्रिया को भी पूर्ण करें। और न्यू बैट्समैन शिवा इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल एज अ नंबर 4 बैट्समैन फॉर स्विंग किंग्स और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार श्रेयस की गेंदों का। और श्रेयस गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार नए बल्लेबाज शिवा जो कि इस वक्त सामना करते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद इस वक्त अगली गेंद यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को डिफेक्ट किया। गेंद जाते हुए इस वक्त फाइनल लेग के सीमा रेखा से बाहर 2 रनों के लिए और बल्ले का अंदरूनी किनारा इस वक्त टकराया था लेकिन गेंद इस वक्त फाइन निकली थी। शॉर्ट फाइन लेग फील्डर खड़े हुए थे लेकिन उनके बाईं ओर से गेंद निकली इस वक्त डीप फाइन लेग सीमा रेखा को पार कर गई। 2 डिक्लेयर्ड और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर। यह गेंद बेहतर गेंद थी बिल्कुल जमीन के सहारे और गेंद को साइड पर मोड़ना चाहता चूके सचिन गेंदबाजी शुरू करते हुए तीसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ स्विंग किंग्स की पारी में और दोनों बल्लेबाज शिवा और अजय का जिस वक्त आगमन हो चुका है नए बल्लेबाज के रूप में। दोनों बल्लेबाज बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौट चुके हैं और गेंदबाज सचिन अपनी ओर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज शिवा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के गेंदबाज पहली गेंद इस बार गेंद को खेल दिया मिड लॉन्ग ऑन की दिशा में। गेंद जाती हुई फील्डर थोड़ी से पीछे तैनात दूसरा रन लेना चाहते हैं, थोड़ी सी मिस फील्ड और बल्लेबाज 2 रनों के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट फील्डरों पर दबाव डालने का प्रयास और इस गेंद पर 100% यश प्राप्त करते हुए 2 रनों के साथ अपने अपने छोड़ पर वापस लौट चुके हैं बल्लेबाज। 11 ऑन द बोर्ड, स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू डबल फिगर्स। और इस बीच सचिन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार ऑन साइड पर मोड़ा खूबसूरती के साथ इंटेलिजेंटली गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट पर और 2 रन फिर से बल्लेबाज को मिलेंगे। चतुर क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए शिवा पहली पिछले गेंद को इस वक्त खेला था लॉन्ग ऑन पर, फील्डर पीछे ये भागते हुए यहाँ पर गेंद को ऑन साइड पर खिलाड़ियों के सारे उछाल दिए। इस वक्त खाली क्षेत्र एम्प्टी एरिया चुनते हुए और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर प्राप्त करने में सफल। ऐसे क्रिकेट की इस वक्त जरूरत है अगर कमबैक करना है स्विंग किंग्स के बल्लेबाजों को। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद गेंदबाज सचिन इस वक्त तैयार है और पहले 2 गेंदों में 4 रन प्रदान करने के बाद
अब देखना है कि सचिन जो गेंदबाज हैं इस वक्त किस तरह कम बैक करते हैं। फिलहाल शिवा एक बेहतर बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हुए अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। गेंद को छोड़ दिया था कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकलती हुई और मिस जजमेंट इस वक्त बल्लेबाज ने किया और स्कोर रुक चुका है 13 रनों पर। एक बार फिर से सचिन ball aim just gone for drive, not succeeded. Leg stump uprooted, extra quicker from the bowler and the ball passed between his bat and leg and stuck to his middle leg stump. Fantastic delivery from Sachin and he just got rid of the batsman Shiva. Fourth wicket gone. Swing Kings are now really struggling in the middle. 13 for 4. तो मुशाद का आगमन होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में 14 गेंदे बाकी 19 रन चाहिए। 19 रन्स टू गेट इन रिमाइनिंग 14 डिलीवरीज और इस संदिग्ध मोड़ पर मुशाद का आगमन यहाँ पर होता हुआ और वो इस वक्त सामना करेंगे सचिन की गेंदों का। सचिन बाएं हाथ अराउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक का विकेट कीपर इस वक्त जमावट करने के बाद गेंदबाज सचिन लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट मुशाद के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद बेहतर गेंद इस वक्त ऑफ स्टंप से कुछ बाहर की ओर निकलते हुए और गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज सचिन और जहां तक रनों का सवाल है तो रन से इस वक्त रह चुके 13 रनों पर और इस ओवर में अंतिम बार सचिन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। बेहतरीन ओवर सचिन का समाप्त हो चुका है। हालांकि पहले 2 गेंदों में 4 रन 2 कपल्स के रूप में जरूर प्रदान किए थे, लेकिन उसके बाद 4 लगातार डॉट गेंदे वो फेंक चुके हैं और शिवा का भी विकेट प्राप्त करते हुए बेहतरीन गेंद पर बाउल्ड आउट के रूप में 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 13 रन बच चुके 4 विकेट के नुकसान पर। 19 रन चाहिए 12 गेंदे और ऐसा कहना पड़ेगा रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त ऊपर जा पहुंचा है, ठीक 9.50 रन पर ओवर, एक्जैक्टली 9.5 रन पर ओवर द रिक्वायर्ड रन रेट फॉर देम एट दिस सिचुएशन। 19 विकेट फ्रॉम 12 डिलीवरीज एंड स्टिल दे गॉट 6 विकेट्स केप्ट इंटैक्ट। तो देखते हैं यहाँ पर कौन से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हैं। निखिल गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त जय, जो कि इस वक्त सामना करते हुए निखिल की गेंदों का। 12 गेंदों में 19 रन। इस ओवर में कम से कम 10 से 12 रन बटोरने होंगे स्विंग किंग्स के बल्लेबाजों को यहाँ पर कम बैक करने के लिए। और इस बीच निखिल टॉप एज और विकेट कीपर नहीं पहुंच पाए अंतिम क्षण में। खाली क्षेत्र पर टिपकाते हुए दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा बेहतर, फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट। जैसे ही वहां पर धीमापन देखा फील्डर का, बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े डेंजर एंड पर और जब तक थ्रो पहुंचा इस वक्त स्क्वायर लेग फील्डर का सीधे फील्डर के हाथों में विकेट की फील्डर ने विकेट झटकाया, तब तक बल्लेबाज दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके थे। तो चतुर सोच, क्लेवर थिंकिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इस वक्त बल्लेबाज ने दिखाई और 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। 15 ऑन द बोर्ड। नाउ 17 टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 11 बॉल्स। अभी भी स्विंग किंग्स के बल्लेबाज यहाँ पर फाइट बैक करते हुए और इस बीच गेंदबाज निखिल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। अंपायर विकेट को सही करते हुए खेले, जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। दोपहर का वक्त लगभग 12:55 यहाँ पर बच चुके। ऑलरेडी 12:55 एट आफ्टरनून और धूप की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ते हुए यह गेंद इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा शॉट फ्रंट लेग पर रन आउट का खतरा। ओ निशाना चूक चुका है इस वक्त। निशाना स्टंप्स पर सही टकरा था तो निश्चित रूप से यहाँ पर बल्लेबाज के लिए खतरा पैदा हो सकता था, लेकिन निशाना चूका और इस बीच 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर और 10 गेंदें अब बाकी है। 16 रन चाहिए। 16 रन टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 10 बॉल्स। बल्लेबाज मुशाद इस वक्त सामना करते हुए निखिल की गेंदों का।
इस बार that was a difficult chance and he's got a hand on to that at the last ball. In fact, they come back for the second and this time I think he made it. He made it. Fantastic running between the wicket. This is an outstanding running between the wicket. जैसे ही वहां पर मुश्किल सा मौका फील्डर ने गंवाया, शॉर्ट मिड विकेट पर बल्लेबाजों ने दूसरा रन यहाँ पर दौड़ना शुरू किया और जब तक गेंद को बैकअप करके थ्रो किया जाता नॉट स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था दो रन प्राप्त करने का और बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर 18 for 4 now 14 runs to get from 9 balls. Still that match is now alive और गेंदबाज निखिल देखना है कि अगली गेंद पर किस तरह कम बैक करते हैं गेंदबाजी में। तो इस वक्त फील्डर सब मैदान पर छाते हुए और गेंदबाज निखिल इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए मुशाद के लिए अगली गेंद। यह गेंद बेहतर गेंद थी एक्स्ट्रा क्विक विकेट कीपर ने विकेट झटकाया और इसी के साथ विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद को खेलने में चूके थे, क्रीज से अपना बैकफुट उन्होंने लिफ्ट किया, इसे देखते हुए विकेट कीपर ने तेजी के साथ यहां पर विकेट झटका दी है और इस बेहतर स्टंप की बदौलत विकेट यहां पर गिर चुका है। मुशाद की पारी समाप्त, 5th विकेट डाउन, 5वां विकेट गिर चुका है। इट्स 18 for 5। तो इस वक्त नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, गेंदें बाकी है इस वक्त 8। अरविंद नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद और वो सामना करेंगे इस वक्त निखिल की गेंदों का। 8 गेंदें बाकी, 14 रन चाहिए। 14 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 8 डिलीवरीज निखिल अरविंद के लिए। Left it. This time I think no, the fielder getting underneath it. He won't get that one. In fact, the ball fell between the 3 fielders. और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। गेंद को उछाला था काफी ऊंचा, लेकिन गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए तीनों खिलाड़ियों के बीच और 2 रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुका है। 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर 7 गेंदें बाकी है, 12 रन चाहिए। 12 रन टू गेट फ्रॉम 7 बॉल्स नाउ। और निसंदेह इस वक्त अंतिम गेंद बाकी है और देखना है कि इस अंतिम गेंद पर बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। फिलहाल इस ओवर में अंतिम बार निखिल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, लेकिन सही गेंद घोषित। एब्सोल्युटली मिस जजमेंट मेड बाय द बैट्समैन एट द लास्ट मोमेंट। और इसी के साथ डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति, 20 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर का खेल बाकी और अंतिम ओवर यानी बचे हुए 6 गेंदों में चाहिए 12 रन। 12 to get from remaining last 6 deliveries, that means from the last over। और देखते हैं यहाँ पर स्विंग किंग्स के बल्लेबाज इस अंतिम ओवर में बचे हुए 6 गेंदों पे 12 रन बना पाते हैं या नहीं। 6 विकेटें सुरक्षित इस वक्त उनके लिए। तख्ता कुछ हद तक गुड्डे जैक्स का भारी यहाँ पर लगता हुआ, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर इस अंतिम ओवर में स्विंग किंग्स के बल्लेबाजों को। धनुष गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए मैच निर्धारित तौर पर यहां पर शुरू होता हुआ। स्विंग किंग्स की पारी में 6 balls 12 runs needed. Still I must say it could be anybody's game at the situation। और पहले गेंद लेकर धनुष तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट। जस्ट कॉल फॉर अ बिग वन, मिसेस। अपील इस वक्त, लेकिन किसके लिए है पता नहीं है। तो इस वक्त अपील कर रहे हैं, अगर कॉट भी हैंड है तो मेन अंपायर को अपील करना चाहिए यहाँ पर। और इस बीच अब मेन अंपायर अपील जो कि किया गया है, लेकिन अंपायर श्रीरज यहाँ पर कहते हुए क्या हुआ है असल में, मुझे कुछ बताइए, मुझे कुछ भी यहाँ पर पता नहीं लगा कि असल में स्ट्राइक रेट पर क्या हुआ था। तो पहले विकेट कीपर ने कॉट हैंड के लिए अपील की थी स्क्वायर लेग अंपायर से, बाद में जाना कि उन्हें मेन अंपायर से अपील करना चाहता। अब अपील की तो श्रीरज ने कहा मुझे कुछ भी पता नहीं असल में वहाँ पर क्या हुआ था स्ट्राइक रेट पर। और गेंदबाज यह गेंद उछालना चाह, नॉट करके दैट वन प्रॉपर्ली, गेंद जाती हुई डीप बैक स्क्वायर लेग और डीप विकेट के दरमियान दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। थ्रो पहुंचे इस वक्त, धीमा थ्रो, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। 10 रन चाहिए, 4 गेंदें बाकी। 10 to get from 4 deliveries। और धनुष इस वक्त अपनी और की अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करते हुए जय इस वक्त धनुष की गेंदों का।
ये गेंद उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड। इस बार रन आउट हो चुका है, रन आउट हो चुका है इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर। और जय, जहां तक सवाल है, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, रन लेने की कुछ दिलचस्पी उन्होंने नहीं दिखाई और आखिरकार नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज आउट होने के बाद रन आउट के रूप में पेविलियन वापस लौटते हैं। अब things getting much tighter now for the batsmen of Kings. Now 10 to get from 3 deliveries. ऋत्विक नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद। फिलहाल जय इस वक्त सामना करने के लिए तैयार धनुष की गेंदों का, और धनुष इस वक्त फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। एंड दिस टाइम ही मेड अ ब्रिलियंट स्टंप बिहाइंड द स्टंप्स, और कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे नहीं गया, उछालना चाहा इस वक्त, लेकिन चूके और विकेट कीपर के हाथों में जैसे ही गेंद पहुंचे ने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इस वक्त विकेट को उखाड़ने में सफल, बिल्स को उड़ाने में सफल, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। विकेट नंबर 7 डाउन। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹಾಗೂ UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹಾಗೂ UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 2 balls 10 runs, the last chance in front of the batsmen of Swing Kings. 6 and a 4 required in the last 2 deliveries. और ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी ही यहाँ पर अब इन 2 गेंदों में स्विंग किंग्स को विजय दिला सकती है। और धनुष इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए the second last ball of the match is not coming up. इस बार उछाला गेंद को, लेकिन not quite mid, लेकिन just a single he got. 23 on the board. अब 9 रन चाहिए अंतिम गेंद पर। अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड इस अंतिम गेंद पर ना फेंकते तो यहाँ पर गुड्डे जैक्स की विजय निश्चित है, लेकिन ना क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक ना अंतिम गेंद फेंकी जाए। क्रिकेट है जो कि अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, और देखते हैं अंतिम गेंद पर क्या होता है। इस बार ड्राइव कर दिया मिड विकेट पर, जस्ट अ सिंगल they got. In fact, they're looking for the second and they come back for the second run, but that is not enough for them, and they're looking for the third. This time he won't survive. One more wicket fallen, so that's it. 7 runs, thrilling victory for Good Day Jacks against Swing Kings, and with that 7 runs victory, Swing Kings back the complete points. So match number 3 has been came to an end just short while ago, and the next match is going to play between Babugudda Tigers versus KFC Fighters, and in this match KFC Fighters, the captain of KFC Fighters is now on the toes. UFC Fighters in fact won the toss and what the decision the captain will take, just we have to wait and see. The match number 4 is now going to start off this prestigious cricket tournament, APL Attavara Premier League Season 6 2025, which is proudly presented by Sri Durga Friends Attavara Babugudde. And the 4th match is now going to start with an just shot pile. और तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब मैच नंबर 4 यहाँ पर शुरू होगा एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। तो अब वक्त है एक ब्रेक करना हो। इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
I request him to please collect your man of the match award. I request Gopi, please present this man of the match award to Shreyas. The man of the match award goes to Shreyas. So here you go in our main stage. We are going to present the Man of the Match award, and wonderful Indian commentator Gopi will going to present Man of the Match award to Shreyas for his match-winning bowling performance. Congratulations, Shreyas, and thank you very much, Gopi. And back into the match number 4 now, and team of Babagudda Tigers will going to take UFC fighters. This is a match between one loser versus winner. The first ball nicely turns that one into the fine leg region for a couple of runs. Good start here for the batter Akhilesh. He got his first run in the form of a couple of runs from the bat. So Dion is a bowler brought into attack from the highway end, and starts with the delivery which is just going down the leg side, and batsman taking a full advantage of that delivery to pick a couple of runs. The team of Babagudda Tigers, they won their first match quite comprehensively, and they are in the second match against the team UFC Fighters. Winning the toss, captain of UFC Fighters, they elected to ball first. Here comes second ball. That was a better line, good line to ball. Beautiful outgoing delivery from the bowler Dion. Well gathered by the wicketkeeper behind the stump, and no chance of any run. It's 2 without loss of any wicket in the over number. The first is in progress. Dion with a short run up past umpire Suresh Mudabidri. This time again they're going up. They're going up and celebrated. Why not? It is a big nick. Held the nick and just wanted to go for the cut shot, and ball is absolutely kissing his edge of the bat. Wicketkeeper behind the stump, making no mistake at all. Sharp catch taken behind the wicket and behind the stump in fact, and wicket number first is back in the pavilion. It's 2 for 1 in the over number. The first is in progress. So Akhilesh a little bit disappointed with that dismissal, that the lovely outswing delivery, the titillating delivery which is outside the line of off stump. Batter so excited to see that line which is outside the line of off stump, tried to cut the ball, but the ball got a leading edge, outside edge of the bat, and the wicketkeeper behind the stump taken a sharp catch behind the stump. Wilson is a new batter in. Again played it down to cow point region, misfield there by the fielder, and slight a bit of urgency shown there by the fielder. Just taken his eye onto the ball and pays the penalty for that. Couple of runs. What could be a certain chance of run out? Because of pretty ordinary attempt by the fielder, they completed a couple of runs. With that couple of runs, Wilson is off the mark, and total score now moves on to 4 on the board for the loss of 1 wicket. Wilson, Dion to Wilson. Dion to Wilson, wanted to go for expensive drive, picks up, and both the batters in one side. The opportunity of run out is missed out again. Everything is going wrong here for UFC Fighters. Second consecutive chance missed out by the fielding side. Leg by call by umpire, and the golden opportunity again missed out. Very lucky indeed, Wilson. A couple of times he survived from that run out. It's not a good commitment from the fielders of same UFC Fighters. Right arm over the wicket balls. Balled him, cleaned him up. Wrong shot. No movement of the feet, and bat which is not really coming to the line of the delivery where he was standing. Tried to get the ball on the onside region. Pays the penalty for that. Ball hitting the off stump of the batter. The wicket number
Two gone, and the team again looking in trouble. Babagudda Tigers, two Tigers are back in the pavilion. It's 5 on the board for the loss of 2 wickets. Danush now came into attack to bowl the second over of after that power play. And the first over of the power play, definitely the bowlers dominated. UFC fighters picking up 2 wickets for 5 runs. Nothing wrong with the score, but something wrong with that the partnership what we are talking about. 2 wickets are back in the pavilion. And young boy Akshay. Your name is Akshay? Akshay. It's a very interesting outside the line of leg stump. Daughter of Akshay. Enjoy the game of cricket along with his father. Of course, cricket is not only for the men. Nowadays, women are also doing a fantastic job in cricket after lifting Women's World Cup. Indian women's. Outside the line of leg stump, too far away, so that umpire called it wide. What that extra score, but now moves on to 6 on the board for the loss of 2 wickets. Danush. Danush again bowling right arm over the wicket balls. Again, misfield there by the fielder. The fielding is not really up to the mark. UFC fighters are leaking some runs with some ordinary attempt by the fielders. Again, it's not acceptable. They were lost your first match, have to come back very strongly in the second match. And a couple of runs taken to score into 8 on the board. Danush. Ball second, lovely delivery, flighted outside the line, off stump, keeping low at the last moment. Batter wanted to go for the drive. Wilson misses the line complete, and the wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. Danush taking his own time to deliver the ball, concentrating over the line. Again, lovely delivery. Looks like the ball has got something in the here. Maybe that ball is deflected from the bat. The wicketkeeper behind the stump, but fails to collect that catch behind the wicket, behind the stump. And wicketkeeper Avinash standing well up to the stump, and bowler Danush to continue. Far away outside the line of off-stump, full toss delivery, trying for some experiment here from bowler. Pays the penalty. Need to re-ball that. 9 on the board for the loss of 2 wickets. Team of Babagudda Tigers. Drives that one nicely into the deep extra cover region. Not more than a single. Nice looking drive, confident looking drive from Wilson. Takes the total score into double figure. It's very hard fought double figure 10. That brings Rakshit into strike. Rakshit facing his first delivery. Came as a number 4 batter for the side. And Danush to continue.
Again, try to work set on the onside region using his wrist, but misses the line completely. Over number 2 comes in, and good over. Two gone, it's 10 on the board, and 5 runs per over the run rate progressing for the team Babagudde Tigers. And Raghu brought into attack, one more big name in underarm cricket, considered as one of the big all-rounder for the side, one who represent for team KCCR Kadri for a long time, keeping the fielder in the deep long on and one fielder at the deep long off, wideish. Deep backward point and deep square leg. For the reverse sweep, there is a deep backward point, one at deep square leg. And there is no mid wicket, in fact, and a very interesting field set. Raghu to Wilson. With a short run up, one who got a capability of moving the ball either way, incoming and outgoing. What we are talking about! This might be the beautiful leg cutter there from Raghu. Is knowing for that is leg cutters. The batter just misreading the turn of the ball, tried to work set in onside region, but that ball is absolutely did the trick of getting the defense of the batter Wilson, and totally misjudgment. Wicket number 3 gone of team of Babagudde Fighters and Tigers, correction, and scoreboard is 10 for 3. The new batter with the jersey number of 1 short of 50. 49. Sandeep walked towards the middle. So next match, Good Day Bulls takes Swing Kings. So that I request all the players of both the teams to complete your signatures as soon as possible. Raghu to Sandeep. First delivery right on the money. Was beautiful leg cutter to receive the wicket. Full toss delivery. The batter, the new batter, fresh leg. Not really expecting the full toss from Raghu. Not ready for that full toss to pull the ball. And he missed it completely. No run scored. Third time in this over. Raghu delivers. Again, nicely ball. They're going for the run. Again, the fielding, what we are talking about for team EFC Fighters are not giving that much of fight in that fielding department. And again, the one more opportunity of run out is created, and the mid-off fielder fumbles. 11 on the board for the loss of 3 wicket. In the over number 3 is in progress. Raghu, 4th time in this over. To Rakshit. Oh, that was a beauty. Absolutely perfect one. Again, that targeting that mid-line leg stump. Last moment, the ball is deflected from his leg. Rakshit. He's the man of the match. Oh, no. He's the man of the match of the previous match. Again, lovely delivery off the back foot. Last moment, he got a bat onto that. They wanted to come back for the second. Again, my goodness. Again, the fielding, what we are talking about, is a unique part of cricket. You need to be very good in a field. Without having a very good fielding unit, you cannot win the match. Again, they're leaking the runs here. 13 on the board for the loss of 3 wickets. The score. Raghu to continue. Final time. Again, flicks set off his legs down to final leg region. One more addition. Rakshit will go into retain the strike. 4 overs, 3 overs completed after completion of over number 3. It's 14 on the board for the loss of 3 wickets. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಊಟ ಆಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ವೇಸ್ಟೇಜನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಸೆಯಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗಮನಿಸಿ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ಕೂಡ ವೇಸ್ಟೇಜನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬಾರ್ದು. ಮೈದಾನದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Santosh brought into attack to bowl the fourth over of the innings of team Tigers, Babagudda Tigers. Both the batters are slowly adapting to the condition and try to get some runs and partnership going. Very important. Santosh will go into ball right arm over the wicket to the right hand batter Rakshit. Rakshit taking his own time to deliver the ball right up over the wicket. Balls outside the line of off stump. No ball called by umpire, and umpire Roland Pinto taken a few seconds to judge whether it is good enough to call the no ball, and saying that yes, it is good enough. The ball is going away from the line of the pitch, so it called no ball. Free hit delivery for the batter. It's 15 on the board. Again wanted to go for switch it, wide call by umpire, and free hit continues here for the batter. Now fielding team taken a review here, and there's a fielding team review for that wide decision. Umpire called it wide, and Raghu behind the stump saying that it's a fair delivery. We want to take the review for that decision and wait and see what could be the decision from the third umpire, Sriraj. It's a wide and from the third umpire, so one more run added to total. 16 on the board, and it's not a good review from the fielding team. They lost their review, important review. The free hit delivery continues because of the wide ball. The free hit continues for the batter. Santosh take his own time, right arm over the wicket. Oh, what a shot! Magnificently struck by Rakshit. Just getting the position so quickly and getting that line and length absolutely perfect. And perfect execution of switch it. Couple of runs added to total in the form of declared area. 18 for the loss of 3 wicket. Santosh. Ooh, lovely delivery, wicket keeper Avinash Pamble's chance of run out in the non-strikers, and again they missed it. By call by umpire, frustration for the bowler Avinash, wicket keeper, and fails to gather the ball. They needed some support behind the stump sometime for the bowlers. 19, which is the total score. This time I wanted to go for the drive. Again misses the line completely. We have Bashir of Reliance Cricketers Jaipur, one of the top class bowler for Reliance Cricketers Jaipur in the 90s and 2000 and 2010 when Reliance are dominating. This man absolutely did a great job in the bowling department. Even useful batter down in the order on the many matches for the Reliance Cricketers Jaipur. Welcoming him on behalf of organizers and all cricket lovers for Bashir. Santosh, 2 back-to-back dot balls. Sandeep was struggling to get the line and length proper. Again, this time he got the connection, but not a good placement, but good fielding. First time I'm watching the fielder in the deep long off, absolutely given everything for that field, and denying extra run from the batter. Just a single. 20
in the over number 4 is in progress. Final time in this over. Rakshit is batting on 5. Will going to face the next delivery. Again wanted to go for the expansive drive. Chance of run out. Again have a look at the throw. It was absolutely high throw. My goodness. So many chances missed out by that fielding team. UFC Fighters. One more over completed. 4 gone. It's 21 for the loss of a 3 wicket. You're watching Attavara Premier League 2025 Season 6. So here is the fight is on here from Babagunda Tigers to get some big total here, but it's so far there looks like the 4 overs which belongs to UFC Fighters. All the bowlers did a great job, even though they missed so many opportunities of run out, and big contribution from the extras. So far 7 extras in this 21 runs, and last over from Ashwit will going to start from the road and highway end. The first ball outside the line of off stamp but gone far away. So that umpire called it wide. Extra runs, what we are talking about, very, very important. It will going to take a major role in the result of matches. The matches, what we are talking about. Again, attempt there from Raghu is not good enough. The couple of runs looks like will going to collect. Leg by call by umpire. Frustration for the bowler and for the captain of UFC Fighters. 24 on the board. Each and every run going to be very important in this last over. And a couple of leg by runs. Rakshit will going to take the strike because it was a declared area. Advit balls far away outside the line, and no ball called by umpire. Is absolutely struggling to get the line and then proper. 25 comes off at last for the team Babagunda Tigers. It's not a easy condition, I will tell you. In this particular day number 1, we are not seeing any big shots. Small runs which is scored so far. So that each and every run going to be a crucial. Advait need to come back very strongly. Again wanted to go for the expensive switch it. One of the favorite of Rakshit. Leg by call by umpire. One more extra, what we are talking about, extras absolutely crossed the double figure now. 26 on the board. Last 4 deliveries left in their innings. Again wanted to go for the drive, wide call by umpire. Extras will going to take the total score into 27. 13 extras so far out of 27. Again, this time wicketkeeper fumbles. Extra bounce, but no excuse. Again, the opportunity run out is missed out. The ball which is missed out by the bowler on his non-striker's end. Follow through. 28 on the board. 3 ball left. This time Avinash managed to collect the ball, not properly, but ball is not too far away from him. Appeal for run out there. Umpire says not out, rightly so. 2 balls remaining. 28 on the board. Rakshit looking for 1 or 2 big shots in this last over, but so far he didn't got any success. The run switches came in this over and almost in the form of extra. Dancing down the track, using his feet, played it down to long off, but not more than a single. So 29, last delivery of their innings is coming up, and Sandeep will go into face. Sandeep will go into face the last delivery.
exceeds the time limit, so that one fielder came inside the ring, as just like the penalty for the fielding team exceeding the time limit. See, here comes the last delivery. Oh, good stop there from Raghu, and chance of run out. Umpire will go into be upstairs now. They're going upstairs, saying that it's all up to the third umpire to give the decision. Now wait and see. The excellent piece of fielding there by Raghu, and diving stop, and just releasing the ball quickly to the hands of wicketkeeper, and wait and see whether Rakshit is safe or not. We'll take a little bit time for the decision, and even we are taking some time for the target, because if the batter is out, then 30 will be the target. If the batter is safe, then 31 will be the target. So wait and see. We'll take a short break in our commentary box. So the same was happened in the previous innings also. In the last ball, it was third umpire decision. And now Gopi, for you to take over the microphone. Yes, sir. The time for me to have some lunch break. Thank you. Out is the call, and the target is exactly 30, the target for UFC fighters, set by Babagudda Tigers. So 30 runs they have to score for victory, and they stipulated to 5 overs, and as far as the required run rate is concerned, exactly 6 runs per over they have to score for victory with help of 10 wickets. The present equation shows for them, and their innings now going to start within just a short while. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. तो इस तरह से धन्यवाद सतीश. तो इस तरह से पारी की शुरुआत होती हुई यहाँ पर यूएफसी फाइटर्स के लिए, और दोनों आरंभिक बल्लेबाज रघु और अतुल इस वक्त क्रीज पर मौजूद, जबकि गेंदबाजी शुरू करते हुए विल्सन पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. विल्सन गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज रघु पहली गेंद को उछालना चाहा, पैर पर टकराई, जोरदार अपील इस वक्त, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है यहाँ पर 0 पर. निश्चित रूप से एक बेहतर शुरुआत की जरूरत है यूएफसी फाइटर्स के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें 30 रनों के स्पर्धात्मक लक्ष्य तक पहुंचना है जो बाबूगुड्डा टाइगर्स ने इस वक्त तय किया है. और विल्सन इस बार गेंद को उछाला, मिड विकेट पर कोई फील्डर वहां पर नहीं, और जब तक डीप मिड विकेट से फील्डर दौड़ कर बल्लेबाज दूसरा लेना चाहते हैं, रन के लिए दौड़ पड़े, उनका खतरा, और इस बार बल्लेबाज जरूर खतरे में इस वक्त गिर सकते हैं, और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त जोखिम भरा रन था, दूसरा रन. लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब विकेटें उखाड़े गए थे थ्रो को रिसीव करने के बाद गेंदबाज द्वारा, तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं. काफी नजदीकी मामला यहाँ पर
और देखना है कि बल्लेबाज अतुल इस गेंद पर बच पाते हैं या नहीं। तो तृतीय अंपायर श्रीरज कुंपला जो है इसका परिशीलन करते हुए, और इस बार आउट इज द कॉल एंड ही हैज टू गो। Atul Daman dismissed without facing any delivery. He is backing to pavilion disastrously in the first wicket lost for UFC fighters. It's 1 for 1 in the first over. तो मैच नंबर 3 का द्वितीयार्ध यहाँ पर शुरू हो चुका है इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट अत्तावरा प्रीमियर लीग इस APL सीजन 6 2025 के अंतर्गत, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया श्री दुर्गा फ्रेंड्स अत्तावरा बाबूगुड्डे ने। और निश्चित रूप इस सुंदर से विशाल से फिशरीज मैदान यकूर के फिशरीज मैदान पर, और ऐसा कहना पड़ेगा श्रृंखला टूर्नामेंट एक शानदार प्रगति यहाँ पर करती हुई। ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗುಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो गेंदबाज यह गेंद उछाला इस वक्त लंगोन पर, फील्डर जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे और गेंद इस वक्त लंगोन सीमा रेखा के अंदर जब तक फील्ड कर ली जाए 2 रनों का इजाफा हो चुका है। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त रघु के बल्ले से लगता हुआ, और इस मैदान का डायमेंशन ऐसा है कि लंगोन और लंगोफ का जो क्षेत्र है काफी लंबा है और यहाँ पर स्ट्रोक्स लगाया था करारा, लेकिन गेंद सीमा रेखा को पार करने में असफल रही और 2 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। अगली गेंद, यह गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए कट करना चाहा, बैकफुट पर जाने के बाद चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिला, 3 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज विल्सन इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। राघु जो कि सामना करते हुए, ball out, just called for a big one this time. He just lost his middle leg stump. Fantastic delivery from Wilson. बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ जमीन के सहारे गेंद को फेंके थे। इस वक्त गेंद पर आक्रामक प्रहार करना चाहता, चूंकि गेंद सीधे स्टंप्सों पर टकराई और इसी के साथ राघु की पारी पर पर्दा गिर चुका। दूसरा विकेट खो चुका 3 रनों के ऊपर। UFC fighters are now looking in trouble. It's 3 for 2 in the over number first in progress. New batsman Azim is now comes out to the middle in this critical circumstances. और वो इस वक्त सामना करेंगे विल्सन की गेंदों का। इस ओवर में अंतिम बार विल्सन गेंदबाजी यहाँ पर करने के लिए तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर्स उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर, और विल्सन ओवर की अंतिम गेंद। Oh, gets some extra bounce pass just wide of the off stop at the last moment. Lucky escape for the batsman. Fantastic over came from Wilson, who conceded just 3 runs in the first over. And after completion of first over, UFC fighters chasing the victory target of 30 in 5 overs set by Babagudda Tigers. They made a shackling start. In fact, 3 on the board. Just 3 runs they managed to score after completion of first over for losing 2 wickets. And now 27 to get in remaining 24 deliveries, and the required run rate is now straight away gone up to exactly 6.75 runs per over. और 24 गेंदों में 27 रनों की दरकार। और इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाज, और सामना करने के लिए तैयार इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज
अविनाश जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। दोपहर का वक्त लगभग 1:42 यहाँ पर बच चुके हैं। सूरज ठीक आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू चुका है, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ, और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती हुई। लगभग 30 से 31 डिग्री सेल्सियस मंगलूर का तापमान यहाँ पर दाखिल हो चुका है आज का तापमान, और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए। और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट APL सीजन 6 2025 एक शानदार प्रगति करते हुए, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया श्री दुर्गा फ्रेंड्स अत्तावरा बाबूगुड्डे ने। पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका, फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। और सोनल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई बेहतर गेंद थी। इस वक्त स्टार्ट्स ऑफ विद द क्विक डिलीवरी फ्रॉम सोनल, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। दाहिने हाथ अराउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए सोनल, बल्लेबाज बाएं हाथ के अविनाश के लिए यह गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर, इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी, दिशाहीन गेंद, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 4 रनों पर, 4 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और सोनल दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, शॉट फाइन लेग पर गेंद पहुंची, 1 रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले के थ्रो पहुंचे बल्लेबाज बाई के रूप में 1 रन तेजी के साथ चुरा चुके थे। हालांकि स्ट्राइक रेट के बल्लेबाज कुछ देरी से दौड़े थे जरूर, लेकिन 1 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल, पूर्ण करने में सफल, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर, 5 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट। Really a testing time continuing here for the batsmen of UFC fighters in this situation. They lost both openers and the score is now just 5 on the board. और सोनल ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए कट करना चाहा इस वक्त, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला, और स्कोर रुक चुका है 5 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। सोनल बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट अजीम के लिए अगली गेंद, यह गेंद इस बार गेंद को खेल दिया लगौन पर। गेंद हालांकि थोड़ी सी उछाल लेती हुई अंतिम क्षण में, कुछ देर तक हवा में जरूर थी, लेकिन खाली क्षेत्र पर निकलती हुई गेंदबाज और सील डाउन के दरमियान लगौन पर, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोर बदल चुके हैं, 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और इस बीच सोनल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त अविनाश के लिए, इस बार ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, बेहतर गेंद थी, एक्स्ट्रा किकर टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई, चूंकि पूरी तरह गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 6 रन। रनों के लिए संघर्ष यहाँ पर करते हुए बल्लेबाज UFC फाइटर्स के, और कुल मिलाकर 1 गेंद अभी भी बाकी उनकी पारी में, और सोनल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज अविनाश, यह गेंद पुल किया इस वक्त इनटू द स्क्वायर एरिया, और गेंद इस वक्त सिर्फ 2 रन के लिए सीमा रेखा को पार कर चुकी है। ऐसा कहना पड़ेगा ही जस्ट हिट दैट वन 2 स्क्वायर। अगर थोड़ा सा स्ट्राइटर गेंद को उछालते तो शायद छक्का उनके पक्ष में आ सकता था, लेकिन यहाँ पर काफी स्क्वायर गेंद को उछाला, सिर्फ 2 मात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में। और बल्लेबाज अविनाश काफी देर से ऐसे स्ट्रोक्स की तलाश में थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार सफलता उनके पक्ष में आई जरूर, लेकिन गेंद को उछालने में सफल 2 स्क्वायर। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर, 2 overs completed, 8 on the board, 2 wickets lost. That means now 22 runs more they have to score for victory in remaining 18 deliveries. That means in remaining 3 overs, and the required run rate is now straight away gone up to exactly 7.66 runs per over. और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो देखते हैं कौन सा गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हैं। रक्षित गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और इस वक्त वो गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज आजीम के लिए। ड्राइव कर दिया इस वक्त आजीम ने खूबसूरती के साथ, एब्सोल्युटली कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक, लगौन पर गेंद पहुंचे, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर, 9 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर इन फैक्ट। और बाएं हाथ के बल्लेबाज अविनाश जो कि इस वक्त सामना करते हुए, निश्चित रूप से हर गेंद पर रन बनाना इस वक्त जरूरी बन चुका है UFC फाइटर्स के बल्लेबाजों को। इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, उनकी टोपी उड़कर गिरी जरूर, लेकिन स्ट्रोक्स खेलने में
असफल, गेंद उनके पैरों पर टकराई और विकेट कीपर ने तेजी के साथ गेंद पर झपकते हुए यहाँ पर गेंद को उन्होंने कलेक्ट कर लिया, फील्ड कर लिया। रन से बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 9 रनों पर, 9 ऑन द बोर्ड। इस बार गेंद शॉट फाइन लेग पर, ओह दिस कुड बी इन ट्रबल इफ द थ्रो वाज डायरेक्टली टू द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट। लेकिन भाग्य इस वक्त बल्लेबाज का साथ देता हुआ, थ्रो हालांकि ऑफ स्टंप से कुछ दूरी पर निकलते हुए और बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बाल बसते हुए और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर, 9 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। रक्षित अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। काफी देर से ऐसी स्ट्रोक की कोशिश करते हुए इस वक्त बल्लेबाज अविनाश, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई। केवल एक मात्र स्ट्रोक ऑन साइड पर कनेक्ट किया था, लेकिन वो स्ट्रोक भी 2 स्क्वायर खेली थी। और जहां तक सवाल है अविनाश का, इस वक्त 7 गेंदों में 2 रन बना चुके हैं। मिसेस एंड इट्स क्रॉस ओवर द फेंस फॉर अ कपल, लेग बाय का इशारा। सो 2 रन्स एडेड टू द टोटल, स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 11 रन्स ऑन द बोर्ड। और जहां तक अविनाश का सवाल है, इस वक्त एक डॉट गेंद और खेल चुके हैं, 8 गेंदों में 2 रन सिर्फ बना चुके हैं अब तक। और गेंदबाज रक्षित एक बार फिर से तैयार, इस ओवर में अंतिम बार फुल टॉस, लेकिन इस बार गेंद को उछाल कर खेलने में सफल, रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन इस बीच पूर्ण करने में सफल। इट्स ऑफ द बैट, 1 run added, 12 on the board, and over number 3 has been came to an end. So after 3 overs, still the batsmen of UFC fighters still searching for the right track. It's 12 for 2 after completion of 3 with 2 to go and 18 to get. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. तो 2 ओवर 18 रन चाहिए, 12 बॉल्स लेफ्ट, 18 रन रिक्वायर्ड। और गेंदबाज मुन्ना इस वक्त शुरू करते हुए और अविनाश जो कि सामना करने के लिए तैयार, 9 गेंदों का सामना कर चुके, सिर्फ 3 रन अब तक बनाने में सफल अविनाश। पहली गेंद इस बार एक बार फिर से चूके, बार बार ऑन साइड पर गेंद को पुल करने का प्रयास करते हुए, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, शॉट फाइन लेग फील्डर, चूंकि वाइड का इशारा। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल। ऐसे रन्स की इस वक्त जरूरत है यहाँ पर UFC फाइटर्स के खिलाड़ियों को, अगर उन्हें मंजिल की ओर अग्रसर होना है तो 2 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में उनके खाते में जुड़ता हुआ 14 रन्स बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 4था ओवर प्रारंभ हो चुका, 11 गेंदें बाकी, 16 रन चाहिए, 16 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 11 डिलीवरीज। और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, लॉस्ट दिस टाइम, ही लॉस्ट हिज बैट आल्सो। और गेंद 2 स्क्वायर इस वक्त उछालने में सफल, 6 रन का इशारा आधा कर चुके हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 2 रन मिलेगा यहाँ पर। और दोनों हाथों से एक एक करके 2 रन, दोनों सिंगल्स इस वक्त बताया अंपायर रोनाल्ड पिंटो ने। और जैसे ही स्ट्रोक को इस वक्त खेला था, उनका बैट बल्ला भी गेंद के साथ साथ उछलता हुआ और 2 रन यहाँ पर टीम और बल्लेबाज के खाते में जुड़ते हुए 17 रन बन चुके, 17 ऑन द बोर्ड, दैट मींस 13 रिक्वायर्ड फ्रॉम रिमेनिंग 10 बॉल्स। 10 गेंदे 13 रन चाहिए। और अविनाश धीरे धीरे अपना रिदम प्राप्त करते हुए काफ़ी डॉट गेंदे अब तक वो खेल चुके हैं। और देखते हैं ये है कि वो दूसरे छोर के बल्लेबाज आजिम के साथ मिलकर अपनी टीम को सही मंजिल तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। इस बीच अगली गेंद, lost it. This time I think it could be taken and taken comfortably just inside the fence by the fielder at deep mid wicket. विल्सन जो खिलाड़ी थे
जिन्होंने एक बेहतरीन जजमेंट के साथ इस कैच को लपका, और ऐसा कहना पड़ेगा अविनाश की स्ट्रगलिंग पारी पर पर्दा यहाँ पर गिर चुका है। और स्ट्रोक दमदार था, लेकिन स्ट्रोक में पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके, और डीप मिड विकेट पर इस कैच को लपक लिया गया बाखूबी फील्डर विल्सन द्वारा सीमा रेखा के अंदर। वन मोर विकेट फॉलन। नाउ 13 runs required from remaining 9 deliveries. 15 balls faced by Avinash. He scored only 5 runs of 15 deliveries with a strike rate of 20, in fact 33 in fact the strike rate, 5 of 50 deliveries, 33 the strike rate. और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त नंबर 5 की जर्सी पहने हुए नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद अविनाश ने 15 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 5 रन उन्होंने बनाए, 33.33 रन प्रति ओवर के औसत से। He scored 5 runs of 15 deliveries by Avinash with a strike rate of 33.33. इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पर फील्डर काफी पीछे तैनात, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, क्लीन पिकअप, थ्रो पहुंचे इस वक्त स्ट्राइक रेट पर, रन आउट का खतरा, लेकिन इस सब पहले के नॉन स्ट्राइक रेट पर थ्रो पहुंचे, और गेंद को फील्ड करने के बाद गेंदबाज स्ट्राइक रेट की और थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। couple of runs added to the total, और इन 2 रनों के साथ 18 रनों पर स्कोर बोर्ड इस वक्त पहुंच चुका। दैट मीन्स 12 runs now required and remaining 8 balls। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद उछाल दिया इस वक्त मिड ऑन के दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल। 19 for the loss of 3 wicket. Now 7 balls left, 11 runs required। 11 रन चाहिए 7 के दे, बाकी कम से कम एक चौके की जरूरत है यहाँ पर कम बैक करने के लिए यूएफसी फाइटर्स के बल्लेबाजों को। इस बार उछाला, खूबसूरत स्ट्रोक into the gap as well. He's got at least couple for that. It might be considered of oh in fact fumble there, but might be back up by the another fielder. Long over बल्लेबाज तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े, 3 runs added to the total, 3 vital runs। तो यहाँ पर 3 रन बल्लेबाज जोड़ने में सफल, वहां पर मिसफील्ड करते हुए लॉन्ग ऑफ के फील्डर, और जब तक लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के कुछ इंच अंदर गेंद को बैकअप करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का। स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 22 now. Now 4 overs completed, 8 to get from last over. That means in remaining 6 deliveries. तो इस वक्त अंपायर कुछ वहां पर परिशीलन करते हुए, शायद वहां पर गेंद सीमा रेखा को लग चुकी थी या नहीं, इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए। जहाँ तक सवाल है इस वक्त नए ओवर का, तो देखते हैं यहाँ पर मैच निर्धारित और मैच डिसाइडिंग ओवर कौन से गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हैं। तो कुछ हद तक बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा यहाँ पर सौंपा गया है गेंदबाजों के नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए। Six balls, 8 runs required. तो गेंदबाज किरण इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, सामना करते हुए अजीम, और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, पहली गेंद लेकर तैयार। 8 रन अंतिम ओवर में, यानी 6 गेंदों में इस वक्त चाहिए यूएफसी फाइटर्स के बल्लेबाजों को। और इस बीच ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथों पर विकेट, यह गेंद इस बार गेंद को उछाल दिया, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर वहां पर मौजूद, जस्ट अ सिंगल गॉट। नाउ 23 द स्कोर। That means 7 runs required from 5 deliveries. 5 गेंदे 7 रन इस वक्त बनाने हैं, और गेंदबाज किरण इस वक्त तैयार, राम सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथों पर द विकेट, यह गेंद लेग स्टंप से बाहर, और वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ द थिंग्स गेटिंग easier a little bit for the batting side. Now 6 to get from 5 deliveries. 6 रन चाहिए 5 गेंदे बाकी, और गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। किरण गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। मिसेस, गुड डिलीवरी, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची थी, लेग बाय के रूप में यह रन,
और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट 4 balls लेफ्ट 5 runs required. Still, I must say it could be anybody's game at this situation. और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार किरण गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए आजीम के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार यह गेंद इस बार सीधे कवर पॉइंट फील्डर के हाथों में और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है निर्णायक मोड़ पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं गेंदबाज बल्लेबाज ने गेंद को उछालना चाहता लेकिन ऐसा करना पड़ेगा नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट टॉपिज पर गेंद टकराई और आखिरकार कवर पॉइंट फील्डर ने कोई गलती नहीं की Hazim the man departs and now 5 runs to get from remaining 3 deliveries 3 गेंदे बाकी 5 रन चाहिए और निश्चित रूप से इस वक्त मैच बराबरी पर अभी भी रुक चुका है तो इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ 108 नंबर की जर्सी यहाँ पर पहले वे क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और वो इस वक्त सामना करेंगे किरण की गेंदों का 3 गेंदे 5 रन दबाव दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता दिखाई देता हुआ और 108 नंबर की जर्सी पहने हुए इस वक्त नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज किरण 5 to get from 3 delivers here we go दाहिने हाथ ओवर द विकेट फुल टॉस लॉफ्टेड बट स्ट्रेट टू फील्डर डीप इन विकेट विल्सन वहां पर मौजूद है 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा ओवर थ्रो इस वक्त बैकअप होता हुआ खुद गेंदबाज द्वारा और 1 रन का इजाफा 26 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट नाउ 4 to get from 2 deliveries what a fantastic match is now progressing here 4 रन चाहिए 2 गेंदे बाकी और गेंदबाज किरण ने इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ और द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार और इस बीच अगली गेंद डॉट गेंदों की सख्त जरूरत है यहाँ पर गेंदबाज को जबकि रनों की सख्त दरकार बल्लेबाज को यह गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर मोड़ दिया मिड विकेट पर गेंद पहुंची सीली में डाउन पर कहना पड़ेगा 1 रन का इजाफा दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े इस वक्त रन का खतरा और यह विकेट यहाँ पर गिर चुका है विकेट यहाँ पर गिर चुका है तो अब अंतिम गेंद बाकी 2 रन चाहिए विजय के लिए 2 to get from the last 27 in fact 3 runs required from the last delivery so last ball remaining 3 runs they have to score for victory 2 for tie 3 for win और अंपायर ने इशारा किया कि उनका निगदित समय जो कि समाप्त हो चुका है एग्जिट्स द टाइम लिमिट तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा तो अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार 3 रन इस वक्त चाहिए अंतिम गेंद पर क्या यहाँ पर देखना ही है कि यूएफसी फाइटर्स के जो स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज है 3 रन बना पाते हैं या फिर गेंदबाज किरण जो है बल्लेबाज को उन 3 रन बनाने से रोक पाते हैं तो इस वक्त गेंदबाज तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड किरण टू द राइट हैंडेड बैट्समैन 3 to win 2 for tie here we go ये गेंद पैरों पर टकराई रन के लिए दौड़ पड़े 1 रन मिलेगा दूसरा रन लेना चाहते हैं इस वक्त थ्रो इस वक्त पहुंच चुका है बल्लेबाज रन लेना चाहते हैं लेकिन द बॉल इज स्टिल इन प्ले तो इस वक्त yes that's it 1 run thrilling victory for the fielding side in fact Babugudda Tigers won the match by a single run against UFC Fighters and with that 1 run thrilling victory they bagged the complete points. What a fantastic match came to an end which won by UFC Fighters versus Babugudda Tigers and won by Babugudda Tigers against UFC Fighters by 1 run. So match number 4 has been came to an end of this prestigious cricket tournament APL season 6 2025 and the match number 5 is now going to start within just a short while between Swing King versus Good Day Bulls. और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं छोटे ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ जब मैच नंबर 5 शुरू होगा इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट तो अब वक्त है एक ब्रेक नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक थैंक यू धन्यवाद
Hello, check. So man of the match of the previous match is a absolutely low scoring thriller, and the man of the match which is goes to the Wilson for his all-round performance. Wilson scored 5 runs and he bowled a power play over with the excellent over with 1 wicket. So that I request Wilson for team Babu Gudda Tigers to please come and collect your man of the match award in our main stage. So man of the match of this match award goes to Wilson, who played very well in this match. I request Mr. Wilson to please come out to the stage and receive the man of the match award from my long-time partner and a fantastic English commentator, Mr. Satish. Please distribute the man of the match award for Wilson for his fantastic performance in this match. And now, my co-friend, my long-time partner, Mr. Satish, fantastic English commentator, distributing the man of the match award for Wilson for his fantastic performance in this match. So welcome back. Good afternoon, cricket lovers. And yes, now the match between Swing Kings versus team Good Day Bulls. Winning the toss, King Bulls are elected to field first. Here comes the first delivery of the match. And Punit will go in to face the first delivery. And Akshay will be the non-striker. Here comes the first ball.
right above the wicket. Nicely taps that one down to gully region. And ample time for the batter to complete the single. With that single there off the mark, one without loss of any wicket. And Akshay and Puneet, just like we are mentioning about, they are the pillar of this cricket tournament. Did a lot of hard work to make this cricket tournament. And every time in that Attavara Premier League, they are the one, of course, they're giving their 100% to make the tournament very successful one. And now Akshay will going to take the strike against the bowling of Ajay. This time lovely shot, placement is good enough to get at least a couple of runs. Fielder behind the ball, and before the throw came from that fielder towards the non-striker's end, ample time for Akshay to complete that couple of runs. This time Akshay not really trying for any risky stroke, just getting that line and length, and as for the line and length, he played it with the merit of the delivery, played it down to extra cover for a couple of runs down the leg side. Umpire Roland Pinto has got a little bit problem with that bowler who is coming right in front of umpire, and umpire asking, that looks like umpire will going to take the review, which is not anybody's review. This is a review of umpires. Please note, this is a review of umpire to watch whether it is good enough to call the wide or not. Ajay, maybe after he delivered the ball on his follow through, just right coming to that protected zone, danger zone, and that's why umpire couldn't manage to watch that line of the ball. So that straight away is first getting some ideas from the batters and the bowlers about that line of the ball, and both are saying yes, we have no idea. So that umpire, if you are not having any idea, I will going to get idea from the third umpire. So here the third umpire will going to watch whether it is wide or not. Very bright sunny afternoon, just like my friend Gopi is mentioning about. It's very hot condition, 30 to 31 degrees Celsius in the month of November. It's not really acceptable. It's a very hot in this month. Usually it was less than 28 or 29 degrees Celsius usually in Mangalore, but today we are witnessing some hot condition because in the afternoon. Day number 1 of Attavara Premier League Season 6, which is proudly presented by team Sri Durga Friends Attavara Babugudda. One more very reputed organization. It's a fair delivery. Decision came from umpire, the third umpire. It's a fair delivery. It's not a wide, and the dot ball, in fact. So Akshay will going to take the strike, and Ajay to continue 4 time in this over. Bowled him, cleaned him up. Once again, Akshay disappointed. As the ball just nipped back into the batter, Akshay wanted to go for the drive. Again, the problem that gap between bat and pattern and the variable bounce in this pitch creates a lot of problem. And even the hardness of the ball is really helping the bowler because of the hardness in the ball. The ball is coming very quickly to the batter. There's no time for the batter to react to that deliveries, and that's why. That's why what we are talking about, this is bowlers dominated day number 1. The wicket number first is back in the pavilion. It's 3 for 1. The new batter in is Sandeep, is experienced batter, just walks towards the middle with the very difficult condition here in Fisheries Cricket Ground, Ekuru. The breeze is passing in the middle of the ground. The hot condition. Oh, that one absolutely dangerous. And Sandeep was wanted to go for the reverse sweep. Luckily, the ball misses the stump. The wicketkeeper fumbles, but no chance of any run. Sandeep and just the first ball he facing, he wanted to go for the reverse sweep against Ajay. Ajay, last time in this over.
This time again, Sandeep wanted to go for that sweep shot. Misses the line completely. Short fine leg fielder. Fields the ball. Good over. Great over. Again there from Ajay for the team Swing Kings. And good doubles once again after the very slow and shackling start. 3 for 1 after completion of over number first. Third umpire has been given for the wide. The fielding team, batting team review. The review which is taken by the batting team for that call from the umpire, field umpire. It's a fair delivery, but well, wait and see. Will it going to be a fair or a wide? Wait and see. After this match, a match will be played between Babagulda Tigers versus Good Day Jacks. That will be the match number 6 of day number 1. This is the match number 5 in progress, and umpire. The wide call from third umpire. This is a wide delivery, and so that 1 run added to total. So scoreboard moves on to 4 on the board. The good review taken by the batting side, and so last delivery, Ajay, and need to re-ball that because of the wide call. Again wanted to go for the reverse sweep. Again he missed it completely. So nothing much in the difference in this last ball. Dot delivery. 4 loss of 1 wicket, and after completion of first over. First ball starts with the wide, and the bonus run for the team. 5 on the board for team Good Day Bulls. Right, left arm around the wicket balls. Nicely bowled, equally well played there by Puneet, right behind the line of the ball. Some intelligent cricket required in this particular ground and pitch, because you can't look for a big shot in this particular ground. Rotation of strike is absolutely the better option. So far we are watching the cricket here, the 4 matches, and here is the next one, and Sandeep struggling to get the contact with the bat, and again that ball is outside the line of leg stump, and Sandeep wanted to get that his favorite slog sweep shot, but fails to get the connection. No run scored. Mani bowled well in the previous match for Swing Kings Attavara. Appeal for leg before wicket, umpire not interested, rightly so. The off the front foot, and even ball need to travel a bit, and leg by call by umpire. With that leg by scoreboard moves on to 7 on the board for the loss of 1 wicket. Mani, the previous match, one who attempted for the hat-trick, bowled brilliantly. Again on his follow-through, good piece of fielding there by Mani. The batter Pune just tried to get that one into the onside region, leading edge of the bat. Couldn't manage to connect that one properly.
No runs scored. 7 for 1 in the over. Number second is in progress. Money. Oh, what a shot! That was a perfect, magnificently struck. In the throughout the day, number one. This is a one perfect switch it, which is watching the plate right from the middle of the bat into the deep cow point boundary for 4 runs. And at last, the Puneet managed to break the shackles here with that fantastic switch it. Connected right from the middle of the bat. Absolutely stroke from the cannon, just like a left-hand batter hitting that stroke. 10 on the board for the loss of 1 wicket. 11 on the board, correction. This time as reverse sweep will going to get a single by call by umpire. No connection from the bat. The good over from the point of view of team Good Day Bulls, which is comes to an end. 8 runs coming from this over. After completion of over number 2, Good Day Bulls are 12 for the loss of 1 wicket. You are watching APL Season 6. Mushad, the bowler, brought into attack. This time Sandeep lofted, but straight to the hands of long off. No power, no timing. The pace the penalty and easy catch for the long off fielder. Sandeep departs, and it's 12 for 2 now. Mushad, one more very talented young bowler. The previous match also is bowled well. Now this match, first ball, he got a wicket of Sandeep. And Nazir, the new batter in. Nicely turns that one down to mid-wicket revision for a single. With the addition of that single, score moves on to 13 on the board. In the over number 3 is in progress. Mushad, the third time in this over to Puneet. So far, he is the only one confident batter in the middle, looking so composed and focused. Here comes next ball. Again, nicely pedaled that one. Catch it is a call. Misfielding by the fielder, and valuable couple of runs here for Puneet. With that couple of runs, Coburn now moves on to 15 on the board. Valuable runs from the bat of Puneet. Again, that's implementing that reverse sweep. The previous over he hit the switch it. Exquisite switch it for the boundary. Now delicately played a reverse sweep to get a couple of runs. Saps it fine. Defeats the fielder. Went into the defined leg. Will it go into a couple? No. Good fielding by the fielder. But here the batters have completed a couple of runs. So Puneet playing an intelligent cricket here. Again, that implementing that reverse sweep, and now he's realizing that behind the stump you can get some runs. And with that couple of runs, Coburn moves on to 17. So good recovery now from Puneet. Important innings for his team. 17 already on the board. This time Big White looks like the good stop by the fielder, but he cannot stop single from this to batter. Altogether a couple of runs. White +1. Warning has been given for bowler Mushad as he coming right in front of umpire. Anyhow, couple of runs taken to score into 19, and that brings Nazir into strike. Nazir. Again, lovely work off the toes down to deep square leg region in front of square, behind the square. One more addition. With that addition of that single, score moves on to 20 on the board. 20 for the loss of 2 wickets. So runs which is coming very easily in this particular over.
Now Punit will going to take the strike. Again, a straight to answer fielder, but wide throw came from the fielder. It's gone. Excellent work done by the fielder as well as the wicket keeper. It's a combination work. It works out to depart Nazir in the form of run out, because the ball went very quickly to the hands of the fielder, and even very good work done by the fielder to release the ball quickly to the hands of wicket keeper. And wicket number 3 back in the pavilion for team Good Day Bulls. 24, the loss of 3 wicket in the over number 3, which is comes to an end. New batter in is Gautam, number 5 batter for the side. The score remains on 20, and Punit will going to take the strike, and over number 4, just in number 5, brought into attack. Ram to bowl penultimate over, 4th over of the innings of team Good Day Bulls. Lost their first match, Good Day Bulls. They wanted to come back strongly in this particular match. The wait and see. Ram to Punit, again bowler's back drive. Just he wanted to make the placement between the bowler and the point, but fails to get the placement right, and bowler on his follow through field the ball. No runs scored. Ram, second time in this over. This time I played it in the air, deep square like fielder underneath it, taken the catch. That's end up Punit, absolutely not disappointed. He just wanted to play it even down the ground, but because of the top edge, ball went into the deep square leg region, and the fielder in the deep square leg making no mistake at all. Good innings of Punit. This just comes to an end after scoring double figure 10 runs from his bat. Unfortunately, when his team is needed him the most, he is back in the pavilion. The subtle batsman back in the pavilion means it definitely is some good news for the team Good Day Bulls. And Ram picked up wicket, his first wicket. New batter in. We need to see the jersey number to get the name of the batter. Ram, third time in this over. Appeal for leg before wicket, but not with the full-hearted shout like by call by umpire. One more addition. 21 in the form of leg by, that single has been converted, and Ram 4 time in this over, bowling to Gautam. Gautam set the ball very nicely in the gap. Wanted to come back for the second. Wide throw came from the fielder, grabbing the opportunity. Completed a couple of runs. With that couple of runs, Kobar moves on to 23. Intelligent cricket there from Gautam, implementing that sweep shot with very effectively in the gap. Ram. Once again, sweep shot comes into play. The complete single directed, but they wanted to go for the run. Next run, wide throw coming from the field, and umpire Sriraj. Even here also some chance here to wait and see. Third umpire has been given by the non-striker umpire. Wait and see the batter is safe or not.
Sri Durga friends, Attavara Babagudda, the presence Attavara Premier League Season 6. The 5 teams taking part in this round robin league stage matches. Babagudda Tigers, Gudda Bulls, Gudda Jacks, Sphinx Kings, FCF Fighters, all are got the dream of lifting this prestigious Attavara Premier League Season 6. And wait and see. Tomorrow will be the final day of this cricket tournament and most excitement day. And of course, in the evening we are going to witness some the prize distribution ceremony as well, with the presence of chief guests. Not out is a call from third umpire, so that couple of runs added to total. With that couple of runs, score Namuzan to 25 on the board. 25. For the loss of 4 wickets. Ram to continue. Last time in this over. Gautam will going to take the strike. Ram. Drives, nice looking drive towards a long off. Wanted to come back for the second. In comes a throw. This has been excellent running between the wicket. Especially Pradeep is running towards the dangerous end. But this is not a good idea for the fielder to return the throw to the hands of the bowler. It's a long distance to get the ball into the hands of wicket keeper. And couple of runs which is completed. Good over from the point of view of team Good Devils. And very valuable couple of runs again came from the bat of Gautam. Scored moves on to 27 on the board. Last over remaining. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ತಂಡ ಗುಡ್ ಡೇಬಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ Ritvik took about the last over of the innings of Good Bulls. This time bye signal by umpire declared from the bat. It's not a bye, the bye from the bat. One more single. With the addition of that single, score moves on to 28 on the board. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಗೌತಮ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಇವರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, warm welcome for this prestigious Attavara Premier League 2025. The Wilson will going to welcome him with the flower for this prestigious Attavara Premier League 2025 season 6. We are thankful and grateful for all our sponsors, donors, the supporters for the success of this cricket tournament, Attavara Premier League 2025 season 6. Stumped out, 28 on the board, new batter in. Again, nicely swept that one down to mid-wicket, short square leg region. In fact, Gautam wants the second, but difficult to get the second. Only one run with that single scope, but moves on to 29. That brings Gautam into strike now. Gautam so far, he played a sensible knock for his team. He's batting on 6. Ritvik, 4 time in over. Right arm over the wicket to Gautam. Ritvik. Balls down the leg side. They're going to be a wide. Looks like umpire will going to give the warning number 1
for the bowler as he comes right in front of umpire. Umpire asking for the third umpire to see the wide. So wide is confirmed, so that no question of going for the third umpire. With the Texas score moves on to 30, and a good score on the board. Good Bulls at last. They managed to get the runs what they really wanted. And 3 important deliveries remaining for team Good Bulls. Very important 3 deliveries. Any runs in these 3 overs can become a bonus for the team. Good Bulls and Ratvik a little bit struggling to get his line, and especially in the previous ball, the second wide of the first wide of this over, in fact, and here comes Ratvik. This time again, umpire saying that you can't continue the ball. Umpire just removes the bowler. They're going for the third umpire, so very difficult for umpire. Sometime he's saying that yes, a bowler have to think that after that first warning, you need to think that I want to come round the wicket, and this is what the decision of the bowler to think about, that I want to come round the wicket. You cannot continue the same mistake. And another so decision which is pending, so that we can't say any how many deliveries remaining. Third umpire has been given for that decision of umpire for that wide call, whether it's a right ball or a wide call. Wait and see. So now umpire is asking him to come round the wicket here, and there's a decision of it's the right delivery, the fair delivery, and misjudgment and from batter Gautam. 2 balls remaining. Rutvik now round the wicket, and after that warning from umpire. Oh, driven nicely, beautiful shot there from Gautam, and along the carpet, very straight as an arrow, and a very valuable couple of runs there from Gautam. With that couple of runs, but moves on to 32 on the board. Very good, technically very sound cricketing stroke there from Gautam. Played it back to bowler. 1 ball remaining in this over. Last time in this over, Rutvik to ball. 32 on the board. Again, outside run off stamp, chance of run out, and is gone. That's the last delivery, which is wicket in the form of run out. And the team Good Day Bulls will going to finish with the 32 and set a target of 33 to win this match for the team Swing Kings to win this match to register second victory. And wait and see how well the Good Day Bulls will going to justify this effort of the batters to get their 32. So we'll take a short break in commentary box, and after the short break, my friend Gopi will go to take over the microphone in Hindi. Thank you.
धन्यवाद सतीश। तो इस वक्त 33 रनों का लक्ष्य, 33 द टारगेट, एंड देयर इनिंग्स नाउ गोइंग टू स्टार्ट ऑफ स्विंग किंग्स। शिवा और संजय आरंभिक बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद। अक्षय गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। 33 they have to score for victory in the stipulated 5 overs, so that means in the stipulated 30 delivers with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और इस बीच अक्षय पहली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथों पर द विकेट। ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया था, इस वक्त गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। अंतिम क्षण में गेंद कुछ ज़्यादा उछाल लेते हुए और ऑफ साइड पर खेलना चाहता, ऑन साइड पर गेंद गई, एक रन का इजाफा, रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। शिवा ऑफ द मार्क एंड द रन अकाउंट बिगिन फॉर स्विंग किंग्स, 1 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट स्टार्टेड जस्ट शॉट वाले को। अक्षय ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, खाली क्षेत्र चुनते हुए मिड ऑन और गेंदबाज के बीच से, सिली मिड ऑन और गेंदबाज के बीच से, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर। 2 ऑन द बोर्ड टू लूज इन विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज इस बार चिप किया into the gap as well, and this time he gets at least couple for that. It might been cut off just inside the fence, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को लॉफ्ट किया था, इनफील्ड क्लियर करते हुए पावर प्ले का फायदा उठाते हुए, और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल। बेहतर स्ट्रोक शिवा के बल्ले से लगता हुआ अक्षय फिर से एक बार तैयार, बाएं हाथ ऊपर द विकेट। यह गेंद उछाला एक बार फिर से, एनफील्ड क्लियर करते हुए खूबसूरत स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा कवर पर, जब तक थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करके थ्रो करे फील्डर। बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। चतुर क्रिकेट यहाँ पर बल्लेबाज शिवा अपनाते, वो जानते हैं इस वक्त एनफील्ड को अगर क्लियर किया जाए, हल्के से गेंद को स्कूप किया जाए, तो कम से कम 2 रन के पक्ष में आ सकते हैं। और यहाँ पर अपने इस रणनीति को कार्य रूप में वो लाते हुए पिछले 2 गेंदों पर 4 रन बटोर चुके हैं 2 कपल्स के रूप में। और अक्षय फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, लेकिन परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी कंपेयरिंग टू द प्रीवियस डिलीवरी, और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका 6 रनों पर। लॉफ्टेड दिस टाइम आई थिंक सो इट कुड बी क्लियर द डिस्टेंस, जस्ट वी हैव टू वेट एंड सी। और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त शिवा के बल्ले से लगता हुआ, ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट कॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड लॉफ्टेड दैट वन इन स्टाइल इनटू द विकेट एरिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फेंस फॉर अ मैक्सिमम। और इस छक्के के साथ ऐसा कहना पड़ेगा बेहतरीन शुरुआत इस वक्त स्विंग किंग्स कर चुका है। 12 ऑन द बोर्ड, फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली परफेक्ट स्टार्ट फॉर स्विंग किंग्स। रवि इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, दूसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ स्विंग किंग्स की पारी में। निश्चित रूप से पहले ओवर में एक बेहतर शुरुआत शिवा अपने टीम को दे चुके हैं। अंतिम गेंद पर एक छक्का लगाने के बाद 12 रन पहले ओवर के बाद इस वक्त स्विंग किंग्स का दिखाई देता हुआ, और पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त मौजूद, डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्कोर लेग इस वक्त तैनात था। और रवि ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। पहली गेंद इस बार ड्राइव किया बैकफुट पर जाने के बाद डीप एक्स्ट्रा कवर पर, 1 रन के लिए 13 ऑन द बोर्ड। गुड्डे जैक्स ಹಾಗೂ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಸೈನ್ಗಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. रवि इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और सामना करने के लिए तैयार शिवा, जो कि पिछले ओवर में बेहतरीन छक्का झड़ चुके हैं, और इस वक्त सामना करते हुए इस बार हल्के से गेंद को इस वक्त मोड़ दिया खूबसूरती के साथ कवर पॉइंट की दिशा में। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। 14 विदाउट लॉस है इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज रवि अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट।
इस बार स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ डीप फाइन लेग की दिशा में और गेंद इस वक्त डीप फाइन लेग सीमा रेखा को पार कर चुकी है, लेकिन 2 स्क्वायर सिर्फ 2 रन मात्र बल्लेबाज और टीम के खाते में जोड़े जाएंगे। खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ दिया था इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग के बीच 2 रनों के लिए। बल्लेबाज संजय ने 16 ऑन द बोर्ड और रवि फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए स्वीप करना चाहा, गेंद हमें में लेकिन फील्डर शॉर्ट स्क्वायर लेग पर मौजूद, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 16 रनों पर 16 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। 33 रनों की दरकार, जबकि 16 रन उनमें से बन चुके हैं, 17 रन बनाने हैं उन्हें विजय के लिए स्विंग किंग्स को। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज रवि। इस बार गेंद वाइड का इशारा अंपायर द्वारा लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए दिशाहीन गेंद थी और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका अब 17 रनों पर 17 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज रवि स्वीप किया इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। रन आसानी के साथ इस वक्त बनते हुए स्विंग किंग्स के लिए और ये दोनों आरंभिक बल्लेबाज एक बेहतर शुरुआत देने की पूरी कोशिश करते हुए 18 रन बन चुके हैं। कुल मिलाकर इस ओवर में 5 गेंदों में 6 रन बन चुके हैं और रवि इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट इस वक्त तैयार। बेहतर गेंद थी नहीं, लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा। 1 मोर रन एडेड टू द टोटल। गेंद में काफी हद तक तेजी थी लेकिन दिशाहीन गेंद और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 19 ऑन द बोर्ड। अगली गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकल चुकी है, 1 रन फिर से मिलेगा। 22 overs completed, 8 runs came from the last over. One more good over in Swing Kings' point of view. Games 2 gone and 20 without loss. They are looking in a commanding situation. Just 13 to get from remaining 3 overs. That means in remaining 18 deliveries. ಗುಡ್ಡೆ ಜಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. संदीप गेंदबाजी शुरू करते हुए और जहाँ तक गुड्डे बुल्स का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए 1-2 कसे हुए ओवर्स, चंद विकेट इस मैच में कम बैक करने के लिए। और इस बीच संदीप ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। पहली गेंद और गेंद इस वक्त फ्लेक्स पर टकरा चुके, नो बॉल का इशारा। स्टार्ट्स ऑफ विद नो बॉल, फ्री हिट डिलीवरी फॉर द बैट्समैन। 22 ऑन द बोर्ड और गेंदबाज संदीप फ्री हिट गेंद लेकर तैयार इस वक्त। रिवर्स शॉट फैंटास्टिकली स्ट्रक एंड दिस टाइम चेस फॉर द फील्डर एंड इट कॉस्ट ओवर द फेंस फॉर अ कपल रन। अगेन अ कपल, 24 ऑन द बोर्ड। सिर्फ 9 मात्र रन अब चाहिए विजय के लिए। तीसरा ओवर जो कि प्रारंभ हो चुका है। संदीप फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए वाइड अगेन 25। Oh, just wanted to cut that one at the last moment, missing the line completely. Good one from the bowler. गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर रुक चुका है अब 25 रनों पर और संदीप अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई एक बार फिर से वाइड का इशारा। जस्ट स्ट्रगलिंग आउट इन द मिडिल संदीप और अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त प्राप्त करने की कोशिश में ऑफ द टोस गेंद को मोड़ दिया डीप मिड विकेट पर। 1 रन। Scoreboard moving up to 27 now. 27 for the loss of no wicket. Fantastic opening partnership is now building up here for Swing Kings between Shiva and Sanjay. Sandeep.
Oh, just gone for a big one, missing the line completely. Fantastic delivery from the bowler Sandeep. स्कोर रुक चुका है 27 रनों पर 27, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। और इस बीच अपनी अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार संदीप था, इन हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। इस बार गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को खेला, रन आउट का खतरा, इस बीच स्ट्राइक करने पर थ्रो पहुंचा, लेकिन बल्लेबाज एक रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। अंतिम क्षण में बल्ला उड़ाया था गेंद पर, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकल रही थी। एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 28 रनों पर 28, वन बॉल स्टिल लेफ्ट इन देयर इन दिस ओवर। 28 ऑन द बोर्ड। संदीप रिवर्स शॉट खेलना चाहा, इस बार अगर रन लेते तो शायद खतरा पैदा हो सकता था बल्लेबाज के लिए। ओवर की समाप्ति, 3 overs completed, 28 on the board, yet to lose any wicket. Swing Kings looking in a commanding situation, in fact. So fourth over starts in their innings और पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार पुनीत, और सामना करेंगे इस वक्त शिवा। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद इस वक्त तैयार, 12 balls and 5 runs required. First ball driven, good stop on his follow through made by the bowler Puneet. इस बीच रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। फोर्थ ओवर स्टार्टेड, जस्ट शॉट वाले गो, और पुनीत अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। Oh, good one, good one. This time shot fine like fielder misses and wide. In fact, the umpire declared it. The ball moving too far the leg stump. 1+1, 2 runs added to the total, 30 on the board. Fourth over in progress. Or Puneet. River shot fantastically struck down to a deep mid wicket. और गेंद को फील्ड कर लिया गया, थ्रो पहुंचा इस वक्त, लेकिन काफी धीमा थ्रो, और बल्लेबाज 2 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। बेहतरीन स्ट्रोक था इस वक्त बल्लेबाज का, और 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर, 32 ऑन द बोर्ड। फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस। और रंजीत अनटेकन ब्रिलियंटली, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग कैच टेकन बाय द एक्स्ट्रा कवर फील्डर। काफी शार्प कैच था और कैच को बेहतर तरीके से लपकते हुए। वन मोर विकेट फॉल एंड द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड, जस्ट अ सिंगल रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 9 balls. So good innings from Sanjay Kemstone. At last, the bowlers of Good Day Bulls got the breakthrough. And now, new batsman is now comes out to the middle. और इस बीच पुनीत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट किया खूबसूरती के साथ, और इस रन के साथ स्विंग किंग्स रजिस्टर्ड comprehensive victory against Good Day Bulls. And with that victory by 9 wickets, they back the complete points. So match number 5 has been Kemstone, and which won by Good Day Bulls by 9 wickets. And now the next match is now going to play between Babu Hooda Tigers versus Good Day Jacks. And I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. Good Day Jacks ಹಾಗೂ Babu Hooda Tigers ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
So everything is ready for the match number 6 of the day number 1. Babu Gudda Tigers versus Good Day Jacks, and elected to field first. Good Day Jacks after first toss won by the team, and fantastic start there from Akhilesh. What a shot, one of his favorite. And just touching his front foot and played it exquisite slog sweep shot down to deep square leg boundary for 4 runs. And picking up that line and length so quickly. Wonderful shot from Akhilesh, and perfect cricketing stroke to play in that power play. And confident start here from Akhilesh. He will going to face his next delivery. Again driven that one down to mid off, lack of placement. Good comeback by Sushant after that wrong line. Ball that extent incoming delivery for the batter Akhilesh. She played it down to mid off, not for run. Oh, one more beautifully bowled, perfect one. Now quickly the bowler realizing what is a strong line for the bowler batter. In fact, it is a weakness of the batter is outside the line of off stump, so that he bowled beautiful delivery. This time lovely shot. Akhilesh played it down to extra cover division for a single. With that single, Skobar Namuzan to 5 on the board for the without loss of any wicket. Good Day Jacks. They won their first match against UFC fighters. Again played it gently down to short extra cover region for a single. With the addition of that single, Skobar Namuzan to 6 on the board. Babu Gudda Tigers so far they played 2 matches out of 2. They won 1 match. They lost 1 out of 3, and this is 3rd match in fact. Again appeal for leg before wicket, but ball by call by umpire, ball missed everyone. The bat pad and the wicket keeper's hands. And first over completed. Good start for the team Babu Gudda Tigers. 7 on the board without loss of any wicket. Boundary in that over will makes a good start here for the team Babu Gudda Tigers. Shreyas brought into attack, the captain of the side. After that power play, the spread out field set, deep square leg, the square leg going back to deep square leg, mid wicket going towards a deep mid wicket, cow point going back to deep cow point. The longer extra cover fielder going towards deep extra cover, and the 5 protection in the deep, 3 on the onside, 2 on the on in the deep. Short extra cover and short gully the fielder inside the ring. This time nicely played it down to deep cow point region. Kishan doing the right job. With a huge gap there in the offside region. And one fielder at third man, one fielder at extra cover, so that huge gap, so he easily managed to get the placement there and picked up a single. His first run, Skobar Namuzan to 8 on the board for without loss. Down the leg side, but well with the reach of the batter. Avinash, the favorite area, that is a deep square leg. He just wanted to get that one in that area, but couldn't manage to make a connection. Missed it completely. No run scored. Score remains on 8 on the board. Shreyas. Reverse ape, a lovely improvisation. The couple of runs once again added to total. With that couple of runs, Skobar Namuzan to 10 on the board. This is a battle between 2 captains there. Captain of Babu Gudda Tigers, Akhilesh, facing captain of Good Day Jacks, Shreyas. 4 time in this over. Balled him, cleared him up. Captain takes opposition captain's wicket. The celebration is on. Why not? After that, reverse sweep pitch has got a couple of runs, and once again Akhilesh wanted to continue that same reverse sweep, but this time too clever. Shreyas bringing the ball and getting a little bit good length delivery coming into the batter,
And the ball hit the stumps. The wicket number first is back in the pavilion. 10 for 1. Team Good Day, correction, team Babu Good Day Tigers. Wilson, the new batter in, got a man of the match in the previous match for his all-round performance. And once again, he coming to the middle with a very important stage of the innings. As a number 3 batter, is very important batting order number 3. And Shreyas will go into bowl, a successful bowler and a captain. They wanted to go for the sweep shot. Umpire will going to call that wide because of that line which is gone far away outside the line of leg stump, with the addition of that extra score. But moves on to 11 on the board without loss of, for the loss of 1 wicket in the over number 2nd in progress. Shreyas again outside the line of off stump. Better line and better length here from Shreyas. The wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. It's turning out to be a good over from Shreyas. At 1 delivery remaining in this over, and quite over. And so far 4 runs came from this over. This time reverse shape is played it in the gap, but not more than a single. Fielder is so quick. Nikhil running from the deep extra cover. So 5 runs came from this over, and wicket as well for the captain of the side, Shreyas. 2 gone after completion of over number 2. Babu Good Day Tigers are 12 for the loss of 1 wicket. They're going exactly 6 runs per over. Sri Durga friends Attavara Babu Gudda, they're celebrating their very successful 13 years of journey with in that sports activities and social activities. And every year they are organizing the cricket tournament almost from last 5 years. This is the 6th edition of APL, Attavara Premier League season 6 under progress. Sunil, Sachin correction, brought into attack to bowl the 3rd over, and in front of him the batter Wilson. Wilson lofted in the gap into the deep long off, and a very good piece of fielding there by the fielder at deep long. An excellent commitment from the captain of the side. He was absolutely covering the ground from extra cover to straight deep long off. That was a good work done by the Sunil. Correction, Sunil, the fielder in the deep long off, Irish long off. Captain is in a cow point region. 13 on the board, this time down the leg side, and the white call by umpire. So extra added to with that extra score, but moves on to 14 on the board. The review has been taken for stump out in the striker's end. And, wait and see decision of the umpire here. Good Day Jacks are searching for their 2nd victory. Babu Good Day Tigers is also they're searching for the 2nd victory for them. They lost the previous match. This is a review which is taken for the stump out. Appeal came from the wicketkeeper behind the stump, and wait and see what could be the decision there. Still, it's a very hot condition is in which is continues here in this Kuru Fisheries cricket ground. Time is exactly 5:03 in the afternoon. Swing Kings takes on a UFC Fighters in the next match, so that I request both the teams players to complete that formalities of signatures as soon as possible. Umpire Roland Pinto just watching that call from the field umpire for the 3rd umpire for the stump out. Mangalore media having a live telecast of this cricket tournament, and tomorrow will be the final day of this cricket tournament.
16th November, the final day. We have a lot of individual award for the performer of the tournament. The winners and runners will going to grab the cash prize as well as a very attractive winners runners of trophy. There will be a man of the match of the finals and fair play award, man of the series award, best batter and best bowler of the tournament, the best fielder of the tournament, highest sixes, and the cool captain of the tournament, emerging player of the tournament, and man of the match for all matches with the iron box, one of the best concept from the organizers for the man of the match by presenting iron box. So decision which is pending here, and wait and see. Stump out which is square leg umpire is asked for. So out is a call from third umpire. So one more wicket back in the pavilion of Babagudde Tigers. So automatically done behind the stump, and the scoreboard remains on 14 on the board. Sachin to continue. So new batter in is Abhiram, left arm bowler. This time a lovely shot. It was copybook style of extra cover drive there from Abhiram. Confident start here from him, and he picked up a single for that. With that single, scoreboard moves on to 15 for the loss of 2 wickets. This is over number. The third is in progress. Babagudde Tigers are looking towards a good score against the team Good Jacks. Good Jacks and winning the toss in the earlier, and elected to ball first. This time wide outside the line of off stump. Wide call by umpire Wilson. Nothing much to do with that delivery, which has gone outside the line of off stump, and with that extra scoreboard moves on to 16 on the board for the loss of 2 wickets. One more wide. This has been absolutely discipline which is missed out by Sachin in this over. Third wide delivery in this particular over. 17 on the board. This time lofted but straight to the answer fielder. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement. Wilson just wanted to get the ball down to cover point region, but ball went straight to the hands of deep extra cover region. Wilson disappointed. Sachin got a wicket, and wicket number 3 is back in the pavilion of Babagudde Tigers. It's 17 for the loss of 3 wickets.
Arun brought into attack, the senior most player for the side and experienced campaigner, one who represent for SNGT cricketers, and will going to face his first delivery. Again outside the line of off stump, and one more wide. This is the fourth wide of this over from Sachin. Oh, this time, the fielder is not in that position where you need to take the catch, which is the backward point region, and ball is in the air for a while, but luckily for Arun, that ball didn't carry to the fielder, and no attempt coming from the fielder as well. It's 19 on the board for the loss of 3 wickets. Sachin bowling to Abhiram. Abhiram was so good in that shot, especially in the offside region, connecting the ball very well, placing the ball very low off the back foot this time, just punches it down to cover point region for a single. With that, it single score, but moves on to 20 on the board. Intelligent cricket is very much required in this condition for each and every batters of the teams. So Marun wanted to go for the single, and rightly so, Abhiram sending him back. So over number 3, which is comes to an end after completion of over number 3. It's 20 for the loss of 3 wicket. You're watching APL Season 6. Nikhil again played it very nicely. Excellent cricket there from Abhiram. Not really trying to hit the ball pretty hard. The playing that stroke with the merit of the delivery, with the line, and rotating the strike very nicely so far. 21 on the board for the loss of 3 wicket. Marun want to pick the single. Sachin not interested for the run out. One more addition. With the addition of that single score, but moves on to 22 on the board for the loss of 3 wicket. Right arm over the wicket balls. This time I wanted to go for a safe shot. Lovely connection as well. You got a couple of runs here after playing some classical off drives. This time typical sweep shot came from the bat of Abhiram. Played it very nicely down to defined leg, defined leg in fact, for a couple of runs. With that couple of runs, scored moves on to 24 on the board in the over. Number 4 is in progress. Again, lovely shot. He's looking so good so far. Placement is so good. Wanted to come back for the second, asking for trouble. Good throw coming from Sunil. Is charging in from the apex cover region and denying the second from this to batter. With that single score, but moves on to 25 on the board for the loss of 3 wickets. Right arm over the wicket balls. This time Arun River sweeping the ball very nicely in the gap between the two fielders. One more single. Both the batters are dealing with a single, rightly so. 26 on the board for the loss of 3 wickets. The last ball remaining in this hour. Last 7 deliveries remaining in the innings of team Babagudda Tigers. So far, good cricket from this batter. Down the leg side, wide call by umpire. One more addition. The wide number 6 in fact so far. That means they already bowled 1 extra over. 27 on the board for the loss of 3 wicket. One more wide. After Nikhil bowled some good line and length, he's a little bit frustrated that batters are picking up runs in each and every ball, looking for some experiment.
This time far outside the line of off tempo and number 8 wide. It's 28 on the board for the loss of 4 wickets, 3 wickets off the backward. Abhiram played it nice shot down to extra cover to pick the single, and he will going to retain the strike for the next over. 4 gone, and after completion of 4 overs, the Babaguda Tigers are 29 for the loss of 3 wickets. This time played it down to mid-wicket region. They're looking for the second. In comes a throw from the deep, and couple of runs completed. Excellent cricket there from Abhiram so far. This time is a perfect example for the many batters how to play in this condition. And so far he is looking so composed and focused and very controlled innings. He's batting on 9. And scoreboard moves on to 31 on the board. Again played it very nicely. Off the toes, plays it down to deep square leg region for a single. With the addition of that single, scoreboard moves on to 32 on the board. In the over number last is in progress. Last 4 deliveries remaining in the innings, and Tanush now get ready bowling to Arun. Arun wanted to go for the reverse sweep again. This time chance of run out, direct it, but I think the bails are off, which is a little bit late, and it has taken a little bit time to the bails dislodge from the stumps, so that the umpire rightly so not looking for any third umpire. It's right call as well. 33 on the board. Abhiram will going to take the strike. This time inside edge of the bat. First time seeing that Abhiram not really connected that one properly, because the intention what he needed to get some expansive stroke on the offside region. Got a single for that. 34. Last 2 balls remaining. A good score on the board for Babaguda Tigers. Mr. Maroon wanted to go for one more big shot on the onside region. Again deflected from the leg of the batter. Leg by called by umpire. The 35 on the board. The last delivery of their innings is coming up. And Abhiram is a batter will going to take the strike, and wait and see what he will going to contribute from this last delivery. Tanush wanted to get one good ball. This time appeal for leg before wicket. Umpire not interested. And they completed a single, but not more than a single. So leg by call by umpire. That's it. And the Babaguda Tigers finished their 5 overs quota, and they managed to score a 36. And they set a target of 37 to win the match for the team of Good Jacks. And wait and see how Good Jacks will going to get this total. But good performance from Babaguda Tigers, especially the Abhiram played a very good innings for his team. They remains unbeaten. And Arun is also given a good stand for their partnership. And in the beginning, Akhilesh scored some runs from the bat. In bowling performance, we only can see that Sachin, who got 2 wickets, Shreyas got 1, Sachin got 2, and altogether only 3 wickets are back in the pavilion. But more economical, Shreyas with the 5 runs and a wicket. And that's what the match summary, little correction, that's the match summary, the innings summary of Babaguda Tigers. We'll take a short break here in the commentary box, and after that short break we are back with my friend Mr. Gopi in our the beautiful language Hindi, and it's a time for break as well. Thank you.
धन्यवाद सतीश। तो इस वक्त लक्ष्य है गुड जैक्स के लिए 37 रनों का लक्ष्य। 37 द टारगेट एंड द इनिंग्स नाउ गोइंग टू स्टार्ट। और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार सुनील और सुशांत आरंभिक बल्लेबाज। मैच नंबर 6 का द्वितीयार्ध यहां पर शुरू होता हुआ इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत APL सीजन 6 2025। और गेंदबाज विल्सन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर था विकेट स्टीयर करना चाहा। इस वक्त विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े और एक रन यहां पर यशस्वीतम पूर्ण करने में सफल। लेग बाय का इशारा, शायद गेंद बल्लेबाज के पैर से टकराने के बाद विकेट कीपर के हाथों से छूटी थी और एक रन का इजाफा। और इस एक रन के 7 रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। एक रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर इस वक्त गुड जैक्स का शुरू हो चुका है और गेंदबाज विल्सन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। Again, just gone for a mighty heave, not succeeded. The ball stuck to his leg. और गेंद जब तक स्क्वायर लेग फील्ड और लेग बाई के रूप में एक रन उनके खाते में जुड़ चुका है और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 2 रनों पर 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और फिर से एक बार विल्सन ये गेंद, इस बार गेंद हमें में जरूर, लेकिन फील्डर कोई वहां पर नहीं। गेंद का पीछा करते हैं फील्डर, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और दूसरा रन यशस्वीतम यहाँ पर पूर्ण करने में सफल। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनके पारी का इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर था विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद जस्ट मिसिंग टू फॉर साथ द ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट, जस्ट मिसिंग टू फॉर साथ द ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट और एक रन का इजाफा वाइड के रूप में इस वक्त हो चुका है और एक रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। फिर से एक बार विल्सन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ट्राई कर दिया। इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर रन के लिए दौड़ पर थ्रो पहुंचा और इस बार बल्लेबाज बच नहीं पाएंगे। बेहतर फील्डिंग, बेहतर थ्रो और बेहतर कलेक्शन और बेहतर तरीके से विकेट इस वक्त चटका दिया थ्रो को रिसीव करते हुए गेंदबाज ने। और इसी के साथ इस बेहतर फील्डिंग और बेहतर तरीके से विकेट चटका देने के बदौलत ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। सुनील का बेहतर विकेट, क्योंकि सुनील ने पिछले मैच में बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था। यहाँ पर उनका विकेट गिर जाने के बाद अब 5 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है। गुड जैक्स, इट्स 5-1 in the over number first in progress and Sunil departs in the face of run out. श्रेयस नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से क्रीज पर मौजूद और इस बीच विल्सन गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर था विकेट। यह गेंद उछाला विल्सन ने इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर इनटू द गैप एज वेल, लेकिन गेंद को इस वक्त रोक लिया गया। वाइडिस लॉन्ग ऑफ पर काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर 7 ऑन द बोर्ड। और एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में और विल्सन अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार। लॉफ्टेड जस्ट क्लियरिंग द इनफील्ड और फिर से 2 रन कम से कम बल्लेबाज को प्राप्त होंगे। ऐसा कहना पड़ेगा संपूर्ण समतोलन नहीं था स्ट्रोक पर, नॉट क्वाइट कंट्रोल्ड इन दैट शॉट बट ही गॉट अ कपल फॉर दैट स्ट्रोक। और एक इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 9 रनों पर। प्रीटी गुड स्टार्ट फॉर गुड जैक्स, 9 on the board, chasing the victory target of 37 in 5 overs, 28 to get from remaining 24 deliveries and the required run rate coming down a little bit in exactly 7 runs per over। 24 गेंदे 28 रन चाहिए विजय के लिए। और दूसरा ओवर हमसे दूर वाले छोर से यहाँ पर शुरू होता हुआ दिन धीरे धीरे शाम की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ। दोपहर के 3:30 इस वक्त बच चुके हैं, 3:31 कहा जा सकता है और धूप का प्रकोप काफी हद तक कम हो चुका है, लेकिन गर्मी की तीव्रता अभी भी कुछ हद तक इस मैदान में बरकरार। और खिलाड़ी और दर्शक जो गिने चुने इस मैदान पर मौजूद है इस गर्मी का एहसास यहाँ पर करते हुए। और गेंदबाज किरण गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर था विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए
वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 अंकों पर 10 रन बिना किसी नुकसान के। निश्चित रूप से एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त जरूरत गुड जैक्स के बल्लेबाजों को अगर उन्हें एक लक्ष्य तक पहुंचना है 37 रनों के स्पर्धात्मक लक्ष्य तक पहुंचना है तो लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा, एक और वाइड उनके खाते में जुड़ता हुआ 11 विदाउट लॉस। और फिर से एक बार गेंदबाज किरण अपने ओर के अगली गेंद लेकर तैयार। अगेन मिसिंग टू फॉर साउथ लेग स्टंप और इस बार शायद अंपायर के आड़े आ गए थे इस वक्त गेंदबाज। नो बॉल का इशारा, लाइन के बाहर गेंद गुजरती हुई इस वक्त और नो बॉल के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 12 रनों पर। फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के पक्ष में और देखना है कि इस फ्री हिट गेंद का बल्लेबाज किस तरह फायदा यहां पर उठाते हैं। फिलहाल मैच इस वक्त अभी भी बराबरी पर रुक चुका है और इस बीच दाहिने हाथों पर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार ऑन साइड पर गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया, गेंद जाते हुए डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर 13। इस बार caught and bowled, fantastically taken on his follow through by the bowler. This is an outstanding catch on his follow through taken by the bowler. Because of that, second wicket departs. So Sean departs, and now it's 13 for 2. New batsman is now comes out to the middle. धनुष किरण की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। रक्षात्मक तरीके का खेल, शॉट कवर की दिशा में था मिसफील्ड इस वक्त, लेकिन बल्लेबाज को मिलेगा सिर्फ एक रन। बैकअप होता हुआ वहां पर एक्स्ट्रा कवर पर नॉट मोर देन अ सिंगल और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर 14, लूजिंग बोथ ओपनर्स फॉर गुड जैक्स और गेंदबाज किरण अपने ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर था विकेट, रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को कनेक्ट करने में सफल और विकेट कीपर आफ्टर फर्स्ट बाउंस पहले टिप्पे के बाद गेंद को कलेक्ट करते हुए रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 14 रनों पर, 1 विकेट के 2 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, फाइन निकल चुकी है, डी थर्ड सीमा रेखा को पार कर चुकी है 2 रनों के लिए। couple of runs added to the total, 16 on the board for losing 2 wicket. Still a ball left in this over और गेंदबाज इस बीच इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए किरण दाहिने हाथ के बल्लेबाज श्रेयस के लिए अंतिम गेंद लेकर तैयार। इस बार ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक डीप एक्स्ट्रा कवर पर, जस्ट सिंगल ही गॉट 17 on the board and 8 runs came from this over. In fact, after 2 overs, still the battle is now on. 20 runs to get from remaining 18 deliveries. That means in remaining 3 overs, 18 गेंदों में 20 रनों की दरकार। गुड जैक्स को और मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। Swing Kings will take over UFC Fighters in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. Swing Kings ಹಾಗೂ UFC Fighters ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎರಡನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ UFC Fighters ತಂಡದ
ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So what a fantastic tournament is now progressing here in the name of APL Attavara Premier League Season 6 2025 which is proudly presented by श्री दुर्गा फ्रेंड्स अत्तावरा बाबूगुड्डे. पहली गेंद इस वक्त रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेला. इस वक्त बैक टू द बॉलर के दिशा में रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर रुक चुका है 17 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. 17 for the loss of both openers. गेंदबाज अगली गेंद रक्षित lofted it. This time I think chance for the extra cover fielder and he took the catch successfully in the end. ऐसा कहना पड़ेगा स्ट्रोक्स पर नियंत्रण नहीं था. नॉट फुली कंट्रोल्ड दैट स्ट्रोक एंड द बॉल वेंट हाई इन द एयर एंड डिपिक्स कवर फील्डर ने एक बेहतर जजमेंट के साथ अपने आगे की ओर आते हुए 3-4 कदम इस कैच को लपका और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका. थर्ड विकेट गॉन. इट्स 17 for 3. प्रसाद का आगमन होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में 16 गेंदें बाकी 20 रन चाहिए. 20 रन्स टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 16 डिलीवरीज. और प्रसाद इस वक्त स्ट्राइक रन की ओर कदम बढ़ाते हुए. गेंदबाज रक्षित इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए. फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई. विजय के लिए कड़ा संघर्ष जारी है इस वक्त बाबूगुड्डा टाइगर्स और गुड्डे जैक्स के बीच. रक्षित loves it. This time I think he's got the distance, but he got only a couple for that stroke. He just hit that one 2 squarer. और काफी स्क्वायर गेंद को इस वक्त उछाला था. स्ट्रोक्स में दम था लेकिन काफी स्क्वायर और सिर्फ 2 मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा. 19 on the board. Good struck came to the bat of प्रसाद. और इस बीच रक्षित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार पैडल स्वीप खेलना चाहा चूंकि गेंद सीधे फ्लेक्स पर टकराते हुए शॉट फॉर लेग पर 1 declared by 20. Now 17 to get. 14 balls remaining. और 14 गेंदें बाकी 17 रन चाहिए. अभी भी मैच जो कि बराबरी पर रुक चुका है और गेंदबाज रक्षित अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट. इस बार swings and brilliantly taken at deep back on a square leg. This is an outstanding catch taken by the deep back on a square leg और deep mid wicket के बीच जो फील्डर खड़े हुए थे आगे की ओर आते हुए गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखी और बेहतर तरीके से इस कैच को लपकने में सफल. और इसी के साथ प्रसाद का विकेट यहां पर गिर चुका है. 20 for the loss of 4 wicket. Now 13 balls left and 17 runs to get. नए बल्लेबाज का इस वक्त आगमन होता हुआ न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल एज नंबर 6 बैट्समैन. और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाज का तो इस वक्त उनका नाम जानना बाकी है. और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार ना रक्षित. इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए. लतीश नए बल्लेबाज थोड़ी सी शफल होकर इस वक्त खड़े होते हुए. यह गेंद रक्षित की हल्के से गेंद को इस वक्त खेलना चाहा. बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद जब तक शॉर्ट मिड विकेट पर फील्ड हो 1 रन का इजाफा हो चुका. 21 on the board and third over has been came soon and 3 gone. 21 on the board. 16 to get from remaining 12 balls. That means remaining 2 overs.
So Munna, the bowler, is now brought into the attack. Fourth over starts in good Jack's innings. First ball outside the off stump, गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त लॉन्ग ऑन पर रहा 1 रन के लिए बल्लेबाज ने और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर 22 on the board. That means 16 required in remaining 11 overs. 11 गेंदें 15 required in fact. 22 minus 37 minus 22. That means 15 required from remaining last 11 overs. 11 गेंदों में 15 रन चाहिए और गेंदबाज मुन्ना गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस बार उछाला गेंद को लिमिट पर रनआउट रनआउट का खतरा जरूर था लेकिन थ्रो करना मुनासिब नहीं समझा शायद वहां पर ओवर थ्रो होता तो इस वजह से एक चतुर सोच के साथ क्लेवर थिंकिंग के साथ गेंद को थ्रो करना नहीं चाहा इस वक्त गेंदबाज ने डॉट गेंद अब 10 गेंदें बाकी 15 रन चाहिए और गेंदबाज इस वक्त मुन्ना गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा अगेन अ डॉट बॉल This is turning out to be a fantastic over from Munna. Just conceded single in the first 3 deliveries. Now straight away the pressure on the batsman. सीधा दबाव इस वक्त बल्लेबाज के ऊपर धनुष जो कि बल्लेबाज इस वक्त लगातार 2 डॉट गेंदे यहाँ पर फेंक चुके हैं खेल चुके हैं 9 गेंदे बाकी 15 रन चाहिए मुन्ना इस बार उछाला गेंद को into the gap as well and finds the gap as well. तो ये चौका ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त लगभग Good Jacks को इस मैच में वापस ला चुका fantastically struck he just got that one from the middle of the bat and finds the gap as well between deep extra cover and wide is long off हालांकि फीडर खड़े हुए थे दोनों अपने अपने स्थान पर deep extra cover और long off पर लेकिन गेंद उनके बीच से निकलकर काफी तेजी के साथ सीमा रेखा को पार कर चुके हैं 4 रनों के लिए 26 8 balls 11 runs required और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त धनुष के बल्ले से लगता हुआ और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार Again, better, fantastic comeback made by the bowler after conceding a boundary. Much straighter line, reverse shot खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में अब 7 गेंदें बाकी 11 रन चाहिए और इस ओवर में अंतिम बार मुन्ना इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट इस बार deflected and gone fine this time couple of runs 2 vital runs added to the total 29 the score that means 28 the score that means 9 runs required from the last over 6 गेंदें बाकी 9 रन चाहिए और अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा the match is now still in balance मैच नंबर 6 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ APL 2025 सीजन 6 की शानदार प्रस्तुति की है श्री दुर्गा फ्रेंड्स अत्तावरा बाबू गुड्डे ने और इस श्रृंखला का इस टूर्नामेंट का पहला दिन का छठा मैच इस वक्त प्रगति पर और मुकाबला इस वक्त जारी है बाबू गुड्डा टाइगर्स और गुड्डे जैक्स के बीच तो इस वक्त गुड्डे जैक्स को 9 रन चाहिए 6 गेंदों पर और मैच निर्धारित ओवर लेकर सोनल इस वक्त तैयार फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई और देखना यह है कि गेंदबाज सोनल जो नया ओवर अंतिम ओवर शुरू करने जा रहे हैं वो किस तरह से बल्लेबाज पर नियंत्रण इस अंतिम ओवर में प्राप्त करते हैं लतीश जो कि सामना करने के लिए तैयार धनुष ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं और सोनल पहले गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट फुल टॉस पल्स एंड दिस टाइम ही फाइंड्स द गैप एज वेल इट माइट बीन कंसीडर्ड जस्ट इनसाइड द फेंस और बल्लेबाज के पास काफी मौका था 2 रन प्राप्त करने का जूसी फुल टॉस गेंद थी और बल्लेबाज के पास काफी समय था कि गेंद को लॉफ्ट करे डीप मिड विकेट पर जब तक थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का 30 ऑन द बोर्ड दैट मींस 7 रिक्वायर्ड फ्रॉम 5 बॉल्स 5 गेंदें 7 रन चाहिए और सोनल इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट चांस लेकिन इस वक्त नहीं पहुंच पाएंगे 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर रन पर लेकिन थ्रो को रिसीव करने में सफल विकेट कीपर और 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं अब समीकरण काफी हद तक आसान बन चुका है 5 रन चाहिए 4 गेंदें बाकी 5 to get from 4 deliveries. What a fantastic comeback made by the batsmen of Good Jacks in the last couple of deliveries. Last few deliveries in fact. अंतिम 6-7 गेंदों में बेहतरीन कमबैक करते हुए इस वक्त मैच में वापस आने में सफल इस वक्त बल्लेबाज गुड्डे जैक्स के अब
ऐसा कहना पड़ेगा बचे हुए 4 गेंदों में एक चमत्कारी गेंदबाजी की जरूरत है बाबू गुड्डा टाइगर्स के गेंदबाज सोनल को। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, डॉट गेंदों की सख्त दरकार इस वक्त गेंदबाज को। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद डॉट 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 डॉट, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, वाइड का इशारा हो चुका, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकले थे और आखिरकार एक रन यहां पर जुड़ेगा। कमेंटेटर बॉक्स काफी स्क्वायर है इस वक्त और इस वजह से हमें कुछ ठीक तरह से जज करने के इस वक्त नहीं हुआ कि, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रहे थे और आखिरकार एक रन एक्स्ट्रा अतिरिक्त के रूप में उनके खाते में जुड़ चुका। अब 4 गेंदे 4 रन चाहिए, तो यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा विकेट जरूर गिर चुका स्टंप आउट के रूप में। बेहतरीन स्टंपिंग विकेट कीपर ने की थी, लेकिन एक रन, एक बहुमूल्य रन इस वक्त उनके खाते में यहां पर जुड़ चुका है। नाउ 4 balls left, 4 runs required। सचिन का आगमन होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में और निश्चित रूप से कमबैक करने के लिए इस वक्त डॉट गेंदों की सख्त दरकार गेंदबाज सोनल को। और सोनल इस वक्त गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज सचिन, जो कि इस वक्त क्रीज पर पधार चुके हैं, सामना करने के लिए तैयार। दबाव इस वक्त दोनों टीमों के खिलाड़ी के ऊपर साफ पड़ता दिखाई देता हुआ और गेंदबाज सोनल दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार बोल्ड आउट, फैंटास्टिक कमबैक, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग कमबैक मेड बाय सोनल। और यहां पर अपना जस्ट मनाते हुए अपने हाथ ऊपर उठाने के बाद अपने उंगली को, और जहां तक सवाल है इस वक्त पहली गेंद पर सचिन का विकेट गिर चुका है। अब 3 गेंदें बाकी है, 4 रन चाहिए और इस गेंद का विश्लेषण करना मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि कमेंटेटर बॉक्स काफी स्क्वायर है यहाँ पर पिच के, तो क्रॉस एंगल पर रहने की वजह से इस गेंद को जज करना काफी मुश्किल होगा हमारे लिए। तो जहां तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, प्रदीप इस वक्त अगले बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए 3 गेंदें बाकी, 4 रन चाहिए। 3 for tie, 4 for win और 3 balls left in overall calculation in their innings। सोनल विकेट प्राप्त करने के बाद कुछ हद तक का आत्मविश्वास भरे इस वक्त नजर आते हुए सामना करने के लिए तैयार नए बल्लेबाज प्रदीप। सोनल दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस वक्त गेंद को लेग स्टंप पर स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ, लेकिन बेहतर फील्डिंग वहां पर गेंद को रोकने में सफल। सिर्फ एक मात्र बल्लेबाज को मिलेगा, तो अंपायर ने इशारा किया कि उनके निगदित समय जो कि समाप्त हो चुका है, खिलाड़ी के इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। 2 गेंदे बाकी है, 3 रन चाहिए विजय के लिए। 3 to get from 2 deliveries, still I must say it could be anybody's game at this situation। और खुशी की बात यह है कि इस वक्त धनुष स्ट्राइक पर वापस आ चुके हैं और तो 2 गेंदे 3 रन चाहिए। अगर मैच टाई होता है तो पॉइंट बांट दिए जाएंगे, पॉइंट्स विल बी शेयर्ड इफ द मैच एंडेड इन अ टाई। तो गेंदबाज इस वक्त तैयार सोनल दाहिने हाथ ओवर द विकेट, द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स। हियर वी गो, ये गेंद उछाला लंग ऑफ पर, 1 रन मिलेगा, फील्डर गेंद तक पहुंच चुके, दूसरा रन लेना चाहते, दौड़ पड़े और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। यह विकेट यहां पर गिर चुका है रन आउट के रूप में। तो ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज धनुष स्ट्राइक अपने पास रखना चाहता था, इस वक्त जैसे वो डेंजर एंड की ओर दौड़े और आखिरकार यहां पर विकेट गिर चुका है, लेकिन बल्लेबाज क्रॉस ओवर नहीं कर पाए थे, तो इस वजह से ये विकेट शायद धनुष का गिर चुका है। अब अंतिम गेंद बाकी, 2 रन चाहिए। 2 runs to get from last ball, 1 for tie, 2 for win, and now just a last ball remaining in their innings। तो देखते हैं कौन सा बल्लेबाज इस वक्त, और इस बार आउट होने वाले बल्लेबाज धनुष आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। तो बल्लेबाज इस वक्त क्रॉस ओवर नहीं कर पाए थे जब विकेट उखाड़े गए थे नॉन स्ट्राइक लाइन पर, तो इस वजह से शायद धनुष को इस वक्त जाना होगा। धनुष हैज टू गो, सो धनुष हैज टू गो, और बल्लेबाज क्रॉस ओवर नहीं कर पाए थे जब विकेट नॉन स्ट्राइक लाइन पर उखाड़े गए थे, और अंतिम गेंद 2 रन चाहिए। 2 runs to get from last ball, 1 for tie, 2 for win, and now just a last ball remaining in their innings।
We are just waiting for the number 9 batsman. और देखते हैं यहाँ पर तो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है यहाँ पर प्रदीप, जबकि सोनल इस वक्त गेंदबाजी करते हैं। अंतिम गेंद 2 रन चाहिए। द लास्ट बॉल रिमाइनिंग 2 रन्स रिक्वायर्ड, ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त। गुड्डे जैक्स का भविष्य इस वक्त बल्लेबाज प्रदीप के हाथों में, जबकि बाबू गुड्डा टाइगर्स का भविष्य गेंदबाज सोनल के हाथों में। देखते हैं इस अंतिम गेंद पर क्या होता है। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, काफी दिलचस्प मैच, काफी रोमांचकपूर्ण मैच यहाँ पर गुजरता हुआ। और अली लेंची लेंची बातन दुलाय बोरे जी। तो अंतिम गेंद बाकी 2 रन चाहिए। 2 to get फ्रॉम लास्ट डिलीवरी। और इस बीच गेंदबाज अंपायर प्लीज स्टॉप। तो इस वक्त अंतिम गेंद बाकी है, 2 रन चाहिए विजय के लिए। और जहां तक सवाल है, देखते हैं अंतिम गेंद पर क्या बल्लेबाज 2 रन बना पाते हैं नहीं। प्रदीप पर सामना करते हुए सोनल गेंदबाजी करने के लिए तैयार। The last ball of the match is now coming up. Match deciding ball. 2 to get from last delivery. Here we go. सोनल इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और प्रदीप सामना करने के लिए तैयार। The last ball, the match deciding ball is now coming up. Sonal to Pradeep. Here we go. The last ball. दाहिने हाथों पर the wicket. ये गेंद full toss. इस बार गेंद को खेला था, 1 रन मिलेगा। दूसरा रन लेना चाहते हैं, दौड़ाए हैं यहाँ पर, लेकिन इस वक्त दूसरा रन शायद नहीं मिलेगा। और जहां तक सवाल है, तो इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा एकमात्र रन अंतिम गेंद पर मिलेगा। तो इसी के साथ मैच यहाँ पर टाई पर समाप्त हो चुका। द मैच नाउ एंडेड इन ए टाई। सो बाबू गुड्डा टाइगर्स एंड गुड्डे जैक्स both teams scored 36 runs, and because of that the match ended in a tie. What a fantastic match came student, which ended in a tie between Guddे Jacks versus Babu Gudda Tigers, and the points will be shared. और जहाँ तक का सवाल है, अंक इस वक्त बांट दिए जाएंगे मैच टाई होने की वजह से बाबू गुड्डा टाइगर्स और गुड्डे जैक्स के बीच। बेहतरीन मैच इस वक्त समाप्त हो चुका है। अगला मैच, नेक्स्ट मैच इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट बिटवीन स्विंग किंग्स वर्सेस यूएफसी फाइटर्स। और वो मैच शुरू हो गया पर चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर अगला मैच शुरू होगा। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
So welcome back for the match number 7 between UFC fighters versus Swing Kings. UFC fighters are searching for their first victory in the league stage, and Swing Kings are one match they lost and they won one match. And this is the third match for both the teams. The first ball going for the drive. The batter Raghu couldn't manage to get the placement right, timing right. Went ball into the hands of a mid outfield, not for run. White call by umpire. Danush will be the man of the match in the previous match, and I request Kishan please come to the stage and present this man of the match award for Danush. ದಯಮಾಡಿ ಕಿಶನ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಧನುಷ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಧನುಷ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಗುಡ್ ಜಾಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಧನುಷ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಿಶನ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ನ ಕಿಶನ್ ಇವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. This time he lofted into the deep long on region, but again the long boundary, huge distance, just a couple of runs here for the batter Raghu to complete a couple of runs. Kishan is the sports secretary of Babugude Tigers as well. The sports secretary of Good Bulls. This time lovely shot, played it down to deep cover point region. They're looking for the second and they made it quite comfortably in the end. 2 runs added to total. This time lofted down to deep long off and looks like again there is opportunity of one day single there. This time fielder is very quick to react to that fielding, and one more single added to it. With the addition of that single, score moves on to 8 on the board without loss of any wicket. First over completed. Good start here for the team. UFC fighters know exactly the importance of winning this match, and they got a very good start here. 8 without loss of any wicket. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 8, ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಮನಿ brought into attack to bowl the second over of the innings of team Swing UFC fighters. Mani has got some variety in his bowling. One of the most effective bowler, left arm bowler. Again, lovely deliveries to start with, which is on balls in the midland leg stump, and batter Atul tried to work the ball on the onside region, missed it completely. Now Raghu taken the review for that wide call, and umpire Roland Pinto says it's a fair delivery, but Raghu has got confidence enough that to take the review for that wide decision. Wait and see what could be the decision there from umpire, third umpire. The tomorrow will be the final day of this cricket tournament. This is a match number 7. After this, one more match remaining. The tomorrow, as for the schedule, we have another 6 matches to go. Altogether
14 matches to be played. This is a fair delivery. Addition came from umpire. This is not a wide. And that they lost the review. The batting team, the fighters lost a very important review. Money starts with a dot. Second time in this over. Left arm bowler, very effective bowler. Round the wicket. Left arm bowls. This time again, wicket keeper misses. Short fine leg fielder feeds the ball. Again, one more dot ball. Back to back to 2 dot deliveries. A good start there from Money so far. The third time in this over. This time he lofted and ball is going and going. And wow, that was a 6. Looks like I think he's taken a catch. No, he's inside the boundary line. I thought the fielder raises his finger. I thought he signaled the 6. But he's saying that I got the catch. And Mushad, I think, the very young talented fielder in the deep long off, taken that catch. And Atul disappointed because he put everything in that shot, but still fails to get the distance. So this is what the problem in this particular cricket ground. It's dimension. We can see it's a huge ground. And in front of wicket, getting the distance is not so easy. One more wicket back, and first wicket is back in the pavilion. Atul looking for the distance, but fails to get the distance. Madhu, the new batter in. Money got a vital breakthrough for his team. Try to off the batsman. That's what. Oh, there is a mix-up. Chance of run out, but not the end. The opportunity for the run out in the non-striker end as well. But direct it might be a very close because they wanted the wicket of Raghu. That's for sure. Fielding team. That's why they are attempting run out in the striker's end. But Raghu just survived from the direct hit. One more addition. 9 on the board for the loss of 1 wicket. So far is a good over is in progress here from Money. This time, drop the catch. My goodness. The easy catch dropped by that short third man fielder. That very lucky escape here for Raghu. Wanted to go for the switch it, but Ajay, the fielder, couldn't manage to take the catch. Catches win the matches, the slogan, but missing the catches of the batter like Raghu, have to pay the penalty for that. 10 for 1, and the over number 2 is in progress. Money. Again, lovely delivery, beaten by the turn and the pace. Lovely over there for Money. Excellent over. Much required. Economical and wicket taking over, which is confident. Just 2 runs, couple of runs, and a wicket for Money. Outstanding tournament from the bowling so far by left-hand bowler. After getting a good start, team again UFC fighters UFC fighters had lost the momentum what they got in the first over, 8 runs, and now couple of runs in the second over and a wicket of Atul. So Musad one who taken a catch in the deep long on with a good judgment will going to bowl 3rd over of the innings of UFC fighters. Reverse sweep. They wanted to go for the single, but Musad, the very quick on his follow through and fields the ball back to his bowling mark. Again drives that one down to mid-wicket region, mid-on region. Just a single with addition of that single scored Namuzan to 11 on the board. That brings Madhu into strike. Money. Again wanted to go for the drive. Ball is in there for a while. No man area. Ball which is landed in the cow point region. One more single. The fielding team will not going to bother about the single. So far Swing Kings Attavara, they're strongly back in this game.
and Musad. Raghu wanted to go for the drive, but after ball is deflected from the leg, the ball went towards a short point region, not for run. The excellent bowling performance from Musad and Mani. Swept it very fine, but not more than a single. With the addition of that single scope at Muzan to 13 on the board for the loss of 1 wicket. Last ball remaining of the over number 3rd. Again, wanted to go for the drive. One more dot ball. Excellent over which is comes to an end. Just 3 runs. The first over 8 runs, second over 2, third over 3. And after completion of over number 3, it's 13 on the board for the loss of 1 wicket. Last 2 overs remaining in their innings of UFC fighters are fighting hard to get their first victory of the league match. Ritwik brought in attack to bowl the 4th over of all. We are seeing the youngsters in the side of Swing Kings Attavara and contributing in the bowling department. Balled him, cleaned him up. Raghu lost his patience, wanted to go for that unorthodox reverse sweep. A powerful reverse sweep is attempted, beaten by the pace. And the ball is hitting the middle stump. Raghu departs. Problem continues here for the UFC fighters. It's 13 for 2. Azim, the new batter in. The Ritwik got a wicket in the first delivery. Oh, that's going to be a big one. Big wide outside the run, a flex stamp, wide +1, couple of runs. Which is very important for the team. UFC fighters are 15 for the loss of 2 wickets. Second time in this over. Again driven in the gap towards the long off by Azim. One more addition with the addition of that single score and Muzan to 16 on the board for the loss of 2 wickets. That brings Madhu into strike. Ritwik. Oh, lovely drive. Beautiful shot there for Madhu. Ball hitting the some disturbance in that middle of the ground, and a couple of runs which is completed by Madhu with that couple of runs. Kubanda moves on to 18 on the board. Lovely delivery, absolutely perfect one. The batter wanted to go for the sweep shot. (18) on the board. Down the leg side, but this time looks like one more wide. With that one more extra scope, but moves on to 19 on the board. Ritwik, this time stumped out, just coming down the track, tried to hit the big shot but misses the line completely.
Wicketkeeper making no mistake at all. And over number 4 is in progress. And wicket number 3 is back in the pavilion. It's 19 on the board. Two wickets in this over for young Ritwik. Last time in this over. Avinash wanted to go for the drive, misses completely. Wicketkeeper missed it. By call by umpire. One more over gone. 4 over completed after completion of 4 overs. It's 20 on the board for the loss of 3 wicket. You are watching Attavara Premier League 2025 Season 6. Last over remaining. ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಶರೀಫ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಇವರ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೃಜನ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೃಜನ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಶರೀಫ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. Again played it down to point region for a single with the addition of that single scorer Namuzan to 22 on the board for the loss of 3 wickets. ಶರೀಫ್ ಅತ್ತವರ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೃಜನ್ ಇವರು ಹೂಗೊಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. This time a loose delivery pulls that one for a couple of runs. With that couple of runs, Koban Namuzan to 24 on the board. Last 3 balls remaining in their innings. Ram. To Avinash. This time a plum in front of wicket, and umpire has got no hesitation to raise his finger, and Avinash is back in the pavilion. Like before wicket, call from umpire Suresh Murabidre. It's a 24 for the loss of 4 wicket. Ram got a vital breakthrough for his team. Now last 2 balls remaining in the innings. Avinash back in the pavilion in the form of leg before wicket. The jersey number 108. Pratham will going to face the 5th delivery of the last over. This time a lovely delivery indeed. Perfect one from Ram. Last delivery remaining 24, which is a score of EFC Fighters. The last delivery remaining in the innings. This time wide outside the line of off stump, and going to be a one more bonus run. 25 on the board for the loss of 4 wickets. Last time in this over. Ball him, clean him up.
So 25, which is at last UFC fighters have managed to get in 5 overs by losing 5 wickets. They set a target of 26 to win the match for the team Swing Kings to win this match. And wait to see how Swing Kings will going to win this match, and wait to see how well UFC fighters will going to depend this total. We take it to short break here in our commentary box. After a short break, my friend Gopi will going to take over the microphone. Thank you. ಗುಡ್ ಡೇ ಜಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ ಡೇ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ Good Day Jacks as well as Good Day Bulls to please report to the stage immediately to make a sign with the official chart. धन्यवाद सतीश. तो इस तरह से स्विंग किंग्स के लिए 26 रनों का लक्ष्य यूएफसी फाइटर्स ने रखा है. उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होते हुए दोनों आरंभिक बल्लेबाज शिवा और संजय एज यूजुअल इस वक्त मौजूद स्विंग किंग्स के लिए. और पिछले मैच में शिवा और संजय ने बेहतर शुरुआत दी थी अपनी टीम के लिए, और देखना है कि इस मैच में वो क्या कर पाते हैं. डियोन गेंदबाजी शुरू करते हुए और पारी की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त डियोन तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. First ball time, just called for a loft, not succeeded, and he just got the rid of the batsman. This is an outstanding delivery, much straighter line, kept lower. और पहले ही गेंद पर गोल्डन डक के रूप में शिवा का विकेट यहाँ पर गिर चुका है. शिवा पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था, और यहाँ पर इस मैच में पहली गेंद पर आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और शून्य पर पहला विकेट इस वक्त खो चुका है. Swing Kings, Shiva departs for duck, and now it's not for one in the first over.
तो पहला विकेट पहली गेंद पर प्राप्त कर चुके डियोन और शिवा गोल्डन डक के रूप में आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और नए बल्लेबाज निहाल का आगमन इस वक्त होता हुआ और डियोन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। निहाल इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और शायद गेंद लेग स्टंप से ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे। हालांकि अंपायर ने इस वक्त बल्लेबाज ने मांग जरूर की लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर। और डियोन अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। विकेटों के पीछे सिंगल्स रोकने के प्रयास में 4 खिलाड़ी के इस वक्त तैनात किया गया है। इस बीच सिलेंडर की दिशा में रनआउट का खतरा, लेकिन निशाना इस वक्त चूका, खतरा टल चुका है। ओवर थ्रो और इस बार खतरा हो सकता है अगर दूसरा रन वो लेते हैं तो, लेकिन सिर्फ 1 रन मात्र वो लेने में सफल और 1 रन के साथ अब स्कोर रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। स्विंग किंग्स के लिए 1 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर प्रगति पर और डियोन अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त संजय पहली बार सामना करने के लिए तैयार। डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद, केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। पावर प्ले के अंतर्गत इस बार गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, अंदरूनी के टकराने के बाद गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर। रन्स इस बीच नहीं मिला और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज डियोन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और सही गेंद एक बार फिर से घोषित। और जहाँ तक सवाल है रनों का, तो रन से इस वक्त नहीं मिले, स्कोर रुक चुका है 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा गेंदबाजी की सख्त ज़रूरत है UFC फाइटर्स के गेंदबाजों को, अगर उन्हें 25 रनों के अंदर स्विंग किंग्स के बल्लेबाजों को रोक कर रखना है तो। यह गेंद इस बार खेल दिया गेंदबाज की दिशा में, रन से एक बार फिर से नहीं मिला। फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम डियोन। फैंटास्टिक ओवर आल्सो केम फ्रॉम हिम। पहले ओवर के समाप्ति के बाद सिर्फ 1 रन बन चुके हैं। सिर्फ 1 रन इस ओवर में डियोन ने प्रदान की, 1 विकेट भी प्राप्त किया शिवा के रूप में, बोल्ड आउट के रूप में। और पहले ओवर के बाद जो बेहतर शुरुआत की जरूरत थी UFC फाइटर्स के गेंदबाजों को, UFC फाइटर्स के कप्तान को, वो बेहतर शुरुआत गेंदबाजी में डियोन गेंदबाज हैं इस वक्त दे चुके हैं। सिर्फ 1 रन प्रदान करते हुए 1 विकेट प्राप्त करने में सफल। अब जहां तक सवाल है बचे हुए रन्स का, तो 25 रन चाहिए बचे हुए 24 गेंदों में, यानी 4 ओवर में। एग्जैक्टली 6.25 रन पर ओवर the required run rate for them at this situation. 25 to get in remaining 24 deliveries. और इस बीच गेंदबाज धनुष गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दूसरा ओवर शुरू होता हुआ। मैच नंबर 7 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत APL सीजन 6 2025 के अंतर्गत अत्तावर प्रीमियर लीग 2025 सीजन 6 के अंतर्गत यहाँ पर द्वितीयार्ध शुरू हो चुका है और इस श्रृंखला का शानदार तरीके से प्रस्तुति की है श्री दुर्गा फ्रेंड्स अत्तावरा बाबूगुड्डे ने। इस सुंदर से विशाल से फिशरीज कॉलेज यकूर के मैदान पर शाम का वक्त, शाम के 4:30 इस वक्त बजते हुए, और इसके मैच के बाद एक मैच और खेला जाना बाकी। यहाँ पर गेंदबाज धनुष गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। क्विकर गेंद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, मच स्ट्रेट लाइन। और गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धनुष एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए। Full toss in the air. Oh, drop that one. Straightforward chance gone in vain. This is a sloppy fielding performance shown by the cover point fielder. आसान से और ओवर थ्रो के रूप में दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला हो सकता है। यहाँ पर विकेट उखाड़े गए, लेकिन आखिरकार ऐसा देखना पड़ेगा। अंपायर ने तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की है। नाउ इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर फॉर रन आउट। और देखते हैं रन आउट अपील। और जहाँ तक देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर श्रीरज जो है इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार यहाँ पर देते हैं। और जहाँ तक उस कैच के बारे में जिक्र किया जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था, लेकिन अंतिम क्षण में उस कैच को लपकने में सफल कवर पॉइंट के फील्डर। और दूसरे रन यहाँ पर पूरा कर चुके हैं या नहीं, इसका परिशीलन इस वक्त करते हुए तीसरे अंपायर श्रीरज और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। नॉट आउट इज द कॉल एंड द बैट्समैन सर्वाइव्ड। तो
2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे. Couple of runs added to the total. It's a 3 on the board for losing 1 wicket in the over number 2 in progress. जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो धनुष गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए निहाल एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार. 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं. पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं. और गेंदबाज धनुष दाहिने हाथ ओवर द विकेट निहाल के लिए अगली गेंद. दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, एक्स्ट्रा क्विक वन बट स्ट्रेट टू लाइन. और गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला. 3 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है. 1 विकेट के नुकसान पर धनुष फिर से एक बार तैयार. एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज धनुष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद और सही गेंद घोषित. सही गेंद इस वक्त घोषित करते हुए अंपायर. गेंद कुछ शायद गेंद लेग स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकले थे और आखिरकार सही गेंद घोषित करते हुए 3 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है. 1 विकेट के नुकसान पर 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. और गेंदबाज धनुष फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. बल्लेबाज निहाल के लिए यह गेंद बॉल्ड आउट. जस्ट गॉन फॉर अ मार्टी, हैव नॉट सक्सीडेड. द बॉल kept low, stuck to his off stump. Bills are disturbed. 1 more wicket fallen. Nihal departs and for the first time in this match, Swing Kings looking in trouble. It's 3 for 2 in the second over. निस्संदेह बेहतरीन गेंद थी इस वक्त गेंदबाज धनुष की. अंतिम क्षण में नीचे रहते हुए और आखिरकार इस लोनेस को समझ नहीं पाए और आखिरकार रन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा. बल्ला ऊपर से अड़ा गया, गेंद नीचे से निकली. फलस्वरूप बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं और गेंद ऑफ स्टंप पर जा टकराती हुई गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए. नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ इस वक्त मणि. लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल एज अ नंबर 4 बैट्समैन फॉर स्विंग किंग्स. और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज धनुष. काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ. लंग ऑफ थोड़ा सा वाइड डीप मिड विकेट मौजूद है और एक खिलाड़ी इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में जाता हुआ. और धनुष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, 25 रनों के स्कोर के अंदर रोक कर रख रहा है स्विंग किंग्स के बल्लेबाजों को. तो निश्चित रूप से यहाँ पर UFC फाइटर्स के गेंदबाजों को एक घातक का गेंदबाजी इस वक्त करनी होगी. और गेंदबाज ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना, 4 रन के लिए दौड़ पड़े. रनआउट का खतरा, लेकिन थ्रो जब तक पहुंचे बल्लेबाज 1 रन पूर्ण कर चुके हैं सफलता और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 4 रनों पर. So 1 more good over in UFC fighters point of view came and just 3 runs came from Dhanush over after 2 overs. Still I must say the batsmen of Swing Kings are now searching for the right track. 4 for 2 after 2 overs, 22 needed in remaining 18 deliveries. 18 गेंदें बाकी, 22 रन चाहिए, 8 विकेटें सुरक्षित. 8 wickets they got kept intact. और इस बीच गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए रघु और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ. तो फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए UFC फाइटर्स के बल्लेबाज ने भले ही 25 रन बनाए, लेकिन उस 25 रनों के स्कोर का समर्थन करते हुए इस वक्त उनके गेंदबाज UFC फाइटर्स के गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और पहले 2 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी की है. डियोन और धनुष ने सिर्फ 4 रन प्रदान करते हुए 2 विकेट प्राप्त करने में सफल. दोनों गेंदबाज 1-1 विकेट प्राप्त करने में सफल. और इस बीच राघु ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. मणि इस वक्त सामना करते हुए. मणि के लिए ठीक डीप बैकवर्ड स्कोर लेग ठीक सीमा रेखा के पास एक फील्डर तैनात और लॉन्ग ऑफ फील्डर को थोड़ा सा आगे इस वक्त बुला लिया गया है. और राघु ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. गेंद को 5-6 बार जमीन पर पटकते हुए
दाहिने हाथ राउंड द विकेट। पहली गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा अपील इस वक्त, लेकिन गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और एक रन यहाँ पर मिला जरूर लेग पाई के रूप में, और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 5 रनों पर। 5 ऑन द बोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। स्लोअर प्रोग्रेसिंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ स्विंग किंग्स इन दिस सिचुएशन। सामना करते हुए इस वक्त संजय 3 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो कि क्रीज पर मौजूद, और इस वजह से हर गेंद के बाद फील्डिंग में तब्दीली इस वक्त करनी पड़ रही है यहाँ पर गेंदबाज और कप्तान को UFC फाइटर्स के स्ट्राइक रोटेट होने के बाद। और राघु ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। मैच नंबर 7th of this prestigious cricket tournament is now progressing here, APL season 6 2025. राघु दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, प्लम्ब इन फ्रंट घोषित, और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। द बॉल स्टक टू हिज बैक लेग एट द लास्ट मोमेंट, पिच ऑन द लाइन, कंसंट्रेटेड टू मिडल स्टंप, और अंपायर को कोई दिक्कत यहाँ पर महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। और निहाल की पारी समाप्त। थर्ड विकेट गॉन फॉर स्विंग किंग्स, दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल नाउ। In fact, Sanjay the man departs, and now it's 5 for 3. So new batsman, number 5 batsman is now coming out to the middle. जय नए बल्लेबाज के रूप में, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार राघु की गेंदों का। और राघु इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ के नए बल्लेबाज जय के लिए। ये गेंद is bowled out. One more wicket fallen. This is a tremendous delivery from the bowler Raghu. मिड लेग स्टंप पर गेंद आती हुई, गेंद को ऑन साइड पर स्विंग करना चाहता, चूंकि एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी और गेंद इस वक्त टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती है, ऑन साइड पर शफल होते हुए उछालना चाहा, लेग स्टंप पर गेंद टकराए, उखड़ता हुआ बिल्स इस वक्त उड़कर गिरते हुए, और इसी के साथ चौथा विकेट गिर चुका है। 5 for 4. They are really looking in trouble now, swing kings. Good day Jacks will take over Good Day Bulls in the next match. I request all the players please report to the stage immediately for the signature procedure. तो इस वक्त चौथा विकेट गिर चुका है। 5 for the loss of 4 wicket. Really a testing time continuing here for the batsmen of swing kings। और जहां तक सवाल इन संदिग्ध मोड़ पर नए बल्लेबाज ऋत्विक का आगमन यहाँ पर होता हुआ। 2 गेंदे 2 विकेट। राघु इस वक्त हैट्रिक का सुनहरा मौका उनके लिए, और अधिक नहीं है कि वो अपना हैट्रिक परिपूर्ण यहाँ पर कर पाते हैं या नहीं। तो इस वक्त गेंदबाज राघु गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार न्यू बैट्समैन ऋत्विक के लिए, और ऋत्विक इस वक्त सामना करते हुए राघु की गेंदों का। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद हैट्रिक डिलीवर, ओह जस्ट मिसेस आई थिंक सो। और इस गेंद पर बाल बचते हुए आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहता ऋत्विक ने, शायद उनका पैर पर टकराने के बाद गेंद इस वक्त गुजरी थी इस वक्त शॉर्ट लेग पर, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला, डॉट गेंद। और फिर से एक बार गेंदबाज राघु गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट तैयार। Lost it. This time I think chance for the deep in wicket feeder, और deep in wicket feeder गेंद के नीचे आते हुए बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपकने में सफल ऋत्विक की पारी समाप्त, और तीसरा विकेट इस ओवर में राघु प्राप्त कर चुके हैं। This is turning out to be absolutely a dream over for the bowler Raghu. He claimed 3 wickets in this over, and now the score stands 5 for 5. And this is an absolutely dramatic collapse happened in the innings of Swing Kings. Now they are 5 for 5 with 21 runs far from their victory. तो निश्चित रूप से बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए UFC फाइटर्स के गेंदबाज ಗುಡ್ ಡೇ ಜಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ ಡೇ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಗುಡ್ ಡೇ ಜಾಕ್ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ ಡೇ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು
ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಕೂಡಲೇ. तो न्यू बैट्समैन नंबर 7 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल और इस वक्त गेंदें इस ओवर में फेंके जा चुके हैं 5. एक बेहतरीन ओवर साबित हो चुका है. तो सिर्फ एकमात्र लेग बाय रन इस ओवर में राघु प्रदान कर चुके हैं और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी यहाँ पर करने के लिए तैयार नए बल्लेबाज निशांत के लिए. दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार लेग स्टंप से misses and this only a bye. In fact it's a maiden and 3 wickets. This is a fantastic over completed by Raghu. और अंतिम गेंद जो थी एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, लेग स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी. विकेट कीपर और फील्डर की गलती की वजह से 1 रन इस वक्त मिला और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्विंग किंग्स अभी भी काफी संकट की स्थिति में नजर आता हुआ. फैंटास्टिक मेडन 3 विकेट्स ओवर केम स्टूडेंट फ्रॉम Raghu and a fantastic spell came student from him. Maiden and 3 wickets, 3 gone, 6 on the board, 20 required from the last 12 deliveries. That means from the last 2 overs. तो यूएफसीए के लिए लगभग करो या मरो जैसा स्थिति इस वक्त इस मैच में बन चुका है. पहले 2 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो इस मैच में उन्हें विजय दर्ज करना बेहद जरूरी बन चुका है अगर उन्हें इस श्रृंखला इस टूर्नामेंट में अपना अस्तित्व बरकरार रखना है. तो और इस बात को मद्देनजर रखते हुए, यह बात जानते हुए गेंदबाज यूएफसी फाइटर्स के गेंदबाज एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों पर हावी होते हुए. लेकिन मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ. मौका जरूर है यहाँ पर स्विंग किंग्स के बल्लेबाजों को बाउंस बैक करने का. 5 विकेटें सुरक्षित, 20 रन चाहिए 12 गेंदों पर. 20 runs required from remaining 12 balls. 5 wickets left for swing kings. और इस बीच फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई गेंदबाज संतोष गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और बाएं हाथ के बल्लेबाज मणि जो कि नंबर 4 बल्लेबाज के हैसियत से मैदान पर उतरते हैं अभी तक क्रीज पर डटे हुए. हालांकि सिर्फ 2 गेंदों को उन्होंने अब तक सामना किया है. 1 रन बना चुके हैं. 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और संतोष ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. मणि के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. फर्स्ट बॉल एंड स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गुजरते हुए और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर. निश्चित रूप से ये वाइड रन इस वक्त काफी महंगा साबित हो सकता है यूएफसी फाइटर्स के लिए. और इस बीच गेंदबाज संतोष अपनी सही लेंथ और लाइन की तलाश में अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद उछाला इस वक्त डीप मिड विकेट पर, लेकिन गेंद इस वक्त सीमा रेखा से बाहर. 6 रनों के लिए. This is gone over the fence many a mile. This is an outstanding strike came from the bat of Mani. और ऐसा कहना पड़ेगा ये मैच, ये छक्का मणि का जो इस मैच में कुछ हद तक जान ला चुका है स्विंग्स किंग्स के लिए. और खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त स्विंग किया था मणि ने और छक्का इस वक्त प्राप्त करते हैं. फैंटास्टिक स्ट्राइक केम फ्रॉम द बैट ऑफ मणि और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर. अब द इक्वेशन स्टैंड्स 11 balls remaining, 13 runs required. So this is turning out to be a turning point of this match. अगर मैच स्विंग किंग्स इस मैच में विजय दर्ज करता है तो निश्चित रूप से ये छक्का इस मैच का टर्निंग पॉइंट कहलाएगा. और इस बीच संतोष ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त. शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंचे. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. जस्ट अ सिंगल गॉट. लेग बाय का इशारा हो चुका है. नाउ 14 द स्कोर. And now 10 balls left and 12 runs required. What a match. One more good match of this tournament is now progressing here. Still the match stands in a balance. और गेंदबाज संतोष इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और मणि के लिए इस वक्त एक फील्डर को डीप मिड विकेट पर सीमा रेखा के पास तैनात किया गया है. और माफ कीजिए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार निशांत. और इस वक्त गेंदबाज संतोष दाहिने हाथों पर द विकेट. यह गेंद इस बार गेंद को खेल दिया. मिड विकेट पर गेंद जाते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. फील्डर गेंद का इंतजार करते हुए क्लीन पिकअप, नॉट मोर देन अ सिंगल.
सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर. 15 ऑन द बोर्ड. दैट मींस 9 balls लेफ्ट एंड 11 runs रिक्वायर्ड. मनी बैक ऑन स्ट्राइक. छक्का लगाने के बाद काफी आत्मविश्वास वो प्राप्त कर चुके हैं इस वक्त. एक बार फिर से संतोष की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट संतोष. ये गेंद स्ट्रेट अवे. द बॉलर इज नाउ अंडर प्रेशर. लेकिन लेग स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर गेंद उन्होंने फेंकी थी और अब वाइड घोषित करते हुए और तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है कि क्या ये वाइड है या नहीं, ये परखने के लिए. ಗುಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ಡೆ ಜಾಕ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ಡೆ ಜಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. So wide is the call and now the decision came from the third umpire. एक रन उनके खाते में जुड़ेगा. 16 on the board now. 9 balls left. 10 runs required. और इस बीच संतोष मणि के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद इस बार बेहतर गेंद नहीं. वाइड का इशारा. ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और इस वाइड के रन के साथ अब रिक्वायर्ड रन और बचे हुए गेंद की बराबरी हो चुकी है. 9 runs to get from 9 deliveries. 9 गेंदें 9 रन चाहिए. अगले मैच में इस वक्त गुड्डे बुल्स टॉस जीत चुका है और डिसीजन इज नाउ पेंडिंग. तो इस बीच ये गेंद लॉफ्टेड. दिस टाइम आई थिंक अ चांस फॉर द लॉन्ग ऑन फील्डर एंड he dropped that one. He dropped that one. That was an absolutely easiest chance gone in vain. तो आसान सा मौका लॉन्ग ऑन फील्डर गवाते हुए. मणि का स्ट्रोक था और बल्लेबाज ने स्ट्रोक को खेला था. लॉन्ग ऑन फील्डर के पास काफी वक्त था कि कैच को लपक सके, लेकिन गेंद को लपकने में असफल और गेंद उनके हाथों से छूटती हुई और बल्लेबाज न सिर्फ जीवदान प्राप्त करते हुए बल्कि 2 रन भी प्राप्त कर चुके हैं. और इन दो रनों के साथ समीकरण काफी हद तक आसान बन चुका है अब स्विंग किंग्स के लिए. मणि फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार. संतोष की गेंदों का यह गेंद उछालना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, बट ही गॉट अ सिंगल और 1 रन इस बीच मिलेगा. लेग बाय का इशारा. 20 on the board. 6 to get now. 7 balls remaining. 6 runs to get. So 14 runs already scored in this over so far. 14 रन पहले 5 गेंदों में अब तक प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज संतोष. और इस बीच सामना करने के लिए तैयार निशांत और गेंदबाज संतोष गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. यह गेंद इस बार निशांत के लिए. इस बार एक बार फिर से मिसफील्ड. एक बार फिर से मिसफील्ड और इस वक्त भाग्य बार बार बल्लेबाज का साथ देता हुआ. पहले कैच आउट के मौके से मणि बच चुके थे, अब रन आउट के मौके से निशांत बच चुके हैं. 15 runs came from this over and from this over I must say swing kings are now strongly back in the game. Now equation seems to be much easier for them. 5 required from last over. That means in remaining 6 deliveries. तो 5 रन चाहिए अंतिम ओवर में विजय के लिए और निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा. इस वक्त बिल्कुल इक्वेशन आसान दिखाई देता हुआ, लेकिन मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ. एक चमत्कारी गेंदबाजी इस अंतिम ओवर में यूएफसी फाइटर्स को इस मैच में वापस ला सकती है और उस चमत्कारी गेंदबाजी की तलाश में गेंदबाज अतुल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. 6 गेंदें 5 रन चाहिए और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, अतुल के हाथों में गेंद और निशांत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा. तो दबाव इस वक्त दोनों टीमों के ऊपर साफ दिखाई देता हुआ. द प्रेशर इज नॉट बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स. पहली गेंद लेकर तैयार रहा. लेग स्पिन गेंदबाजी, फैंटास्टिक डिलीवरी और क्वाइट सरप्राइजिंगली यहाँ पर ये रिस्क ले चुके हैं इस वक्त
यूएफसी फाइटर्स के गेंदबाज कप्तान लेग स्पिन गेंदबाज को गेंदबाजी सौंप चुके हैं और पहली गेंद लेग स्पिन गेंदबाज ने डॉट गेंद के रूप में फेंकी है। अब 5 गेंदें 5 रन। तो गेंदबाज अतुल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए निशान मनी ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त हो चुके हैं। और जहां तक सवाल है इस वक्त फील्डिंग के नजरिया का, तो इस वक्त काफी दूर दूर तक का पहला वक्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इस बीच अतुल की गेंद, ये गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई, रन के लिए नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा हो चुका है। शायद एक ज्यादा खिलाड़ी यहाँ पर ऑन साइड पर मौजूद था, शायद 6 खिलाड़ी इस वक्त ऑन साइड पर मौजूद है। और इसे परखते हुए इस वक्त अंपायर सुरेश मुडाबिद्री ने यहाँ पर नो बॉल घोषित किया। तो 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल। और हड़बड़ाहट में यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा यूएफसी फाइटर्स के कप्तान ने एक ज्यादा खिलाड़ी को ऑन साइड पर तैनात किया था। तो इसे देखते हुए अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल घोषित किया। तो 1+1 2 रन्स एडेड टू द टोटल। अब 4 to get from 5 deliveries. 3 to get, in fact 3 to get from 5 deliveries. 3 runs to get from 5 balls. 5 गेंदों में 5 रन बनाने थे, यहाँ पर 2 रन जुड़ चुके हैं, तो 3 रन चाहिए। अब 5 गेंदें बाकी। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त मनी स्ट्राइक पर आ चुके हैं। और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, पहले 2 गेंदों में अतुल ने बेहतर गेंदबाजी यहाँ पर की है, लेकिन इस बीच 4 गेंदों में किस तरीके की वो गेंदबाजी करते हैं यहाँ पर देखना पड़ेगा। और ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, डीप मिड विकेट पर गेंद जाते हुए फील्डर इस पर तैनात, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पर 2 रन। और इस बार विकेट उखाड़ चुके हैं और अंपायर इस वक्त तीसरे अंपायर के लिए घोषित करते हुए। तो बेहतर तरीके से विकेट इस वक्त उखाड़े गए विकेट कीपर द्वारा। और देखना है कि जब विकेटें उखाड़े गए थे तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। तो तीसरे अंपायर के लिए एक बार फिर से इस वक्त काम आन पड़ा है और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन मैच यहाँ पर प्रगति पर, मैच नंबर 7 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट APL अत्तावर प्रीमियर लीग सीजन 6 2025, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया श्री दुर्गा फ्रेंड्स अत्तावर बाबूगुड्डे ने। और इसे ढलते हुए शाम में भी इस वक्त मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है। तो तीसरे अंपायर यहाँ पर इसका परिशीलन करते हुए और देखते हैं आखिरकार इसका परिशीलन करने के बाद वो क्या निर्धार देते हैं यहाँ पर। निश्चित रूप से what a fantastic tournament is now progressing here. APL season 6 Attavara Premier League season 6 2025, which broadly organized by Sri Durga Friends Attavara बाबूगुड्डे। और एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव कवरेज इस वक्त किया जा रहा है बेंगलुरु मीडिया द्वारा। और जहाँ तक मैच नंबर 7 का सवाल है, इस वक्त मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर यहाँ पर रुक चुका है। तृतीय अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है और देखते हैं यहाँ पर थर्ड अंपायर यहाँ पर क्या निर्धार देते हैं। काफी नजदीकी मामला और तीसरे अंपायर जो कि इसका कूलंकुश होकर यहाँ पर परिशीलन करते हुए। No doubt is the call and the second run completed. And now with that couple run the scores are now leveled. Now just a single they have to score for victory in remaining 4 deliveries. निश्चित रूप से एक बेहतरीन कमबैक करने में सफल स्विंग किंग्स के बल्लेबाज 2 ओवर में 20 रन बनाने थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कमबैक की है मणि और निशांत ने काबिल तारीफ है। और अंतिम 4 गेंदों में सिर्फ एकमात्र रन चाहिए विजय के लिए। सराउंडिंग फील्डिंग इस वक्त सजाई गई है और मणि जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अतुल अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार मणि का स्ट्रोक, मिड विकेट फील्डर मिसफील्ड करते हैं और इसी के साथ स्विंग किंग्स registered a thrilling victory in the last over against UFC fighters by 5 wickets with just 3 balls to spare. And with that victory they back the complete points. So fantastic comeback made by the batsmen of Swing Kings
in the fourth and the fifth over, in the last 2 overs of their innings, when they needed 20 runs of the last 2 overs. After that, 15 runs scored in the fourth over of the bowling of Santosh, and Mani completed the formalities after hitting 6 and a couple and a single run. At last, he remained unbeaten on 12. A fine innings under pressure by Mani. And undoubtedly, the man of the match award goes to Mani, who scored unbeaten 12 runs, including one massive 6 in the important stage of the match. And also he bowled a fantastic spell. He conceded just 2 runs and grabbed 1 wicket in his 1 over quota, and because of this all-rounding performance, Mani of Swing Kings edged the man of the match for his fantastic all-rounding performance. I request Mani to please come on to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. So next match will be could be the last match of the day number 1 of this prestigious cricket tournament, APL Season 6 2025, which will be starts between Good Day Jacks versus Good Day Bulls. 2 Good Day teams are clashing each other in the match number 8 of this prestigious cricket tournament, Attavara Premier League Season 6 2025, and that match starts with a short pile और मैच शुरू होगा आज का 8वां और वो मैच यहाँ पर शुरू होगा ಚನ್ನಲಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಮಣಿ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಣಿ ಇವರಿಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭರತ್ ರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Now Mani receiving the man of the match award for his fantastic knockout for 12 unbeaten run, including 1 6 and fantastic piece of bowling, 1 over, no maiden, 2 runs, 1 wicket, and for this all-rounding performance he is adjudged the man of the match, and congratulations for Mani and best of luck for the rest of the matches of the tournament. So next match Good Day Jacks will takes over Good Day Bulls, and that match starts with just short pile और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे आज अंतिम बार for the last time in the day मेरे काबिल दोस्त अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ सतीश के साथ, जब यहाँ पर आज का 8वां और अंतिम मैच 8th and final match of the tournament यहाँ पर शुरू होगा. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. Now it's time for break. Thank you. धन्यवाद. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 5 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಿವು ಇವರು ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 8 here, and first ball first run for the team Good Day Jacks. They got the first run against the team Good Day Bulls. So it's a battle for the victory between two Good Day Bulls and Good Day Jacks, and ಶಿವ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Meanwhile, Shishant will go in to take the strike. The appeal for leg before wicket. Umpire not interested, but here that couple of runs in the form of leg by. Pitched outside the line of leg stump, so that umpire rightly so not interested. The bowler bowling around the wicket. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದಂಥ ಜಗನ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಶಿವು ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಸೊ ಪಂದ್ಯಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಿವ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಗನ್ ಇವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Yes, a couple of runs in the form of leg by, which is added to total 3 on the board without loss of an wicket. Prajwal, right arm around the wicket to bow to Sushant. In fact, like a placement, the fielder there in that mid-on region, Akshay. No question of any run. Both the teams desperately wanted a victory here. Jacks and the Bulls of good day. And here is Prajwal around the wicket, right arm from the highway end. Taking his own time to deliver the ball, and around the wicket he bowls. This time wanted to go for the expansive drive, extra bounce in the negation, defeats the bat, opportunity of run out. All the closing fielders are rushing towards the ball, but it's too late for one of the fielder to pick the ball. Ample time for the batter to complete the single. With that single scored moves on to 4 on the board without loss of any wicket. All 4 runs in the form of extras. Sunil facing Prajwal. So far Prajwal bowled a very good line and length. All runs are in the form of extras. This time catch it is a call just wide of Akshay. And wideish long on will going to collect the ball. Ample time for the batter to collect a single. With the addition of that single, Sunil is off the mark and Todoskona moves on to 5 on the board without loss of any wicket in the over. Number first is in progress. Both the teams, of course, the team Good Day Bulls are looking towards their first victory, searching for their first victory. Here comes next ball, Prajwal. Appeal for leg preference. Again, umpire not interested because ball pitched outside the line of leg stump. Leg by call by umpire. So first over completed after completion of first over. It's 6-4 without loss. Team Good Day Jacks. A very good day for cricket today. We are started day number 1 with the inaugural ceremony, and with the presence of all the honor, the franchisee teams that present in that inaugural ceremony. Every boundary and every 6, the batter Sushant will going to get 500 rupees announced for Sushant for every boundary and every 6. Punit brought into attack, one more great all-rounder for the side of team Bulls. Good Day Bulls, and here comes the first ball of the over, number 2nd. Nice looking drive off top by the bowler on his follow through, but fails to stop the single from this batter. And the very successful opening batter for the side of Team Jacks. Once again they got a start here, 7 runs already. The 7 balls they faced, they got 7 runs. Time is exactly 5:05 in the evening. This time wanted to go for the reverse. It is a lucky run. It is absolutely frustrate the bowler. By call by umpire. After ball is deflected from the hands of the wicket keeper. And a couple of runs which is completed. With that couple of runs, Kobunda moves on to 9 on the board. Not an easy job for the wicket keeper because ball which is hard in the nature. Not so easy to collect that hard tennis ball behind the stump as Punit again right arm over the gates. A loose stroke, played it straight to the hands of square leg. Sunil just wanted to go for the sweep shot but not really able to keep it down.
The wicket number first is back in the pavilion. Much required breakthrough for the team. Good Bulls. The very danger man Sunil back in the pavilion. After scoring only one run from his bat, is caught by square leg fielder Nazir and bowled off the bowling of Puneet. Oh, very good breakthrough here for the team of Good Bulls. They know exactly how important to win the one match here to be in the competition of APL season 6. Shreyas is a new batter in one more excellent all-rounder for the side, being the captain of the side. Will going to face his first delivery. Puneet got a breakthrough, very important breakthrough for his team. Now we'll go into ball right arm over the wicket to this time drives just wide of at mid on. The protection there in the deep long on, and Gautam the fielder in the deep long on, very long on, fields the ball, and only a single for the batter. With that single, Skubban moves on to double figure 10 for the loss of one wicket. Another this time lovely delivery indeed. Ball is just changing the direction with that inside edge of the bat of the batter. Puneet is doing a good job here for his team to get some wicket as well as dot ball. 10 on the board for the loss of one wicket. Final time. Puneet bowls. Lofted it, but surely the long off fielder will go and get this easily. So that's the end of Sushant. Just he wanted to get the distance into the deep long off, but absolutely, I'm saying in the morning itself, it's not an easy ground to get the distance in front of wicket. In front of wicket, it's so very difficult, isn't it? We can see that it's a dimension of this cricket ground. Long distance to cover for the batter, especially in under-arm cricket. It's not so easy when the ball is coming along the carpet ground. 2 gone, good over, excellent over from the captain of the side. The 4 runs in that over and 2 wickets as well. He sent 2 opening batters back in the pavilion. 10 for 2. New batter in. Darnush, the new batter. One more good player for the side. Now Shreyas will going to take the strike. Ravi. Lovely reverse sweep, lovely reverse sweep. Plays it in the gap towards the deep gully region for a couple of runs. So this is an intelligent cricketer from Shreyas as he got that one right from the middle of the bat by closing his bat, getting the direction very nicely down to gully region for a couple of runs. With that couple of runs, Kopatna moves on to 12 on the board for the loss of 2 wicket. Again, sweep shot comes into play. Good stop by the fielder. Nazir is giving everything in this field now in that square leg. But 1 run anyhow for Shreyas, and with that single score, moves on to 13 for the loss of 2 wicket. Tomorrow will be the final day of this cricket tournament. Attavara Premier League 2025. Proudly presented by Sri Durga Friends Attavara Babagudda as they're celebrating their 13th year. And tomorrow we'll have some very attractive and colorful closing ceremony. Again, played it down to deep long on. One more single for the batter. Danush is off the mark with a single. With that single, Skubban moves on to 14 on the board. 14 for the loss of 2 wicket. Slowly and steadily, these two batter tried to get the partnership going after their losing opening batter, Sunil and Sushant. Ravi so far conceded 4 runs in 3. This time wanted to go for the reverse sweep, but slight a bit of hesitation for the run.
They wanted to go for the quick run, but can't get in the negation because ball is not too far away from the wicket keeper and the fielder. It's 14 on the board. Ravi. Right arm over the wicket balls. This time tries. This time straight to the fielder. But Akshay couldn't manage to gather the ball because ball came into him in the half volley. One more addition. 15 for the loss of 2 wicket. Both the batters are dealing with a single and couple so far. 5 runs in 5 deliveries. There's some lack of placement. Good collection there by the fielder at mid-on. Dot ball to end over. 5 runs came from this over. 3 gone after completion of over number 3. Team Good Day Jacks are 15. They're going exactly 5 runs per over. 15 for loss of 2 wicket. So last 2 overs remaining in their innings and 12 balls remaining excluding wides and no balls. So far I think Good Day Bulls bowlers managed to restrict the runs here, but they are the one. They are going to chase the run in the last session in the evening. Late in the evening it's not so easy, so that it's very important for Good Day Bulls to restrict the runs in the remaining 2 overs. After long discussion, they are looking towards the bowler who can be very effective to bowl that 4th over, penultimate over. Akshay brought into attack to bowl the 4th over, and Shreyas will be the striker. This time catch it is a call, but Gautam is too straighter, so that before he coming to that mid-wicket region, ample time for the batter to complete the single with that single score, but moves on to 16 on the board for the loss of 2 wicket. The train which is passing just behind the ground. Again, one more single. Quick run with the wicket. Akshay managed to bowl some good line and length here. A couple of deliveries. Batter looking for the big stroke, but he's not really settling the batter. Couple of runs in couple of deliveries. This time, lovely placement. Played it in the gap. Definitely they will come back for the second. In comes the throw from the fielder, and ample time for the batter to complete a valuable couple of runs. Good placement here from again Shreyas. He's playing captain's role here for his team so far. 19 on the board. 4th time in this over. Akshay. To Shreyas, a slight bit of changes in the field set here. Backward point coming little bit squarer. Cow point almost in the unorthodox position. Akshay changing his angle down, coming over the wicket now. Left arm to Shreyas. Dancing down the crack, driven that one down to deep long. Gautam, the quick fielder in the deep, so that no question of second run there. With that addition of that single score, but moves on to 20 on the board. Last 2 deliveries in this over left and 1 over. After this, 8 balls altogether remaining in the innings of team Good Day Jacks. Oh, lovely delivery. Excellent one. Dot ball from Akshay. Last ball remaining. Scoreboard remains on 20. Akshay. Balls. Flum in front of wicket. Flum in front of wicket. Akshay this time delivers the ball on the middle stump, and Akshay wanted, Shreyas wanted to go for the big shot on the onside edge. A little bit correction. It's Dhanush, the batter, wanted to go for the big shot, and he just misses the line completely. And Akshay not missed that. It's like right in front of the stump.
It's 20 for the loss of 3 wicket in the over number 4, which is comes to an end. Last over remaining in the innings of Good Day Jacks. Prasad, new batter in. The previous match he's played a small cameo. The tied match, the first tie match of the day number 1. Dixit will going to bowl the last over, and Shreyas, the captain, still hanging there in the middle. So far he's batting responsibly. He's batting on 9. So deep long off, which is wideish. The long on is there. Deep square leg. Deep cover point. The fielder down at short, third man, Gully. Short mid off. Dixit. This time played it in the air. Oh, fielder is not trying for the catch. Puneet little bit in a defensive frame of mind. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾದಂಥ 90ರ 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಒಂದು ಉಜ್ವಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಂಥ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೀಧರ್ ಇವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶ್ರೀಧರನ್ನ ಆಫ್ ಮಂಗಳ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. So dot delivery. Outside the line of stump, and one more dot ball. Prasad losing some important deliveries of the final over. It's 21 on the board for the loss of 3 wickets. Dixit. Again, played in the gap. This time he got a connection, but not more than a single. They're coming back for the second. The fielder trying to return the ball to the non-striker's end. So that easy chance for Prasad to come back for the second. With that couple of runs scored, moves on to 23 on the board for the loss of 3 wickets. Last 2 balls remaining in their innings. Dixit. To Prasad this time wanted to go for the drive on the onside ridge and deflected from his leg, so that leg by call by umpire Roland Pinto. With the addition of that single score, moves on to 24 on the board. The last delivery of their innings is coming up. Captain Shreyas will going to take this last delivery of his innings. He just definitely wanted to get one big shot here. This time, one straight to the answer fielder. Akshay taken a catch. So slight a bit of celebration in the end for in the dugout of team Good Day Bulls, and that's it. They finished their 5 overs quota. Team Good Day Jacks are finished their 5 overs quota. They managed to score 24 runs in their stipulated 5 overs, and they set a target of 25 to win the match for team Good Day Bulls. And we'll see how Good Day Bulls will going to justify the effort of their bowlers. They did a great job in the bowling department, and the bowler, I think the batters of Good Day Bulls have to get this 25 to win the match. But you don't go away, because even Jacks has got some good bowling department in their side, and they will not going to give this match very cheaply for their opposition. We'll take a short break in our commentary box. After the short break, my friend Gopi will going to take over the microphone in Hindi language. Final time today in the day number 1 of this prestigious Attavara Premier League 2025 Season 6.
ದಯವಿಟ್ಟು ಭಗವಾನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ತಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮಂಗಳ ಮಂಕೇಶ್ ತಂಡದ ಶ್ರೀಧರ್ ಇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಭಗವಾನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. I request the openers, please go for bat. धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर आज का अंतिम मैच का अंतिम सत्र यहाँ पर शुरू होता हुआ गुड्डे जैक और गुड्डे बुल्स के बीच मैच इस वक्त चल रहा है। गुड्डे जैक ने पहले बनाया 24 रन निर्धारित 5 ओवर में। गुड्डे बुल्स के सामने 25 रनों का लक्ष्य यहाँ पर उन्होंने रखा है। 25 the target in 5 overs, they have to score for victory with a required run rate of exactly 5 runs per over. और दोनों असलामी बल्लेबाज पुनीत और अक्षय इस वक्त मौजूद। सुशांत इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए पहली गेंद लेकर तैयार। गेंदबाज सुशांत और पुनीत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पारी की पहली गेंद लेकर सुशांत पुनीत के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट। यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त। गेंद पहुंची इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में। 1 रन का इजाफा, थोड़ी सी मिसफील्ड, बल्लेबाज दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। 1 रन के साथ संतुष्ट हो चुके हैं और 1 रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है गुड्डे बुल्स का। 1 रन 90 लाख से नुकसान के इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट APL अत्तावर प्रीमियर लीग सीजन 6 2025 आज का 8वां और अंतिम मैच का दूसरा सत्र इस वक्त खेला जाता हुआ और मुकाबला इस वक्त जारी है गुड्डे जैक्स और गुड्डे बुल्स के बीच। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज सुशांत इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अक्षय जो कि इस वक्त सामना करते हुए। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। यह गेंद को इस वक्त खेला खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल और गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई। इस बीच जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर। 3 ऑन द बोर्ड टू लूज विकेट द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। बेहतर स्ट्रोक था इस वक्त अक्षय ऑफ द बैक फुट। स्क्वायर ऑफ द विकेट और 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। तो फिर से एक बार सुशांत गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहा। बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी। अंतिम क्षण में गेंद के टर्न को भापते हुए गेंद को रोक दिया था, अपने स्ट्रोक्स को रोक दिया था बल्लेबाज ने। सिले मिड ऑफ की दिशा में गेंद पहुंची जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 3 रन से नुकसान के। फिर से एक बार सुशांत गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहा। यह गेंद इस बार गेंद को खेलना चाह, गेंद पहुंचे सिले मिड ऑफ पर। फील्डर जब तक स्वयं गेंदबाज अपनी दाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। सिंगल रन एडेड टू द टोटल एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 4 ऑन द बोर्ड yet to lose a wicket in the over number फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और सुशांत 4 गेंदें इस ओवर में फेंक चुके। 5वें गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त पुनीत जो कि सामना करते हुए। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। और सुशांत अपनी ओर की
अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। यह गेंद खूबसूरत स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन स्वीपर मौजूद इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 5 ऑन द बोर्ड, यह टू लूज एन विकेट एंड दिस इज द फर्स्ट ओवर ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। और पुनीत और अक्षय आरंभिक बल्लेबाज एक बेहतर शुरुआत देने की कोशिश करते हुए इस वक्त गुड डे बुल्स के लिए। और इस बीच सुशांत अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। इस बार गेंद को खेला जस्ट वाइड ऑफ द एक्स्ट्रा कवर फील्डर। ऐसा कहना पड़ेगा अपने स्ट्रोक्स को चेक किया था इस वक्त। 1 रन का इजाफा पहले ओवर की समाप्ति के बाद। स्टीडी स्टार जिसे अंग्रेजी में कहते हैं 6 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के। गुड डे बोल 6 विदाउट लॉस आफ्टर फर्स्ट ओवर, चेजिंग द विकेट टारगेट ऑफ 25 इन 5 ओवर्स व्हिच इज सेट बाय गुड डे जैक्स। और हमारे साथ इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है 80वें और 90वें दशक के दिग्गज खिलाड़ी श्रीमान श्रीधर मंगला मंकी स्टैंड के इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है। हम श्रीमान श्रीधर इनको संकटक APL संकटक और सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से उनका हार्दिक का स्वागत करते हैं। हार्टली वेलकम टू फॉर्मर फैंटास्टिक क्रिकेटर मिस्टर श्रीधर ऑफ मंगला मंकी स्टैंड behalf of the organizers and all the cricket lovers. Heartily welcome to you sir, Mr. Sridhar of Mangala Monkey Stand, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है 80वें और 90वें दशक के लेजेंडरी खिलाड़ी और एक बार लेजेंडरी ऑलराउंडर। और इस वक्त एक बार फिर से उनका हम हार्दिक स्वागत यहाँ पर करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है श्रीधर साहब। तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, श्रेयस गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षय जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 19 टू गेट इन रिमेनिंग 24 डिलीवरीज। और श्रेयस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा अंपायर का, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गुजरती हुई और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर। 7 ऑन द बोर्ड, 25 द टारगेट इन 5 ओवर्स। दैट मींस 18 नाउ मोर दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 24 डिलीवरीज। और गेंद पास, ये गेंद इस बार गेंद को खेला, मिड ऑफ फील्डर मौजूद थे लेकिन थोड़ी सी स्क्वायर गेंद पहुंची इस वक्त, थोड़ी सी सीधी उनकी बाईं ओर से गुजरते हुए लंग ऑफ पर। और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। 8 रन बिना किसी नुकसान के दूसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है। श्रेयस गेंदबाजी इस वक्त करेंगे पुनीत के लिए। शाम के 5:30 इस वक्त बज चुके हैं। ऑलरेडी 5:30 इन द इवनिंग और धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है मैदान से। और ऐसा कहना पड़ेगा इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी कम होती हुई और लगभग अंधेरा सा छाता हुआ। और इस बीच अगली गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहता, अंतिम एक्शन में गेंद कुछ ज़्यादा उछाल लेते हुए इस उछाल को समझ नहीं पाए, ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए और फील्डर विकेट कीपर ने स्वयं आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। पुनीत और अक्षय एक बेहतर शुरुआत देने की कोशिश करते हुए अपनी टीम गुड डे बुल्स के लिए, गुड डे जैक्स के खिलाफ। और अगली गेंद श्रेयस, ये गेंद उछाला और क्या छूट चुका एक्स्ट्रा कवर पर। That wasn't a certain chance at the extra cover, लेकिन अंतिम एक्शन में गेंद तक पहुंच गए थे लेकिन गेंद को अपने दोनों हाथों में दबोचने में असफल। और इस बीच बल्लेबाज इस गेंद पर जीवदान प्राप्त करते हुए He's got a life in this delivery and with that single run scoreboard moving up to 9 on the board for losing low wicket at the start of the second over। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। और जहां तक रनों का सवाल है, 25 रन से 9 अगर घटा दिए जाए तो 16 रन और बनाने इस वक्त विजय के लिए, जबकि 3.3 ओवर यानी 21 गेंदें उनकी पारी में बाकी। और गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार खूबसूरत स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जाती हुई, कोई फील्डर वहां पर नहीं, वाइड लॉन्ग ऑफ से फील्डर दौड़कर आते हुए और सबसे पहले पहुंचे डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर। और इस बीच बल्लेबाज के बाद मौका तीसरा रन प्राप्त करने का और 3 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट के जरिए। और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा गुड डे बुल्स के प्लेयर्स डगआउट से तालियों की आवाज़, सीटियों की आवाज़ इस वक्त सुनाई देते हुए उनके समर्थक सपोर्टर्स अपनी टीम का मनोबल, अपनी टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए तालियों के साथ, सीटियों के साथ और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका अब 12 रनों पर। 12 on the board to lose a wicket in the over number 2 in progress। Fantastic progressing here for good day Bulls। Slowly and steadily they are heading towards to their target। और कम बैक करना है तो इस वक्त गुड डे जैक्स के गेंदबाजों को इस वक्त चंद कसे हुए ओवर्स फेंकने होंगे, चंद विकेटें कम अंतराल में यहाँ पर उखाड़ने होंगे। और श्रेयस
रिवर्स स्वीप किया इस वक्त, नॉट कनेक्टेड दैट प्रॉपरली, तो कदम आगे निकल चुके थे, लेकिन एंड मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद को अपर फील्ड किया जा चुका है और 5 गेंदें इस ओवर में फेंके जा चुके हैं। स्कोर इस वक्त रह चुका है 12 रनों पर, 12 ऑन द बोर्ड। और जहाँ तक सवाल है इस ओवर में 6 रन अब तक गेंदबाज श्रेयस प्रदान कर चुके हैं और इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद swings and this time he swept that one very well. He finds the gap as well down to a deep backward square leg fence for a boundary. Fantastic struck came from the bat of Puneet. फ्रंट फुट पहुंच जाने के बाद अपने बैक लेग को थोड़े से झुकाते हुए गेंद को मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए गेंद को उछाल दिया इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, गेंद की गति को भांपते हुए, और इस चौके के साथ ऐसा करना पड़ेगा। गुड डे बुल्स अपने मंजिल की ओर और निकट हो चुका है। 10 रन बने, 10 runs came from the last over from Shreyas, and now I must say Good Day Bulls looking in a commanding situation. It's 16 for run after completion of 2 overs, and now just 9 to get in remaining 3 overs, and straight away the required run rate is now coming down to exactly 3 runs per over. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाज का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए सचिन, और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ। अब ऐसा कहना पड़ेगा गुड डे जैक्स को कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही इन बचे हुए 3 ओवर में वापस ला सकती है। और नया ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ इस प्रतिष्ठित श्रृंखला का आयोजन किया है श्री दुर्गा फ्रेंड्स बाबू गुड्डा, अत्तावर बाबू गुड्डा ने यह गेंद को इस वक्त उछाल दिया और गेंद पहुंची इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑफ पर, 1 रन का इजाफा, 17 ऑन द बोर्ड, येट टू लूज एनी विकेट। स्लोली एंड स्टडीली दिस पार्टनरशिप इज नाउ बिल्डिंग अप फॉर गुड डे बुल्स। और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज सचिन अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज पुनीत इस वक्त सामना करते हुए और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए गेंदबाज सचिन, और अपनी ओवर की अगली गेंद, यह गेंद लेग स्टंप से बाहर, दिशाहीन गेंद थी, वाइड का इशारा, जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट, वाइड कॉल्ड बाय अंपायर, 1 रन का इजाफा, 18 ऑन द बोर्ड, टू लूज एनी विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर इन फैक्ट। और सचिन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ mighty heave, not succeeded, I think he's got a problem, he's got a plenty of problem। जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंद को इस वक्त उछालना चाहता, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त जहाँ पर गेंद नहीं टकराना चाहिए था वहीं पर टकरा चुका है इस वक्त, और काफ़ी हद तक इस वक्त दर्द महसूस करते हुए बल्लेबाज, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त सेंटर पर गेंद इस वक्त टकरा चुकी है और सेंटर यानी शरीर के सेंटर पर गेंद टकरा चुकी है। जहाँ तक सवाल है, बहुत ही नाजुक अंग कहलाता है शरीर का, सॉफ्टेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, लेकिन अपना दर्द अपनी जानता है, हम क्या जानते हैं उनका दर्द, वो कितने दर्द इस वक्त महसूस कर रहे हैं, क्यों सतीश? तो निश्चित रूप से यहाँ पर अब सब कुछ तो नहीं, लेकिन काफी हद तक सही सलामत इस वक्त है, और वापिस अपने बल्लेबाजी के मार्ग पर आने का इस वक्त इंतजार है। तो शायद वो इस वक्त पेविलियन की ओर प्रस्थान करेंगे और नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ। Absolutely, he's got a nasty pain at the last moment, and now I think he's just leaving the field. तो हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि जल्द से जल्द वो खिलाड़ी ठीक हो जाए। पुनीत जो कि चोटिल इंजर्ड होकर इस वक्त पेविलियन वापस लौटते हुए, हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पुनीत ठीक हो और कल मैचेस खेलने के लिए मैदान पर उतरे। तो इस बीच नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ। गौतम द न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल एज नंबर 3 बैट्समैन, और इस वक्त सचिन अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट, एक बेहतर पारी पुनीत ने खेली 7 रनों की, और चोटिल इंजर्ड होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं। गौतम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, 4 गेंद इस ओवर में बाकी। यह गेंद उछाला, स्क्वायर ऑफ द विकेट, मौका, लेकिन नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाए इस वक्त। जीतोड़ ने कोशिश जरूर की थी डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर ने गेंद तक पहुंचने की, लेकिन आखिरकार गेंद तक पहुंच नहीं पाया और बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस।
और सिर्फ 6 मात्र रन और चाहिए विजय के लिए। और सचिन और इस बीच गेंदबाज सचिन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट। ये गेंद इस वक्त फाइनल की दिशा में निकल चुकी है। 1 रन का नो बॉल का इशारा। इनफैक्ट इट्स 1+1, 2 runs now added to their total. So just 4 runs required for victory. और 15 गेंदे अभी भी बाकी उनकी पारी में, सिर्फ 4 रन और चाहिए विजय के लिए। और सचिन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार उछाला, गेंद को खूबसूरती के साथ डीप एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन फील्डर मौजूद। स्वीपर आउट दैट, जस्ट अ सिंगल ही गॉट। 22 on the board for losing no wicket in the over number 3 in progress. और सचिन एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड। नाउ 23 द स्कोर, जस्ट 2 to get. ऐसा लग रहा है सिर्फ औपचारिकता है ही इस मैच में बाकी अब रह गए हैं। जस्ट फॉर्मेलिटीज नाउ रिमेनिंग इन दिस मैच, जस्ट 2 to get इन रिमेनिंग 14 डिलीवरीज। और सचिन काफी लंबा और उनका प्रगति पर। यह गेंद उछाला इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खूबसूरती के साथ, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है यहां पर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ बल्लेबाज गौतम इस मैच को शानदार तरीके से समाप्त कर चुके हैं। अक्षय माफ कीजिए, जिन्होंने ये चौका लगाया था बेहतरीन तरीके से। अक्षय जो बल्लेबाज थे चौका लगाकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर इस मैच की शानदार समाप्ति कर चुके हैं। तो गुड्डे बुल्स 10 विकेटों की शानदार विजय दर्ज कर चुका है गुड्डे जैक्स के खिलाफ। और इस विजय के साथ गुड्डे बुल्स गुड्डे जैक्स के साथ जो शानदार 10 विकेटों का विजय दर्ज कर चुका है, इस विजय के साथ वो परिपूर्ण अंक प्राप्त कर चुका। तो आज के 8 मैचेस पूर्ण हो गए हैं। कल और 6 मैचेस खेले जाएंगे, 2 मैचेस लीग स्टेज के, उसके बाद 3 प्लेऑफ, 1 मेगा फाइनल। और हम उम्मीद करते हैं कि कल भी एक रोचक और बेहतरीन क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत, अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट APL अत्तावर प्रीमियर लीग सीजन 6 2025 के अंतर्गत। अत्तावर प्रीमियर लीग सीजन 6 2025 विच इज प्राउडली ऑर्गेनाइज्ड बाय श्री दुर्गा फ्रेंड्स अत्तावरा बाबूगुड्डे। तो कल सुबह 9 बजे मैच शुरू होगा। द मैच स्टार्ट्स exactly at 9 AM on tomorrow morning, the day 2 of this prestigious cricket tournament APL season 6 2025, which proudly organized by Sri Durga Friends Attavara Babugudde. Till then we are taking a goodbye right from here.